विद्वत जन भारत के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध विशेषज्ञों की वह श्रृंखला जो इस 2 दिवसीय चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम में जिनके स्वरों को सुनने, जिनके शब्दों के अलंकृत भावों को जानने, जिनके मनोभावों की श्रृंखलाओं को प्राप्त करने और जिनके उच्चस्त शब्द समूहों को प्राप्त करने का हम सभी को अवसर मिलेगा। निश्चित ही यह एक ऐसा सुअवसर बड़े भाई से नीरज जी के द्वारा हमें इस पटल पर प्रदान किया जा रहा है, जिनके द्वारा हम केवल और केवल भारत जैसे विशालतम बौद्धिक श्रेष्ठता से युक्त भारत देश के विदूषकों को नहीं, अपितु भिन्न राष्ट्रों के सशक्त भावों को प्राप्त करने वाले भावों को हम इस कार्यक्रम में प्राप्त करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उनके मनोभावों से युक्त होंगे। वॉल्यूम बहुत कम है सर। प्यारे साथियों, भगिनियों और मेरे प्रशिक्षु भाइयों बहनों, यह 2 दिवसीय प्रशिक्षणात्मक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हमें नवीन चेतना और तकनीकी बद्ध स्वरूप में शिक्षण प्रशिक्षण की नवीन पक्षों को प्राप्त करने हेतु एक निर्देशित भाव प्रदान करेगा। साथ ही साथ यह हमें इस प्राप्ति की ओर अग्रसित करेगा कि हम कैसे तकनीकी परक शिक्षा को और अधिक स्वीकार प्रदान करते हुए अपने जीवन में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त भावों को और अंगीकृत करते हुए कैसे हम अल्पतम व्यय में अधिकतम ज्ञानार्जन को सृष्टवत रख पाते हैं। निश्चित ही यह कार्यक्रम, यह आयोजन हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति लब्धता से विस्तृत भावों को युक्त करने वाले विशेषज्ञों के मनोभावों को प्राप्त करने में सहायक होगा और साथ ही साथ उनके बेहतर भावों को प्राप्त करने में हम सभी को श्रेष्ठता प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम अपनी उच्चता का घोतक बनेगा, जो साथ ही साथ आप सभी के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टता, जिसको पेपर प्रेजेंटेशन के रूप में और हमारे विशेषज्ञों के द्वारा रखी जाने वाली विशेषज्ञताएं जो उनकी बौद्धिक उत्सर्जना के रूप में हम सभी के बीच रखी जाएंगी, वह निश्चित ही एक नवीन चेतना का हम लोगों में संचार करे। यह एक ऐसा अद्वितीय स्वरूप को प्राप्त कार्यक्रम आसान्वित और धरातलीय स्तर पर अपने प्राप्त आभासी पक्षों को लेकर के उद्धृत होगा, जिसमें हम सभी प्रशिक्षणात्मक भावों की श्रृंखला को कैसे ऑनलाइन पटल पर विधेयता प्रदान की जाती है, उन सभी पक्षों को उदाहरणार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए श्रेष्ठता की तरफ अंगीकृत होंगे। एक से एक बृहत्तर भावों को प्राप्त श्रेष्ठ जनों को सुनने, समझने, जानने और उनके मनोभावों को प्राप्त करने का ये जो मधुबन एजुकेशनल फाउंडेशन अयोध्या के द्वारा हमें अवसर प्रदान किया जा रहा है, इस हेतु यह संस्थान, यह फाउंडेशन घोर घोर धन्यवाद ज्ञापन का भाव है। निश्चित ही यह एक ऐसा सुअवसर है कि जब हम अपने घरों पर बैठ करके अपने भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में रत रहते हुए भी श्रेष्ठता को प्राप्त व्यक्तियों के मनोभावों को प्राप्त करने हेतु यथोचित समय अवधि को प्राप्त कर रहे हैं, समय कैसे समय का सदुपयोगात्मक भाव कर रहे हैं, जिसमें हम अल्पतम समय में भी अधिकतम लाभांश की तरफ बढ़ते हुए और विदेशों के भावों को प्राप्त करने हेतु उनसे आज समन्वित होंगे। यह कार्यक्रम बौद्धिक उत्सर्जना का एक श्रेष्ठता का भाव स्थापित करते हुए अपने भाव की तरफ चलेगा और निश्चित हमारे साथ जुड़ रहे जितने भी वैशिष्टता को प्राप्त विशेष जन है, विशेष शिक्षक, पुनर्वास व्यवसायिक, आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के वे अभिभावक गण जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से अपनी समृद्धता को, अपने शैक्षणिक भावनाओं को, श्रेष्ठता को व्यक्त कर रहे हैं, जो श्रेष्ठवत कर रहे हैं, उन सभी के भावों को प्राप्त करने का यह सबसे अच्छा, सबसे सुलभ, सुगम बृहद भाव होगा। तो एक सुखद दिवस पर, एक मांगलिक दिवस पर और आज वसंत पंचमी के इस बयार के दिवस पर आयोजित होने वाले इस बृहदत्तर भावों और अकल्पनीय अपनी उत्सर्जना से, श्रेष्ठता से, बौद्धिकता से युक्त
इस कार्यक्रम को प्राप्त करते हुए हम सभी आह्लादित हैं। मैं नागेश पांडे आप सभी का इस पटल पर पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस 2 दिवसीय चलने वाले प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम में आप सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी को सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उद्बोधन, बहुत ही एनर्जेटिक, उत्साहवर्धक। अब मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर पटल पर आएं और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Nagesh and Mr. Neeraj Tiwari, for giving me this opportunity. Today is a very auspicious day. As you all aware, just a while back, Mr. Nagesh Pandey told that today is Vasant Panchami, and we all are gathered here for another auspicious event which is going to be organized for 2 days, that is today and tomorrow. The basic theme of this international WAP conference is very pious and important in the present scenario. For the next 2 days, we will be discussing about various components, various domains of challenges and opportunities which are being faced or which may be faced by the persons with disabilities in post-COVID era. Now, the opportunities, when we talk about opportunities, the first thing comes in our mind that opportunity seems a kind of facility, a kind of system available which makes our life more and more comfortable. I'm here to welcome you all in this international web conference, which is having CRE status as well. As I told earlier, that the basic theme, the main theme of this international conference is challenges and opportunities of education and rehabilitation of persons with disabilities in post-COVID era. I would like to welcome all the dignitaries on this forum, on this online forum, and I'm welcoming all those who are unable to present, unable to join till now, but they are part of this program from the very beginning when we planned this conference, well before somewhere 6 or 8 months prior to this conference. Now, as a formal welcome, first of all, I would like to welcome our keynote speaker, my guru, Professor Shri Ram Mittal sir. He may be not joining today because of some unforeseen circumstances. He just called me this morning that it won't be possible for him due to some reasons. But I welcome him because he is present in our heart. He is present in the era of this disability and rehabilitation, one of the most senior professional in the field of disability and rehabilitation in our country. I pay my gratitude and my sincere thanks to Professor Mittal. He told me that if it is possible, he will join. And in this connection, in this series, I would like to also welcome
Professor Kapil Dev Mishra, sir. He is Honorable Vice Chancellor of Rani Durgavati University, which is located in Jabalpur. Such a nice and a very wonderful administrator and a very known personality in the field of history and culture and archaeology. My sincere thanks and welcome, Professor Kapil Dev, sir. I remember my means when I started my career, I worked with sir, and it was a wonderful. You can say that environment which you have given to us during our working in the university located in Chitrakoot. I also would like to welcome Mr. Nachiketa Raut, sir. He is Director, National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai. A very warm welcome, sir, from this part of country to the southern part of country, Chennai. Warm welcome, sir, Mr. Nachiketa Raut. Today it's a wonderful moment when we are having one Padma Shri awardee with us, Mr. Agus Indra Udayan. He is founder member of Gandhi Ashram located in Bali, Indonesia. He has done wonderful efforts for the peace and upliftment of several people who desperately need some changes in their life. Welcome, sir. I welcome Dr. Udayan, Agus Indra Udayan, Padma Shri awardee in this conference. I also would like to welcome Professor Avnish Chandra Mishra. He is former Dean, Faculty of Special Education and former Head, History, Culture and Archaeology Department at Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, which is located at Lucknow. He's a very known figure in the field of history as well as disability, since he worked for a long time in university located, the first university located in Chitrakoot for persons with disabilities. I welcome, sir. I welcome you on this forum. I also would like to welcome my friend, Dr. Gyanendra Nath Tiwari ji from MIT University, Noida. Mr. Tiwari is having wonderful experience of blended kind of knowledge, special education and general education. Both the fields are complementary to each other, and without special education we cannot consider education, and without general education we could not consider special education at large. Welcome, Dr. Gyanendra Tiwari ji. I also would like to welcome Dr. Adya Shakti Rai ji, who is head of the department at Department of Visual Impairment at Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, Lucknow. Welcome, madam. As I told for Mr. Gyanendra Tiwari, Dr. Gyanendra Tiwari, she is also having the same kind of knowledge, general education as well as special education. I welcome Professor Nasir Ali from University of Jeddah, Saudi Arabia. Welcome, sir. He will be one of the chairperson of the seminar and will be presenting his paper on a related theme. I also would like to welcome Dr. Sujata Malini, madam. Dr. Sujata Malini is from Algappa University. Mr. Vijay, can you, your mic is on, Mr. Vijay. Thank you. I would like to welcome Dr. Sujata Malini, Professor Sujata Malini from Algappa University, Karaikudi, and she's having wonderful experience in the field of special education. Would like to welcome Mr. Shankar Narayanan, my ex-colleague, whom I worked with in NIPMED when I was there. Mr. Shankar Narayanan, hope you are fine there. Yeah, sir. Thank you. Would like to welcome Dr. Chandra Ram, Principal,
Radhe Hari PG College in Kashipur, Uttarakhand. Welcome, sir. Would like to also welcome Dr. Neeraj Shukla, who is convener of this program, and Dr. Neeraj Tiwari as well. Efforts of these two Neeraj made this conference a wonderful success. I have seen the schedule as well as preliminary kind of souvenir, shows that it was a wonderful and tremendous effort made by both these people, both these Neeraj. So welcome. Thank you, sir. Both the Neeraj, Dr. Neeraj Tiwari and Dr. Neeraj Shukla. Dr. Neeraj Shukla may not be joining because of some unforeseen reasons. We are also having some international delegates, international guests on this forum who will be presenting after this inaugural session, because they are having there's several they will be chairing the session. They will be presenting research papers. They will be presenting their expertise in this conference. I would like to welcome Professor Zafrul Alam from University of Bahrain. Welcome, Dr. Alam, Professor Alam. I would like to welcome Mr. Paul Cronenberg from Netherlands. I must say, welcome, a special welcome to Professor Paul, Dr. Paul. He's working so nicely in the southern part, Kerala state of our region, of our country, and doing wonderful things, wonderful job for marginalized section of our society. Welcome, Mr. Paul Cronenberg. I would like to welcome Professor Munno Munchi from University of Technology, Savannah, South Africa. Now welcoming Ms. Diana from Argentina, Professor Zuvani Sarkavi from Hayam Wayak, Surabaya, Indonesia, and also would like to welcome Dr. Jennifer, Forensic Intervention Center, Australia. As you heard from this long list, that during this period, during this program preparation, these two people, Neeraj, both the Neeraj worked hard, and the schedule itself showing that so many eminent personalities in the field of disability and rehabilitation have joined this forum to discuss their expertise, to discuss their views about challenges and rehabilitation, challenges and opportunities for rehabilitation and educations of persons with various disabilities in post-COVID-19 era. Now, this post-COVID-19 era, in many aspects, has shown us a different way of living, different way of learning. No doubt, several experiences are associated with COVID-19. Several are of the positive side and several are of negative side. But if anyone focuses on positive side of the direction, what is positive side of the scenario, it will be easier to get rid of such kind of situation. We know the entire world is facing the implications of this corona outbreak, and such conferences will make a difference. Such conferences, the outcome of such conferences will definitely do something, will definitely make some visionary changes, so that persons with disabilities also can enjoy the rights which they deserve. Now, I would like to welcome one and all who have joined till now, who are joining in this conference for today and tomorrow, and those who have worked a lot of things
in successful implementation, successful planning of this conference. Once again, welcoming you all on this forum, on this pious forum, on a very auspicious and pious day, that is Vasant Panchami. That is all for today from my side in this welcome session. I would like to request Mr. Nagesh or Mr. Neeraj Tiwari to proceed further with the scheduled, as per the schedule. Thank you, Neeraj ji. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा उद्बोधन, वेरी नाइस एड्रेस बाय विजय शंकर शर्मा, माय गुरु, माय सर. थैंक यू सो मच सर फॉर द एड्रेसिंग. नाउ मैं अभी अपने सर डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा कि प्लीज सर पटल पर आएं और अपना उद्बोधन व्यक्त करें. डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी सर. Thank you, Dr. Neeraj, and it is a privilege for me to join the session and this conference. And really, we are creating history as this is a truly international conference in true sense, and it is a joint event of many organizations. Basically, it is organized by our foundation, that is Madhumay Education and Research Foundation, and along with the help of NIPMED, and there are other bodies who are involved in the organization of this conference, along with MIT University and different government bodies and different non-government bodies as well. So I was told to speak something about the conference. And the conference is is having this. It is under the CRE program, RCI, and the topic of the conference is challenges and opportunities of education and rehabilitation of persons with various disabilities in post-COVID-19 era. So as I think everyone is aware about the this COVID-19 era. So this is now the era, and we must understand that how education and the rehabilitation of persons with various challenges is affected by the this COVID-19 era. And although we are actually in era right now also, so this is one of the most relevant topic that one can take for any kind of international conference, and it is in collaboration with National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disability, that is Divyangjan. And it is a 2-day international conference, as you must have listened that Dr. Vijay Shankar Sharma has introduced the different eminent personalities and educationists around the world. So basically, it is the conference of that where the people from different parts of the world gathered, and from Europe, from Asia, from Australia, from America, from different continents. So it is a truly international conference, and the sub-theme of the conference is inclusive response to COVID-19, education for children with disabilities, then impact of COVID-19 on the right to health and education of persons with disabilities, and impact of COVID-19 on institutional persons with disabilities who are living in the institution, then impact of COVID-19 on right of persons with disabilities in common living, then its impact on work, income, livelihood of persons with disabilities, then its impact on persons with disabilities with for to protection from violence. Then the conference also deals with the role of media on portraying impact of COVID-19. So that is one of the most relevant thing. Then it talks about the disability, what are the COVID-19 responses, and what is the status of recovery, and it will talk about the post-COVID-19 approach, that how it is an opportunity to make education truly inclusive, and then empowering students with disabilities in COVID-19 crisis, and then last one is youth and disability inclusive and post-COVID-19 response, recovery and resilience. So as you can see that this conference is covering all the area
that can deal with the effect or impact of the COVID-19 pandemic, and to the education as well as to the person with disability. And that's why many institutions like the Department of B.Ed, RH Government PG College, in Uttarakhand, then University Hayam Yurik from Indonesia, that language laboratory university from Indonesia, then Department of Visual Impairment, Sakuntala Devi University, Lucknow, then Department of Education, Special Education, IIHER, Patna, then MIT Institute of Behavioral and Allied Sciences from Noida, and then Ashram Gandhipuri, Bali. So they also coordinated to organize this conference. So I think we will discuss these issues in coming 2 days, and in detail, each and everything will be discussed. And this conference will cover all the positive, negative, as well as the critical impact of the COVID-19 pandemic. And similarly, it also talks about the what are the different challenges and what are the different opportunities in during this COVID-19 pandemic era. So this is all from my side, and I again welcome formally all the participants, all the delegates from the different parts of the world, and along with the on behalf of the team of this MEARF, that is Madhumay Educational and Research Foundation, I welcome you again, and I hope that during this international conference, we will be able to extract something that can be applied to the society, and that can be used as a guideline that how we can deal with the COVID-19 pandemic in terms of education, in terms of rehabilitation, and in terms of research and development, along with the how we can what kind of innovations we can do in the our teaching learning process, as well as for the rehabilitation of the person with disability. So this is all from my side. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Gyanendra Tiwari ji, for a wonderful presentation of the theme of this conference, today's international conference. I missed some of the associated institutions, and you have thrown light on that. Thank you so much once again, Dr. Tiwari ji. As I told you in my welcome address, that Professor Mittal may not be joining because he's having some issues, some unforeseen issues. Now we are having another distinguished guest with us, Mr. Agas Indra Udayan. Mr. Professor Avnish Chand Mishra, sir. Sir is having a wonderful experience with him, worked for several years in the first university for persons with disabilities in Chitrakoot. He was having several assignments there, and then in Lucknow, and having a wonderful experience of disability as well as history, culture, and archaeology background. Would like to welcome Professor Avnish Chand Mishra, sir, for his guest of honor speech. May I request if he joined, sir? Professor, he's here. Welcome, Hello. sir. Requesting you to please start your session, sir. हेलो Yes, sir. You are मेरी audible, आवाज sir. जा रही है ना? प्रणाम, sir. आवाज आ रही, Yes, sir. sir. सादर प्रणाम. नमस्ते. ये अंतर्राष्ट्रीय जो विचार विमर्श आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे रखा है, इससे काफी इश्यूज सामने आएंगे
और आपने चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटीज की बात की। ये मानव सभ्यता प्रारंभ से ही, इसका जो विकास है, इसकी जो यात्रा है, वो चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटीज से है। एक टाइम भी बहुत बड़ा हिस्टोरियन हुआ था, उसने सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट को इसी रूप में देखा था। चुनौतियां आती हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं। हम स्टोन एज से हिस्टोरिकल पीरियड में आ गए, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आए, हिस्टोरिकल पीरियड में आए, एंड बहुत सारी चुनौतियों को हमने स्वीकार किया। फूड गैदरिंग और हंटिंग सोसाइटी से एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की यात्रा हमने की, पूरी दुनिया ने। और फिर और फिर आवाज कैसा आ रही है गूगल मीट में? हेलो। तो ये चैलेंजेज और रिस्पॉन्स, ये सोसाइटी के डिफरेंट फील्ड में आते हैं। एक कंट्री के रूप में, पूरी सिविलाइजेशन के रूप में, और मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन में। हम राइटिंग से परिचित नहीं थे, आना आर्ट ऑफ राइटिंग से हम परिचित नहीं खुल थे, गए। हम आगे बढ़े, हमने आवाज लिखना क्लियर जान बंद लिया। हम एक ऐसी परंपरा से ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे जो मौखिक परंपरा जानी जाती है, जो श्रुति की परंपरा जानी जाती है, और वैदिक कालीन जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिख दिया इस देश ने, जिसमें रुचि पूरे भारत, पूरी दुनिया की हुई। जिसमें रुचि पूरी दुनिया की हुई, और यहाँ के संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों को लोगों ने पढ़ा, और फिर दुनिया को भारत के चिंतन के बारे में बताया। ये चीजें आगे बढ़ती गईं। मनुष्य के रहने, कृषि, एग्रीकल्चर और बाकी क्षेत्रों में भी जो चैलेंजेज आए, उसको धीरे धीरे, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना, ये मनुष्य जानता है, ये मनुष्य की स्वाभाविक एक क्रिया है। टीचर के सामने भी चैलेंजेज आते हैं, डिफरेंट प्रकार के स्टूडेंट्स को उनको डील करना है। आपने अच्छा नाम दिया, एक इंक्लूसिव अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन में इंक्लूजन की बात करते हैं। ये जो हमारा, ये भी एक रिस्पॉन्स है। समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी दृष्टि भविष्य की ओर रहती है, हम पास्ट को समझ के और भविष्य की जरूरत के अनुकूल प्रेजेंट में जो अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं, जो चुनौती, जो रिस्पांस देते हैं, वह भविष्य का निर्माण करती है, वो मार्ग खोजती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, वो जो फिजिकल फैसिलिटी क्रिएट करने के फील्ड में हो, मानव को जीविका देने के संबंध में हो, सब में। तो हमारी ये दृष्टि, कोविड भी, महामारियां बहुत आई दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न कॉन्टिनेंट में,
और बड़े अक्रॉस द बॉर्डर इस प्रकार की महामारियों की चुनौतियों ने मनुष्य के सामने प्रश्न खड़ा किए। आप 17वीं सदी की बात करें, आप 18वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी की बात करें, बीमारियां भी एक चैलेंजेस हैं। तो एक तो मनुष्य का रिस्पांस हुआ, जो भारत ने रिस्पांस किया था। भारतीयों ने रिस्पांस किया कि हमको दूसरे को कम हानि पहुंचाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये क्या रिस्पांस है? हानि किसको पहुंचाने की बात कर रहे थे? वो फ्रेंडशिप की बात करते थे। वो कहते थे कि नेचर को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। प्रकृति के साथ हमको एक सहजीवन के रूप में, अपने लोगों के साथ सहजीवन के रूप में, तो एक तो नेचर के साथ, और फिर जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, उनके साथ, ये दो धाराओं को लेकर भारतीय दृष्टि आगे बढ़ती है। एक और वो प्रकृति का को मित्र मानती है, और दूसरी ओर समाज को अपना मित्र मानती है। इसीलिए वो सहजीवन की बात करती है, इसीलिए को एग्जिस्टेंस की बात करती है। और ये बात करके ये संस्कृति चुनौतियों का सामना करती हुई आगे बढ़ती है। तो उसी से शब्द निकला, उसी से भाव निकला, जिसको हम आज के शब्दों में, आधुनिक दुनिया ने जिसको सस्टेनेबल नाम दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई, सस्टेनेबल एजुकेशन की बात आई। ये चैलेंजेज और रिस्पांस का ये फल होता है। लेकिन जो दूर दृष्टि रखने वाले लोग हैं, दुनिया के बहुत सारे दार्शनिकों ने, और विशेषतः जो भारत का जो वैदिक जो चिंतन था, उसने ये शब्द तो प्रयोग नहीं किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन उनका भाव इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर था, क्योंकि हम उसको अपना मित्र मानने की बात कर रहे थे। और प्रकृति के साथ इस रिश्ते में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारा उद्योग धंधा कैसा होगा, हमारे विद्यालय कैसे होंगे, इन सब पर उन्होंने विचार किया। हमारे स्टूडेंट कैसे होंगे, इस पर उन्होंने विचार किया। इसीलिए आप जाएंगे डिफरेंट वैदिक ग्रंथों में, कुर्म पुराण में, यहां एजुकेशन के ज्यादा लोग हैं, कुर्म पुराण में भारतीय शिक्षा का बहुत सुंदर स्वरूप दिया गया है। आपके विद्यालय कैसे होने चाहिए, कक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कक्षाओं में जंगला कैसा होना चाहिए, खेल का मैदान कैसा होना चाहिए, और उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड कैसा होना चाहिए, ये सारा विद्यालय के लिए जो जो शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षार्थी के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं पालन करने के लिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए, और किन मूल्यों से अभिप्रेत होना चाहिए, ये बात कुर्म पुराण में बहुत विशद रूप में दी गई है। तो ये रिस्पॉन्सेज हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारी जो चुनौतियों का, जो हम जिस प्रकार हम उनको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वो रास्ता बनाते हैं। ये कोविड भी हमारे बीच एक चुनौती आई है। मेडिकल साइंस के लोग इस चैलेंज को, इस चुनौती को एक रूप में देख रहे हैं। वो ट्रीटमेंट के भिन्न भिन्न रास्ते और वैक्सीन की बात करते हैं, बूस्टर डोज की बात करते हैं।
एजुकेशन के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए चुनौती है कि हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं या स्वयं अपने लिए भी बहुत चैलेंज एक चुनौती उपस्थित कर दी है इस कोविड-19 ने। आपको टेक्नोलॉजी के साथ रह के अपने सारे काम करने होंगे। हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते, हम अपने को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फिजिकली हम अपने लाइब्रेरी में नहीं जा पा रहे हैं, शहर में लाइब्रेरीज हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों से हम नहीं मुखातिब हो पा रहे हैं सीधे तौर पर। हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, ये हमारी बाध्यता है। हम उसमें नहीं जाना चाहते जिन बातों का मैंने संकेत किया कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं। इसको प्राचीन भारतीयों ने एड्रेस किया था ताकि ऐसी परिस्थिति ना आए, ऐसी बीमारियां आए ना, इनको कैसे हम करें। लेकिन हम उसकी ओर नहीं जाके उसका संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर ये परिस्थिति आ गई है तो डॉक्टर विजय जी ने कहा कि आप केवल सकारात्मक बातों पर जोर दें, लेकिन आप सकारात्मक बातों के साथ आप उसकी चुनौतियां हैं वो कभी कभी नेगेटिव लगती हैं। हम अगर दुश्मन के स्ट्रेंथ को नहीं जाने, वीकनेस को नहीं जाने, तो कोई राजा अपनी नीति को उस तरह नहीं बना सकता। जैसे प्राचीन भारत में देखिए ना आप, गुप्तचर लोग यही काम करते थे, अपना भी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना, और जिस परिस्थिति जो चैलेंज हमारे बीच है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कोविड-19 ने टीचर्स के सामने चुनौतियां उपस्थित की, विद्यार्थियों के सामने चुनौतियां उपस्थित की, स्कूल के मैनेजर्स के सामने, कॉलेजेस के मैनेजर्स के सामने चुनौतियां उपस्थित की, और पूरी सोसाइटी में का जो एक मनोविज्ञान है, जो घर का मनोविज्ञान है और जो समाज का मनोविज्ञान है, इन दोनों में परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं। हमारा एकाकी जीवन हमें सामूहिक भाव से अलग कर रहा है। एक नई चुनौती आ रही है। विद्यार्थी की जिज्ञासा वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में विकसित न होकर आधुनिक जो टीवी के जो विषय हैं उन किसी खास केंद्रों की ओर उसको केंद्रित करती जा रही है। एक चुनौती है। कम्युनिकेशन एक चुनौती है। हम अपने विद्यार्थी से अपनी पूरी बात नहीं कह पाते। हमारे पास अगर वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है तो हम उससे पूरा डिस्कशन नहीं कर पाते। ये चैलेंज है इस कोविड में। वो चाहे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हो, उनके साथ चुनौतियां कुछ बढ़ जाती हैं, लेकिन ये चुनौती है। हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे अपनी बातों को पहुंचाएं, कैसे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जितना अर्जित ज्ञान है, अगर वो ज्ञान नित नूतन नहीं हुआ तो रिस्पांस अच्छा नहीं होगा। ये रिस्पांस ठीक करने के लिए कम्युनिकेशन भी एक बाधा है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक चैलेंज है डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के साथ और बाकी लोगों के साथ। इसको ये एक हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। फिर जो टेक्नोलॉजी की जो सीमाएं हैं, टेक्नोलॉजी की जो रीच है, क्या वो सुदूर क्षेत्रों तक उसकी पहुंच बन पाई है, एक चुनौती है। आज हम अपने विद्यार्थी से, हमारे कक्षा में मास्टर्स डिग्री में 40 विद्यार्थी हैं।
लेकिन कभी नहीं हुआ कि 40 विद्यार्थी एक बार जुड़ पाए, वो जुड़ नहीं पाते। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, कभी 40%, कभी 50%, कभी 55%, 60% तक प्रेजेंस रहती है। बहुत सारे रीजन है, आप लोग इसको कोविड के काल में बहुत सारा इस पे चर्चा हुई है। तो ये टेक्नोलॉजी की एक समस्या है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पैसे नहीं है, वो अपने टीचर्स को, अपने कर्मचारी को वो टेक्नोलॉजी का बेस नहीं उपलब्ध करा पाते। कई बार हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल एफर्ट के कारण लोग इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक समग्र एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसमें जो अच्छाई है कि थोड़े समय में ही इसने टीचर और टॉट के रिश्ते को थोड़ा बदला है। वो मनोविज्ञान की ओर मैं नहीं जाना चाहता, डॉक्टर विजय जी बताएंगे, मेरा समय अगर हो जाता है तो। सर प्लीज कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो वो टीचर और टॉट के रिश्ते को बदला है। लेकिन वो रिश्ता, जिस रिश्ते को हम उसको फिर अगर हम ले जाएं पिछले 4-5 हजार सालों के इतिहास में अगर देखें, हम कम विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, लेकिन शर्मा जी आवाज नहीं आ रहा है। विजय शंकर शर्मा जी। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। मैं देख रहा हूँ सर, उधर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। प्लीज प्लीज। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। आ जाएगी, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी I think is there any technical issue? I think sorry, from my side also there is some issue. So can anyone help me that whether this session is over from Professor Mishra? Is it so? If anyone can help me from that side, from सर मिश्रा सर का डिस्कनेक्ट हो गया है। okay. Actually, we are having same service provider, so I think there's some technical issue with Professor Mishra, but he has given a wonderful session on how we consider these challenges and opportunities. He discussed very briefly and very intelligently that how these strengths and weaknesses can be termed as, can be considered as challenges and opportunities, right? So if we know the strength of enemy, we can check this
we can consider these things as challenges for us. And what are the means various weaknesses of enemies may be opportunities for us. So it's a wonderful thing. He has very beautifully discussed about coexistence, as we are living in such an environment where we can say inclusive society to be created. So coexistence and sustainable development he has discussed very beautifully. Thank you so much, sir. Now, very respectfully, I would like to invite, I'm happy to invite, very happy to invite Padma Shri awardee, Shri Mr. Agas Indra Udayan sir. A very warm welcome, sir, once again. Namaskar. Sir, namaskar. I hope you are very, very fine there in Indonesia. You are inspiration for us. And Thank you. without taking too much time, I would like to request to please start your session and give us your blessing. Thank you so much. Thank you. Happy Panchvansa. Hope the voice is good for you. Yes, thank you. This is a thank you to all our brother and sister who are in India nowadays. I'm very happy to be part of this conference, to the meeting. Even my background is not too much in education, in the formal education mostly, because as a social worker, most of my time is in the field of the people and the younger people here in Indonesia. Then thank you most of our friend here, Dr. Gyanendra Tiwari, brother, Prof. Namaskar, brother. Namaskar. Namaskar to all of you. This is a great opportunity after COVID-19. Of course, now it's not after yet because still another new variant is coming. Then it's becoming more difficult also for us to create something, even the program, because even like now in Bali, still we are closed to not open to the public. But our idea is how in this conference, we are meeting by people to people, like now here. It's mean we got the inspiration from the people, how we create something for the people. It's not just for us, because we know the problem is not only in Indonesia, but it's all over, not only in India, but all over the world. Like nowadays, of course. For this conference, actually, my idea just to listen from all the dignitaries here, because you are have expert and more more experience in the field of the work. But for the disabilities people nowadays, I think the time of the Corona time, we are more love. Actually, we are more close each others, because most of the time we are, as a person, we are outside. We are outside of our house itself, then we don't have time to meet our family. But nowadays, we know what is the problem in our nearest. Before we are think about the people outside, how far the people. But nowadays, with this current situation, we are here, we are together, then we know how we are involved with the situation. I cannot talk too much actually for this conference. I want to listen first. I just joined nowadays, then listen from all of you. Then what is your experience? But with your experience in anywhere in India, of course, you have so many great work you do for the society. Mostly some of friend we met, like Dr. Gyanendra Tiwari. I know him very well. Then he doing such a great work, how in education field, how they are touch the people. Then hope with this conference, more and more we can work together, more and more we know each others what we are doing. Then we are from the Ashram Gandhipuri, Indonesia in Bali with our students here with the university student who's staying in our ashram. We are try to make them also understand how to serve
the society and the people also by people to people work. Then from this conference, hope I can join also to listen more and more the people share and talk. Then thank you very much for all of your time. Then to give me opportunity to be part of the conference here. And Mr. Vijay Sankar Sarmaji, thank you very much. I don't know what I should talk too much because actually I want to listen from all of you. The great opportunity for me to listen from you, Dr. Miss Kavita Moore, and Ajit Yadav, Rajesh Ramchandran, I see Balaji Kandekar. Hope we are becoming more close nowadays. Then hope also soon open the border between us, then between Bali, Indonesia, and India is becoming more close. Mr. Ganendra Trewari, you should come to Bali soon. Yes, sir. We all are coming. We, along with Vijay Sankar Sarma, sir, and Dr. Neeraj Tiwari, Dr. Neeraj Shukla, everyone will come together. Yes. Along with other Make members. Bali is your part, your house in your home. Welcome, Mr. Nasir Ali, also. Then thanks very much. I just want to listen first. Then maybe in the discussion, I will be joined with you. Thank you very much. Namaskar. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग फॉर हियर सर. आपका आना सर हमारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहा. थैंक यू सर. एंड नाउ विजय शंकर शर्मा सर, प्लीज go ahead and welcome to the session. Right, thank you. Thank you, August Indra Udyan sir. It's a wonderful privilege for us since you are here on this forum. We are really overwhelmed that you are here with us. See, you are doing wonderful things in Indonesia. We know, me and Mr. Gyananath Tiwari have discussed several times about you, the efforts which are being made from you and your organization, that Gandhi Puri Foundation there. And it's really wonderful. I'm now welcoming Mr. I've seen now. Mr. Ajit also, Ajit Yadav is sign language interpreter from our side. Welcome, Mr. Ajit, and thankful to you to be here. Ajit ji, आपका स्वागत है. Without taking much of your time, now I would like to invite Professor Nasir Ali. Is he here? Professor Nasir Ali from University of Jeddah, Sultanate of Saudi Arabia. Mr. Neeraj, is he here? Yes sir, Nasir sir है, line पे है. Okay. Nasir sir. Okay. Professor Nasir Ali sir, may I request you to give your blessings on this forum. Professor Nasir Ali from University of Jeddah, Saudi Arabia. देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है. नासिर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, to unmute. Unmute करने के लिए बोलो. Okay. नासिर सर, प्लीज अनम्यूट सर. मैं एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सर का दिख रहा है स्क्रीन पर, बट आवाज नहीं आ रही है. मैं देख रहा हूँ सर. This Yes. It's a kind of Yes. Nasir sir is here with us. Thank you, sir. Please Okay. continue, sir. Acha. We are welcoming you. Thank you. Good morning, everyone. I am Nasir. You have told me earlier. That is University of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. And now, without delay, we just discuss something about the effect of COVID-19 and challenges for the persons with disabilities. So, first of all, I would like to thank and congratulate the organizers of this international conference on challenges and opportunities of educational and rehabilitation of persons with various disabilities in post-COVID era. And a special thanks to Organizing Secretary Dr. Neeraj Tiwari, President and founder of Madhumaya Education
and Research Foundation for having me in this international conference. Really, this is very good opportunity for me that I highlight something, or that is the effect of COVID-19 and challenges for the persons with disabilities. Everywhere, there are the most important aspect that you have played the role in during this, that is COVID-19. That is, I mean that the NGOs, the non-government organizations, that you are playing very significant role, that you cooperated the peoples, the societies, disabilities, the persons with disabilities, all spheres in the society, that your contributions that cannot be ignored. So now I just present my ideas about the COVID-19 pandemic, to a great extent seen as a new example of a large scale. This pandemic is of a larger scale, unexpected shock, which is likely to have many complex and long-term consequences on several areas of society at global levels, not a particular region, but all over the globe. It covers and it impacts the whole systems. The educational systems are also important for this. We have faced an unprecedented situation. In this, yes, any problem? No, sir, you continue, sir. I think Mr. Agasindra has having some issues with mic. You please continue, sir. Okay. That is several. That is about we are discussing about the pandemic to a great extent seen as a new example. This is the new example. Earlier, there are many pandemics that arrived all over the countries, but this type of pandemics never seen in the history of mankind. A larger scale unexpected shock, which is likely to have many complex and long-term consequences on several areas of society at global levels. We have faced an unprecedented situation. In this pandemic, with entire countries having prolonged restrictions such as curfews, school closures, gathering and travel restrictions. These are the very, very severe consequences of this pandemic, and the people have faced these challenges. Now, this pandemic has caused abrupt and profound changes around the world. This is the worst shock to the education system. Indicates with the longest school closures combined with looming recession, it will set back progress made on global development goals, particularly those focused on educations. This pandemic has disrupted life in every corner of the globe, creating a crisis that is unprecedented in its scale and scope. A growing body of evidence shows that both virus itself and the measures taken by the governments to contain its spread disproportionately impact children with disabilities and their families. Some underlying health conditions place children with disabilities. Here we put emphasis on the disabilities. Disabilities at high risk for becoming infected with and developing several illnesses because of children with disabilities, especially those with difficulties in the domains of hearing, seeing, and cognitive functionings
also face important barriers in the access to inclusive public health information and communication, strategies that are crucial as preventive measures during pandemic period. Access to essential health services such as washing hand facilities are also important factors, not only because many children living with disabilities lives in poverty context, but also due to the intrinsic barriers in accessing these services and the limited capacities of health system to deliver inclusive health care services. There are also widespread concerns about the effect of social isolation or the social distancing on child well-being, including increased anxiety, depression, stress, and concern about relapse of pre-existing mental health issues. Quarantine constraints and overall burden faced by families might also place children with disabilities at increased risk for discrimination and of being exposed to violent discipline methods in household. The great burden faced by children living with disabilities means that the additional effort will be required to ensure their needs are being met when switching to different pandemic phases. Programmatic actions will need to address these specific challenges during the pandemic and post-pandemic period, along with differentiated, inclusive policy responses. Although we know that the pandemic has yet not been finished, but the post-pandemic or post-COVID, the person who has the experience with the with this viruses, those who have affected, they need rehabilitation. They need extra effort from the family members, from the societies, and other social groups. Like this. So the COVID-19 pandemic exposed the weakness, fragilities, risk, and inequalities in the education of learners with disabilities within and across countries. According to the UN report 2020, 1 billion persons with disabilities in the world are affected by COVID-19. The United Nations policy further states that persons with disabilities have been disproportionately impacted by COVID-19 outbreak. Even prior to the pandemic, the millions of learners with disabilities are reported to be receiving inferior quality education, often separated from their peers. Among the world's most disadvantaged groups are children with disabilities, with educational opportunities remaining out of reach of most of them. Children with disabilities with multiple barriers, stigma, and discrimination against them are still among the most left behind in education system worldwide and faced many challenges like lack of old competencies of students, parents and teachers schools. There are many challenges they have faced.
But without going on long period, I just conclude my talk with the remark that the person with disabilities require adequate facilities and equal opportunity for their sustainable development. And in this regard, particularly the NGOs of different levels, they are contributing to provide them the opportunities. So at the end, my sincere thanks to organizing committee, participants, and audience. Once again, I thanks all the members. Thank you. Goodbye. Thank you so much, Professor Nasir Ali. Wonderfully has given his concluding remarks of his session that persons with disabilities should have adequate facilities and equal opportunities. A wonderful quote, sir. And he has thrown light on, have seen that during this pandemic, we have prolonged restrictions in the form of lockdowns, in form of school closures. And as a school closure, we have seen so many consequences. Because we are educationists, we are having great concern, we are having more concern with the school education. So if the schools are closed, then you are very rightly said, sir, that inferior quality of education, because inferior in the sense we are not able to provide education to all of them, those who are enrolled. So this is to be considered while we are talking about challenges and opportunities. A wonderful talk, sir. Thank you so much for your session. It's eye-opener for us. Now, in this sequence, we are having Professor Sujata Malini, Madam. Professor Sujata Malini is from Algappa University. We have shared so many forums. Professor Malini, now I would like to request Professor J. Sujata Malini, Madam, to come and discuss, come and share their views, her views on this particular theme. Professor Sujata Malini, Madam, please. Good morning to all of you. So am I good morning, Madam. Very good morning. Yes, Madam, you are audible, very much audible. Oh yeah, thank you, sir. So it's a very good opportunity to meet you all through this international conference. At the outset, it gives me immense pleasure to extend my heartfelt gratitude for organizing this wonderful international conference, which is need of an hour. We often say that collaborative venture always yields effective result. So in this aspect, I think Madhumehi Educational Research Foundation, Ayodhya, and National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disabilities has jointly organized this international conference on challenges and opportunities of education and rehabilitation of persons with various disabilities in post-COVID era. I think they have organized this wonderful conference in line with the theme proposed by the United Nations. I think 2021 they have proposed the theme on taking lead and making the persons with disabilities to participate in an inclusive, accessible and sustainable post-COVID world. So in line with this theme, I think this conference is aiming to achieve this rehabilitation professionals, special educators, teacher educators, to take steps to meet out the challenges and opportunities encountered by various persons with disabilities. And we need to promote awareness and sensitize the public and the professionals for providing quality education for persons with disabilities. And to make this theme to be a realistic one,
This conference is a step ahead in this direction, and I am sure that the Madhumay Educational and Research Foundation, the organizer of this international conference, who is aiming to provide awareness, support, facilities, and research and development activities in the field of special education, is appreciable. And same National Institute for the Empowerment of Persons with Disabilities is also aiming to serve the persons with various disabilities, to help them to take lead and participate effectively in this society. So we need to create an inclusive society where all can have a respectful and dignified life, and this can be achieved by the way of fighting against different challenges and utilizing the opportunities of education and rehabilitation in a very effective manner. And I'm also feeling privileged that I'm also a part of this international conference, where we can discuss on different challenges and opportunities that has to be created on the part of education and rehabilitation. So when we talk about inclusiveness, we have to focus about inclusive education and multidisciplinary team approach in rehabilitating the persons with disabilities also. And on the part of accessibility, we have to concentrate on making the devices and technologies and educational services to be more accessible, adaptive, and assistive in nature, so that we can make sure that it will be accessible for all the persons with different disabilities. And we need to provide a quality education to the persons with disabilities in a much more broader way. So in this aspect, we are aiming to provide a bright opportunity to the persons with disabilities to excel in their life. And I am sure that this conference will also find a way out of various openings for their bright future. And the professionals, the resource persons, the technical speakers, and paper presenters will give a more insight into the challenges the persons with disabilities are facing and various opportunities available to provide quality education and quality rehabilitation services for persons with various disabilities in a broader aspect also, as well as in-depth and deeper concepts will also be detailed and discussed in this platform. So at this juncture, I express my happiness to be a part of this conference, and wish the organizer to conduct this conference in a grand success and grand manner. I am also very happy and eager to hear all the deliberations and all the paper presenters and the speakers' vision and opinions and their suggestions also. So in this regard, I wish a grand success for this international conference, and I take this opportunity to thank the director of NIPMED and the chairpersons of the Madhumay Educational Research Foundation for giving me this opportunity to share some of my viewpoints in this very great platform. Thank you. Thank you once again. Thank you so much, madam. Very beautifully, Professor Sujata Malini discussed that, told us that with the collaborative ventures, we can have effective results. And the theme of United Nations was also discussed in connection with the theme of this conference, as very beautifully United Nations has declared in this
this 3rd December has given basic theme of International Day for Persons with Disabilities. And from the same theme, we have chosen different domains. How we means again the collaborative efforts, NIPMED, Madhumay, our university, MIT, and several other, the University of Jeddah, several other university institutions can club together, can with jointly we can make some efforts which can be very effective for person with disabilities. And we have to make our society awareness and sensitized towards disability. With this, my heartfelt thanks from all the participants to you, Professor Madam. Now, would like to request Mr. Shankar Narayanan. He is Deputy Registrar in National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai. Mr. Narayanan, please. Mic to be unmuted. So, hope you can hear me. Okay. Very, very good morning to everyone, and respected dignitaries in the dais, of the dais, and my dear colleagues and rehabilitation professionals. It is a great opportunity that when Madhumay Education and Research Foundation approached us, Rajesh Ramachandran came to me, such an international conference to be organized. I immediately take up the matter and got the permission from RCA. And I never expected this conference will go this much reach. Definitely, the full credit should go to the organizers. And it's very difficult to bring all the professionals and across the world. It is not even across the nation, it's across the world. You bring a lot of professionals to discuss a burning issue. That's very, very important. And I would bring one quote from Thiruvalluvar. It's my favorite. Even our Prime Minister also favorite quote from Thiruvalluvar. It is a pleasure sitting along with eminent personalities and discuss cause, discuss the issue. That itself a pleasure, and hope these professionals definitely will give a due answer to the existing issues. And this kind of, see, the corona, so-called corona, it was from 2020, 21, and 22 also in extending. And somebody is telling another variant is going to come. That is not our issue, sir. Now, whatever comes, even big corona comes also, we are not bothered. We will be together and we will issue. Whatever issue comes, we are ready to face. That energy is we are getting out of this. And this particular international workshop is evidence for that. No, nothing can disturb us in finding solution for that. Mishraji also same thing he said, that whatever comes, we have to find a solution. We have to live. And we have to learn to live today, at least very, very happy. And I would like to share one of my recent reading. Come on. Yesterday doesn't have any opportunity. Today, one is there. That is opportunity today is there. And tomorrow you count how many opportunities are. Three O's are there. 3 opportunities are there. So we should not worry about this corona or anything. So this this thing, and again, this Madhumay Foundation is Ayodhya. It's a very, very important place. There, that particular Sansthan is starting this, definitely is going to be, I fully surrendered to Lord Ram, this particular
international conference going to be a successful one. And our director, due to some personal issue, he could not join. So on behalf of my director also, I extend congratulations and gratitude, thanks, everything to all the organizers. And it is again a great opportunity that discuss the issues. Always people with disabilities, in your family, a person with disability comes, there are certain issues. We cannot say no, accept the reality. There will be some issues. And at the same time, people like rehabilitation professional should come forward and give some solace to all the issues. Hope this again, I strongly believe this conference going to give new answers, and it will lead to a lot of research, I would say. Particularly, I would request all the rehab professionals to concentrate on intellectual disabilities more. Okay, I don't discourage those who are working on other disabilities, but intellectual disability should be given more thought. More research is required for that. So communication is always the issue for intellectual disability. So definitely this COVID has taught us. It was a threat to communication. No, we have come out from the communication. This conference is a reality that we sit together. I may be sitting in Chennai, and Samaji is sitting somewhere. Sujata Malini madam sitting somewhere. So we are together, and we can find solution. That's what I would like to say. With this small note, I extend sincere thanks to organizer and my colleague Rajesh Ramachandran, Samaji, and the other people. Okay, and I would look after. I look for more such conference with theme-based conferences in future. For that, NIPMD and our CRE team is ready to support on any level. Okay, so with this, thank you very much for opportunity. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shankar Narayanan. As I can see, Dr. Rajesh Ramchandra also here. Sir, very good morning, Mr. Rajesh. Dr. Rajesh. Very beautifully, he told one thing that several things Mr. Shankar Narayanan told, but one thing which really hit that we are always ready to face the challenges. And if this zeal is in our mind, if this zeal is in our heart, definitely we can do wonders. The challenge which he focused, that communication is one of the major issue in person with disabilities, especially with intellectual disabilities. And during this COVID-19 and post-COVID-19 era, we will definitely overcome this issue because we are ready to face the challenges. Thank you so much, Mr. Shankar Narayanan. Now, as Deputy Registrar Mr. Shankar Narayanan told that due to some reasons, Mr. Nachiket Raut is unable to join this conference. Maybe he will be joining later on in the forthcoming this validity sessions. We'll be waiting for him. Now, very respectfully, as I told you in my welcome speech, we are having a wonderful personality with us, with whom many of available in this forum have worked together. Such a nice personality, such a nice gentleman, such a nice administrator, such a nice educationist. I'm talking about Professor Kapil Dev Mishra, sir. He's such a gem of person. Now he's working as Honorable Vice Chancellor at Rani Durgavati University, Jabalpur. सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है. नो प्रॉब्लम. ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है. अभी जैसे भी होते हैं मैं आपको कांटेक्ट करता हूं सर. No problem. So we'll be waiting for him, that because he's also having the same experience about general education history as well as disability, since he worked from the inception of this Jagatguru Ram Bhadracharya Divyang Vishwavidyalaya in Chitrakoot. So he is having a wonderful experience with him.
and we'll be waiting for him for his speech as chief guest. Now, discussing about several domains, by the time, let me discuss something about the theme which we have mentioned, which we have included in our seminar, including our international conference. There are several things which are related to disabilities. I must say, no doubt that we are having challenges, but every challenges has the means we are having, we can say that every coin has a different side as well. So we are having opportunities as well in the same on the same earth. So this conference is meant to find out the opportunities, to consider the challenges as well, because as very rightly Professor Mishra told, that if we know about the strength and weaknesses of the enemy, we can fight wonderfully. So if we know the challenges, we can work on opportunities also. These challenges will teach us that in what domain we should move forward. In our country, we are having several constraints, not in our country, but in Indonesia, in Jeddah, in several parts of the country, Australia, we are having Saudi Arabia, and entire world is facing some sort of issues with regard to this COVID-19. Every country is having its own strength and weaknesses. So challenges and opportunities may be different from country to country, because some of the countries are of developed background and some of the countries are in developing stage. Some of them are having some in the lack of some resources of any kind, and some of the countries are having enormous and several resources with it. So these challenges and opportunities are to be discussed in consultation with each and every person of the world through their representative. With that kind of note, we can come out with the we can say recommendations that what to be done and what strategy to be followed. No doubt we cannot change this COVID-19 pandemic situation overnightly, but we are having enough resources to work upon. We are having enough knowledge, expertise with us. As I told you earlier, that we are having several eminent personalities in the field of disability and rehabilitation with us. Their expertise, their experience, we can utilize to come up with the recommendation, come up with the findings, come up with the recommendation, means such kind of solutions that what person with disabilities, association working in the disabilities, other stakeholders related to education and rehabilitation of person with disabilities can work together, and we all can come out with proper solution. Several experts were telling about different domains on can say the challenges, several domains about various aspects of disabilities. Sorry for interrupting, sir. कपिल सर का नेटवर्क बहुत ही पुअर है, वो आउट एरिया में है इस समय. बात हुई, वो कई कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने अपना शुभ संदेश भेजा है कि आपके द्वारा उनका शुभ संदेश प्रेषित कर दिया जाए, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो खुद आएंगे. लेकिन कह रहे हैं कि जब तक मेरा टाइम आ रहा है तब तक शर्मा सर से बोल दीजिए हमारा शुभ संदेश सभी तक पहुंचाएं, और जैसे ही कनेक्ट हो पाएगा मैं आऊंगा जरूर एक बार. ओके. All right. So, do you have his message with you, or should I continue? मैं अपना ऐसे ही शुरू रखूं सर का संदेश?
शुभ संदेश यही है सर कि आप अपनी तरफ से कुछ भी कह दें, संदेश दे Okay, दें okay. निमपेट के लिए, मधुमेह एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए, और जब वो आएंगे तो अपना देखेंगे पहले, लेकिन आपको बोला है करने के लिए सर। All right. Thank you so much for this information. Let me continue now. I would like to request Dr. Tiwari also to share his experience, his opinion, his expertise in this regard, that what we can do in the field of disability and rehabilitation, what we should do about what we should do with these challenges to come out with these challenges. Dr. Tiwari is there? Dr. Gyanendra Tiwari ji? Okay, no problem. So, several guests from this morning, they were discussing about, since this is a burning issue, and I don't know, it means it has been started in 2020, somewhere in the month of January 2020, and we don't know that till when it will be continued. So during this situation, we have to find the solution as well. Dr. Tiwari is there? Okay, am I तिवारी audible? सर सुन पा रहे हैं सर? No, it's okay. No issues. So just a second, I'm opening this. So let us come to the point that what we are expecting from the experts and from the participants of this conference. See, the themes are related to several aspects which in line with the theme which is given by United Nations. So, okay, it is our sole responsibility of all of us, all stakeholders, all persons with disabilities, all the professionals who are working in the field of disabilities, that inclusive response is means need of the hour. So inclusive response in the sense we all should unite together and work for the disabilities, with the disabilities. With the disability in the sense we should work along with person with disabilities, so that they should not feel that it's a kind of they should feel that it's a right for us, not as a charity. So with this inclusive response to this COVID-19, we can make wonders for persons with disabilities. As far as impact is concerned, we have seen a very negative impact in the COVID second wave. No doubt in the first wave also some issues were there. Some in third wave also some issues are there. Sharma sir, sorry for interrupting. Sorry sir, interrupting sir. VC sir online है. Okay. और सर का स्वागत है. Okay, sir. I'm now very happy to announce that we were talking about Professor Kapil Dev Mishra sir. He is a gem of a person, a wonderful administrator, a wonderful educationist, a wonderful person, individual himself, having a wonderful experience in the field of disability, because he is the founder member of first university for person with disability in our country, that is Jagadguru Ram Bhadracharya Divyang Vishwavidyalaya, Divyang University in Chitrakoot. And now, since I think last 6 to 7 years, he is Vice Chancellor of Rani Durgavati University in Jabalpur. Without taking much time, I would like to request Professor Kapil Dev Mishra sir to give his blessings for this conference, for this August conference of gathering.
सर यदि आप सुन पा रहे हैं मुझे तो मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा सर। थिंक सर तेरा सर सर आप सुन पा रहे हैं सर? ऑनलाइन तो आ गए हैं सर, दिख रहा जी है। जी सर प्रणाम। आवाज आ रही? जी सर आ गई सर, जी सर प्रणाम आवाज सर। आ गई। जी, मैं जहाँ पर हूँ थोड़ा यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है ये कोई बात नहीं सर, आपकी ब्लेसिंग तो सर हमें मिल जाएगी हो सर। सकता है कि जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आवाज बहुत कम आ रही है सर। और नहीं नहीं, विशेष सही आ रही है, करके एकदम सही आ रही है सर। हमारी जो पूरी टीम है, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर विजय जी, प्रोफेसर अवनीश सर, और जो पूरी टीम इस समय इस सेमिनार को आयोजित कर रही है, मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। शिक्षा जगत के लिए ये एक अभिनव प्रयोग है। जिस विषय का चयन किया है आप लोगों ने, वो विषय अत्यंत प्रासंगिक है और आज उसकी विशेष आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस विषय पर विशेष जोर दिया गया है। आज हमारे चाहे वो वंचित क्षेत्र से हों अथवा धनी परिवारों के बालक बालिकाएं हों, सबको शिक्षा की आवश्यकता है। और समाज में परिवर्तन करने की कोई दिशा निर्धारित करने वाला यदि कहीं भी है, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो एकमात्र वो शिक्षा ही है। और आज वो समय गया कभी कि मस कागज छुए कलम गई नहीं हाथ। आज समय है सबको शिक्षित होना है। और जिस तरह से परिवर्तन की दिशा निर्धारित हो रही है, कोरोना संक्रमण ने जो 21वीं शताब्दी की चुनौतियों में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य हमको देखने को मिला, वो कोरोना संक्रमण का दिखलाई पड़ा। उससे केवल व्यक्ति और परिवार और समाज और राष्ट्र ही नहीं प्रभावित हुआ, वैश्विक क्षितिज पर हम सब लोग प्रभावित हुए। भाई साहब को प्रणाम है, प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र जी को प्रणाम मैं करता हूँ। उससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है और शिक्षा जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग चल रहा है और वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से शिक्षा कैसे प्राथमिक से लेकर के और उच्च शिक्षा शोध तक, अनुसंधान की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए सभी को उसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस विषय का चयन किया गया है उस विषय पर हमारे विशेषज्ञ सभी एक से एक हैं, उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर नीरज जी को और पूरे टीम को, आदरणीय हमारे प्रोफेसर विजय जी, हमारे सम्माननीय प्रोफेसर अवनीश सर, जिनका मार्गदर्शन और जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहता है। और एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में जो भी शिक्षा जगत में अपने लोग कर पा रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद से, ऐसे स्नेह से और ऐसी शुभकामनाओं से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सर हम यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सोवेनियर का विमोचन होना है। आप आदेश दे करके सोवेनियर के विमोचन के लिए थोड़ा सा सर अगर हमें शुभाशीष दें तो हम यहाँ पर प्रेजेंट कर दें। लग रहा है सर का डिस्कनेक्ट हो गया। जी 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 हाँ तो सर डिस्कनेक्ट हो गया है, तो सोवेनियर का विमोचन होना है। तो हमारे अवनीश सर और शंकर नारायण सर भी हैं इस समय। जी 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 तो आप ही दोनों लोगों से हम ये कहेंगे कि अपना एक उद्बोधन 2-2 मिनट का दें और हम अपना यहाँ से प्रेजेंट करें सर। शर्मा सर ये ठीक रहेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े होंगे। प्रोफेसर मिश्रा सर, क्या आप हैं तो हमारे साथ? ओके
आवाज नहीं जा रही है लग रहा है। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे नेटवर्क इश्यूज। सर ने जब तक सर जुड़ते हैं, हम लोग जो आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव सर ने जो बातें हमसे कही, हम उनके बारे में आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, अब मैं कोशिश करता हूं और थोड़ा तेज बोलने की। आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा सर ने, आदरणीय वाइस चांसलर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी हेलो। में, जी सर आइए जुड़ सर, आ गए। गए हैं सर। हम लोग चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से सर, हम लोग जो इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं उसमें हमने एक सोवेनियर तैयार किया है। उस सोवेनियर को हम लोग फॉर्मली यहाँ पर उसका विमोचन करें। उसमें सभी लोगों के संदेश और जिन लोगों ने अपने पेपर्स भेजे उनके एब्स्ट्रैक्ट को सम्मिलित किया गया है सर। नीरज तिवारी जी, यदि मैं सही हूं तो अदरवाइज आपको सेट करना चाहें तो। बिल्कुल सर। हाँ, तो बिल्कुल सर उसका हम सर, विमोचन बस कराना हमें चाहेंगे। नीरज तिवारी जी प्लीज। सर बिल्कुल सर, हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप करें नीरज जी, आप कंटिन्यू करें, कैसे करना है। सर 1 मिनट मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। सर मूल भाव ये है कि इस पे जैसे कि शंकर नारायण साहब ने कहा कि हम लोग अनएक्सपेक्टेडली इस कार्यक्रम की सफलता को देख पा रहे हैं। जिस तरह का शेड्यूल मैंने देखा कि हमारे पास लगभग 10 देशों से पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं और लगभग भारत के हर राज्य से पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स अपने पास सर 2 तरह के हैं। एक वो जो लिसनर हैं जिनको सीआरई स्टेटस या सीआरई मार्क्स की आवश्यकता है, और जो दूसरे हैं वो पेपर प्रेजेंटर और डेलीगेट्स के रूप में हैं, जिन्होंने अपना कुछ रिसर्च पेपर इसमें प्रस्तुत किया है, अपना रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं और अपने द्वारा किए गए शोध जो कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस की थीम या सब थीम से रिलेटेड है, उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। सो ये इस सारी चीजों का समावेश करते हुए एक छोटा प्रोफाइल, छोटा ब्रीफ हमने जो एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका हमने रखा है। तो सर ये आपके सामने एक सोवेनियर का एक फ्रंट पेज आपके सामने है। तो हम चाहेंगे कि यदि आपकी आशीर्वचन हो और हम इसको विमोचन कर पाए। आदरणीय अवनीश मिश्रा सर, जरा इसकी स्क्रीन बड़ी कर देते। हाँ सर, राजेश सर कर रहे हैं उधर से, राजेश रामचंद्रन जी। जी राजेश सर। हाँ, स्क्रीन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का डिजाइन इस सॉफ्टवेयर का तैयार हुआ। मैंने इसके जी राजेश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दें। राजेश जी, इसकी स्क्रीन थोड़ा और बड़ी हो पाएगी? हाँ, परफेक्ट, थैंक यू सर। आदरणीय अवनीश मिश्रा सर ये सोवेनियर का फ्रंट पेज है। शर्मा जी, और सर मिश्रा जी को अनम्यूट करने के लिए बोलिए। हाँ सर, अनम्यूट हाँ, करें कर सर। दिया हूँ, कर दिया ओके हूँ। ओके सर, आप दोनों कलेक्टिवली सर, चेन्नई रामचंद्रन जी, दक्षिण सब एक साथ। वेलकम रामचंद्रन जी। सर एक एक पेज हम आगे बढ़ाते जाएं, जब ये खत्म हो जाएगा तो सर दोनों सर का हम उद्बोधन प्रस्तुत कराना चाहेंगे। एक एक पेज इसका आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ राजेश सर, इसका पेज एक एक पेज आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोगों के संदेश इसमें दिखाई दे रहे हैं सोवेनियर के प्रीवियस पेजेस में, और यह संदेश मधुमेह सोसाइटी की ओर से, इसमें नीरज तिवारी, नीरज शुक्ला जी की तरफ से प्रेषित है। ये हमारी थीम्स
रखी गई हैं, जो कॉन्फ्रेंस की अपनी थीम्स हैं उसको हमने इसमें सम्मिलित किया है। इसके बाद हमारा दोनों दिवसों का शेड्यूल इसमें सम्मिलित किया गया है। दोनों शेड्यूल हमारे, और शेड्यूल के आगे हमारे पास ब्रीफ प्रोफाइल, जो हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन लोगों के ब्रीफ प्रोफाइल हमने यहाँ सम्मिलित किए हैं। और इसके आगे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अब पेपर, जो लोगों के एब्स्ट्रैक्ट आए हुए हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट अब आप लोगों के सामने है। तो इस प्रकार से काफी है सर, राजेश रामचंद्रन सर। तो हमने ये कोशिश की कि हम लोग उन चीजों को सम्मिलित कर पाते जिन चीजों को हमने इस कॉन्फ्रेंस में लाने की कोशिश की। उसका पर्पस ये था कि हम लोग सब लोगों को जोड़ें, और सब लोगों को जोड़ने के साथ में उन चीजों का कलेक्टिव एफर्ट्स इस्तेमाल करते हुए, कलेक्टिव एफर्ट्स करते हुए हम एक ऐसे निर्णय पे पहुंचे, ऐसे आउटकम को हम लेकर के आए, जिससे हम लोग ये कह सके हम दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनकी एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और वो भी इस ऐसी चैलेंजेस वाली स्थिति में, जहां पर हम लोग कहते हैं कि कोविड की स्थिति काफी खराब हो, कोविड ने काफी सोसाइटी को बदल दिया। सर ने भी कहा कि आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा सर ने कहा कि हमारे पास 21वीं सदी में जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभरी है, वो है कोरोना महामारी। नाउ कोरोना आउटब्रेक ने जो कर दिया, उसके बाद भी सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, जो आदरणीय कपिल सर ने कही, आदरणीय वाइस चांसलर सर ने कही कि इस अभी भी दिशा की आवश्यकता, और दिशा देने का काम शिक्षक कर सकता है। और आज की डेट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी की तरफ हम देखते हैं, तो अभिनव प्रयोग करने के लिए, इनोवेटिव रिसर्चेस करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अभी देखिए, आप सर ने बताया कि हम लोग सब इधर उधर हैं, अलग अलग शहरों में, और वहां से बैठ करके हम एक कलेक्टिव रूप में इस काम को कर पा रहे हैं। So my concern about this souvenir is we have included several things related to this conference, related to this international conference. Mr. Shankar Narayanan sir, since अभी आपके सामने ये सब चीजें आई, इस souvenir के बारे में सर आपके दो words, दो शब्द हम चाहेंगे। प्रोफेसर मिश्रा सर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन मेरे पास आया था। Yes sir. Actually, it is a pleasure that whatever we do, we have to document. That is very important. See, when other medicines, the allopathy is successful because they have well documented. Similarly, other Ayurveda, other medicines are not that famous because it's not documented. Whenever this kind of conference, international conference for very important conference for people with disability or rehabilitation field, it should be documented well, and it's going to be a permanent record. So that will be helpful for future students, those who are pursuing, and they will have an idea. Based on the idea, they can improve their idea. See, that is why we have to encourage the young blood in our field, and that will be very good. And this kind of souvenir and documentation will be helpful for them to go further. So I'm very, very happy that such a document is created, and I personally congratulate Madhume as well as Rajesh Ramachandran and other people, those who have involved in this compilation. It's a great job, and it should continue in future also. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shankar Narayan sir. Now, since we have come to an end of this inaugural session, is Dr. Neeraj Shukla is with us? I think he's having some issues at his family. Is Dr. Neeraj Shukla is with us? Would like to request him for vote of thanks if he is available. No problem. If he's not, I think I know some issues with the Dr. Neeraj Shukla. May I request? मैं आ गया हूँ। अच्छा सर, प्रणाम सर आपसे भी सर दो शब्द सर हम सोवेनियर को लेकर के सुनना चाहेंगे सर। वी हैव डिजाइन दिस सोवेनियर। आदरणीय मिश्रा सर। अच्छा, थैंक यू so much for inviting my remarks. It's very good effort to have such a souvenir
reflecting the international हेलो, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर। अच्छा अच्छा, तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो रामचंद्रन जी के साथ मुझे ये मौका मिला, और चेन्नई जो है वो हम लोगों का एक दूसरा घर है, और खासकर निपमेट इज आवर अनदर होम। तो ये जैसा मैंने स्क्रीन पर देखा, थोड़ा आज यहाँ बड़ी डिस्टरबेंस है नेट की, ये सब बैरियर्स हैं, लेकिन इस बैरियर्स को पार करके इतना सक्सेसफुल आपने ये कार्यक्रम किया है। और सबसे बड़ी चीज ये जो सोवेनियर आया है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं डिसेबिलिटी फील्ड के, उनके बातों को इसमें समाहित किया गया है। और जो यूएनओ का जो कॉन्सेप्ट है कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ये एजुकेशन में भी है, डिसेबिलिटी को लेकर है, और तमाम ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको लेकर है। एक बार यूएनओ का एक कार्यक्रम हो रहा था, मुझे उनके 2-3 कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, और उसमें एक डिसेबिलिटी का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको लेकर आपने जो सोवेनियर निकाला, इसके लिए मधुमेह जो फाउंडेशन है और जो निपमेड है, जो डिसेबिलिटी में बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिनका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और उनके डायरेक्टर जो एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन से डिसेबिलिटी को जोड़ के, और क्या अवेयरनेस थी एंशियंट इंडिया में डिसेबिलिटी को लेकर, हम खासकर कौटिल्य में देखते हैं वो अवेयरनेस है। जब वो डिसेबिलिटी के साथ कोई दया की बात नहीं करता, उनके साथ एक साथ रहकर आगे बढ़ने की बात करता है, और कैसे सोसाइटी को वो अवेयर करता है कि उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को कैसे ध्यान में रखना है, और एक सेंसिटिव सोसाइटी, एक संवेदनशील समाज कैसे बनेगा, इसका कौटिल्य बात करता है। तो आपने इन सारी चीजों को अपने सोवेनियर में जो लिया है, और दुनिया के बहुत सारे लोग जो आज शामिल हो रहे हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और उन सब के बीच इस सोवेनियर को आपने जो प्रेजेंट किया, इसका विमोचन कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमको एक दिशा देने वाला सोवेनियर होगा, जो हमें बहुत सारे बातों को और आगे ले जाने में मदद करेगा, और जो एक क्यूरियोसिटी है इस फील्ड में कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना करें, इसमें हमारी ये बहुत मदद करेगा। और फिर इसके डिटेल्ड जो पेपर हैं, जो देखना चाहेंगे, आप इसको ऑनलाइन तो मुहैया कराते हैं, वो हमारे ज्ञान के क्षितिज को और आगे बढ़ाएगा। और हमारा जो एक इंटरवेंशन होना चाहिए डिसेबिलिटी के डिफरेंट फील्ड में, और खासकर जिसकी रामचंद्रन जी ने बात की कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर काम करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि ये सोवेनियर इस दिशा में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला है। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग सर. Since we have come to an end of this inaugural session, I'd like to request from NIPMET side Dr. Rajesh Ramchandran. Dr. Rajesh Ramchandran is with us now. Is he available here? I think he got his telephone. Okay, he's here. Sir, it's a very short notice. Would like to kindly request you to give a vote of thanks, sir. Dr. Rajesh Ramchandran, please, sir. Sir, thank you, sir. Abhi, still I am yet to be awarded, sir. Waiting for my evaluation. Sujata madam is already there. First of all, it's really a great privilege and honor for NIPMET to have been collaborating with Madhumay Educational Society in conducting this international conference on challenges and opportunities of education and rehabilitation of persons with various disabilities in the post-COVID-19 era. Would like to personally thank on behalf of the entire organizing committee and the team
Dr. Vijay Shankar Sharma sir, the chairman of the conference, and also professor in the Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, Lucknow, India. We are very grateful to you, sir, for conducting this inaugural session. Would also like to put on record our sincere gratitude to Dr. G.N. Tiwari, Chairman Conference University, Amity University, Noida, for his contribution in giving us directions to conduct this two-day international conference. Though Professor Sri Ram Mittal sir, Delhi University couldn't join with us, but his blessings are always there. So I'd like to extend our sincere thanks to him. I'd like to sincerely thank Professor Avnish Chandra Mishra sir from Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, Lucknow. His information on disability and taking disability to the roots of the history and culture is really remarkable. And we have been associated with Mishra sir from the very beginning, and we have done a lot of programs with him with regard to the disability sector and history and culture. I'd like to extend my sincere thanks to sir. Also would like to extend my sincere thanks to Padma Shri August Indra Udyana, founder of Gandhiriya Ashram, Bali, Indonesia, for joining us in this two-day international webinar conference. I'd like to extend sincere thanks to Dr. Nasir Ali, Professor, University of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. I would also like to extend my sincere thanks to my supervisor, my guide, and also Professor and Dean, Faculty of Education, Dr. J. Sujata Malini Madam from Algappa University. Also like to extend my sincere thanks and to the person who is always supportive to us in conducting the CRE programs, very rightly said by our Deputy Registrar Administration. Would like to extend my sincere thanks to Sri Sankar Narayan sir, always been the motivator behind us in conducting most of the CRE programs that we are hosting since 2012. I would also like to extend my sincere thanks to our director, Sri Nachiketa Raut sir, who due to his personal issues could not join the inaugural session. I would like to extend my sincere thanks to Professor Kapil Dev Mishra sir, the Honorable Vice Chancellor of Rani Durgavati University, Jabalpur, who in spite of his busy schedule or in spite of his technical issues did join the session and gave his blessings to us. Last but not the least, I would like to thank Dr. Neeraj Kumar Shukla, the convener of the conference, and also Dr. Neeraj Tiwari for taking this pain in organizing this two-day national conference. Also, I would like to thank the entire participants who have joined. Thank you, one and all. Jai Hind. Thanks to Dr. Rajesh Ramchandran also for giving this vote of thanks. Now I'd like to request all the delegates to rejoin or means to join the concurrent sessions. And I would like to request Dr. Neeraj Tiwari to discuss about the forthcoming sessions. I think we have, the schedule is not in front of me. So if you have a schedule with you, please continue with the schedule. कृपया शुरू करें नीरज तिवारी सर. जी सर. हाँ, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ऐड हो जाए सर. ओके सर. ओके सर. So thank you so much for our participants for coming and all my honorable guests. सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. many थैंक्स. अभी हमारा पेपर प्रेजेंटेशन का टेक्निकल सेशन शुरू होने वाला है, तो इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं. और टेक्निकल सेशन फर्स्ट के लिए मैं जफरुल अलाम सर एंड को चेयरपर्सन स्पीकर जफरुल अलाम सर एंड को चेयरपर्सन मोहम्मद असाक मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजौरी एंड डॉक्टर जफरुल अलाम प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन. मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप लोगों का वेलकम करता हूं. एंड टेक्निकल सेशन आगे बढ़ाते हुए सर आप लोगों को आमंत्रित करते हुए आप लोगों का मैं 2 मिनट का उद्बोधन प्रस्तुत करने का मैं आग्रह करता हूं. हम जफरुल अलाम सर प्लीज.
Jafrul Alam, sir. 1 minute. Are you able to see my screen? Yes, sir. Are you able to see a screen? Okay. Yes, sir. दिखाई दे रहा है. First of all, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this wonderful idea, that is challenges and opportunity of education and rehabilitation of persons with various disabilities in post-COVID era. And really, I'm very much thankful for these opportunities. And I got this opportunity because of Dr. Tiwari and Dr. Harish Kumar, with whom I work in India Institute of Technology. That's all about me. I don't want to go more about myself, but I want to discuss some issues related to this challenges and opportunities in the era of COVID related to this disabled employees. And actually, I was thinking that I will get more time to speak on these issues, but you said that within 2 or 3 minutes you need to just summarize your ideas related to this provoking and intellectual point of view. So there will be some point which I am going to say you that with the help of this, we need to empower this disabled employees during this COVID-19. This is my topic which I have to share with you. So what is the thing we need to understand, that every organization has a certain disabled employees, and we have to think about on the, as you know that in the psychology we have individual differences. You will not able to find each and every implies as a equal. So disabled implies having a vulnerable to the situation. So focus not on the differences of the people with disabilities, but the talent of the individual we need to consider. So this has been given by a quotation Neil Milliken. So by keeping this focus, I will just going to discuss some issues related to the disabled. We already know what do you mean by the disabled. I don't want to take your more time, but the idea I'm going to share, this is very important, that you know that there are various psychologists, and all the psychologists has given different opinion related to the person. And I have taken here that 4 or 5 thinkers, great thinkers, and their idea how we can take these ideas to empower the implies which we are with whom we are working. So the first one is Freud, that is psychoanalytical theory, and then Vygotsky social development theory, Maslow hierarchy of need theory, Bandura social learning theory, Erikson social theory of development. So let's see this one here. And this Freud pointed out that make the workplace environment as inviting and comfortable as possible for the disabled person. So with the help of the Freud, the theory of Freud, the conclusion is here that you need to empower your employees, make them comfortable. They should not feel that they are having some abnormalities or some challenges. You need to make them comfortable to work with you. Similar way, this Vygotsky point out that the social interaction is very much important, and this is going to play a key role in the development of the people. So another point we need to take into consider to empower the disabled employees.
And this Maslow hierarchy of needs, all of you know that this needs theory is giving that you need to first satisfy first, then you can go up and up and up. So their physiological needs is very much important for our disabled employees, which they must be satisfied. Then we can go, they can reach to second level, third, fourth, and fifth. That is the self-actualization level. And Bandura social learning theory is the importance of observational learning, imitation, and modeling. Because this is the socialization process, and everybody is learning from each other, imitating each other. So there is a need to make yourself as a role model, so that other person will give more due weightage to the people who are working with these kinds of the people. And the last one is Erikson, that is psychosocial theory of development. Social expectations in each stage are the same across all the cultures. So he has given a point of view that cultural play an important role. So we have a personality development, various stages, and each stages we need to take into consider the cultural values. And based on that, the individuals are going to react. The individuals are going to shape their own environment when they are going or providing opportunity to interact with these kinds of the people. And this is the last slide. I'm going to show you that here how we are going to empower the employees. That there is, if you see that here, disabled employees and leadership relationship. While you are working in any organization, the leader role is very much important. The leader must consider them as a human being. The leader must consider them as a person who contributing towards your organizational achievement of the goal. The next point is a peer relationship. By where we are working, we should treat each implies the peer should think that he is my friend, he is my colleague, and he has to give more attention toward these kinds of the people. Then another point is home environment. The home environment is also important because the socialization process started, all of you know that, from the home. So home environment is also important, and this is going to empower the employees, that is disabled employees, and the kind of the responsibility. As we know that the disabled person have what kinds of the disability they have. So you should give the responsibility, you should assign the task which is required or which they can perform very, very effectively without having any hassle. So this is very much important. Another point is a work environment, the culture of the work, because we know that when you are entering in the work environment, you are coming from a different environment. You need to get acquainted with these environment. So environment should be conducive, the environment should be more attractive, and the personal involvement. The personal involvement is here. This is related to the individual disabled employees. These disabled employees must involve themselves to empower himself, because all of you know that empowerment is not an injection that you give injection, it will work automatically. Empowerment means that you should involve yourself also to get energy, to get some kinds of the power to perform your task more effectively, whatever the circumstances, whatever the challenges and opportunities you have, you need to utilize this one to work more effectively. And many speakers already pointed out this one. So these are the certain points which we need to take into consider for, and this will be my last slides, how we are going to empower, what are the foods of thoughts for to empower the disabled employees. So design work that allow disabled employees to perform well. Then provide the required aids to perform the task. There are various aids are required to perform the task.
So this is the responsibility of the management or the leader must provide certain aids which is required to perform the task by the disabled employees more effectively. Then intrinsic reward must be given when they achieve the goal. Whenever they achieve the goal, some reward must be given. This reward can be financial reward. Sometimes you can use non-financial reward also to empower these kinds of the employees. Then establishing suitable work environment that fosters sense of belongings. I pointed out the great thinker ideas, and in that we have to put a suitable work environment, and this work environment must provide opportunity to. They must feel that they are working in home, or they are working in a very congenial work environment, and treat them full dignity and respect. This is very much important, that you need to treat the disabled employees with full dignity and respect. They should not feel that they are having some deformities or some kinds of the things which is away from the norm. So our work is to treat them with full dignity and respect, and provide discriminate-free work environment. Whenever you are going to give any kinds of the feedback, any kinds of the opportunity to work, you should not discriminate in terms of gender, in terms of we can say marital status, in terms of personality, or any other discrimination should be keep away from such kinds of the work environment, and engage and provide challenging environment. This is the last one, that you need to provide a challenging work environment so that they will think that they are not considered as a disabled employees. So actually I am thank you very much for giving opportunities for such लेकिन सर आप हमारे साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत नाइस रहा सर। अभी आपको सर हमारे साथ बने रहना है। अभी अशाक सर आपको हम आमंत्रित करते हैं, प्लीज कम एंड से समथिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस विद इन 2 minutes or 1 minute, sir. Okay, first of all, my sincere thanks to the organizer, especially Nilesh sir, for giving me an opportunity to be a part of this very, very important conference. And in fact, this is the conference which is taking us to the human rights of the people who are slightly differently able. And if we see we can say data around 1 billion people across the globe, they are facing some sort of a disability, and that makes up 50% of the world population. And across India, we have some 2.68 crore people as percent of 2011, and then modified at 2016. Then this is the scenario, and now of course in this pandemic, everybody is pushed back. We have 1.5 billion students who are out of the school in the pandemic, especially the people who are differently able. They are in more trouble than their other counterparts. So, and of course the UN SDGs, they speak about the we can say especially about the people with the different we can say abilities. The WHO is there, and national education policy in India that has a special place for the differently able people if it is implemented in the letter and the separate. In fact, where all the buildings, all the schools, all the colleges, the universities, they are provided with the facilities of the wheelchair and other we can say facilities. And naturally, we are going to help the differently able people. So, in fact, and what are the opportunities? In fact, that we have to face the challenges. We have to convert the challenges into opportunities. So, in fact, this is the great occasion that we think about this great concern and come up with the ideas how we can help the fellow human beings who are differently able. So, thank you so much. Now,
थैंक यू I सर, think थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी आप जयफरुल सर एंड अशाक सर, आप दोनों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि अभी आप 1 घंटे आप हमारे साथ रहेंगे और जिन लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन है उनको आप इवेल्यूट करिएगा सर। थोड़ा सा आप हमें उनको अगर कुछ उसमें से मॉडिफाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है तो आप उनके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ 1 घंटे रहें सर, हमारा ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा कि आपके साथ इतना समय बिताने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। नाउ वी आर इनवाइटिंग टू राम्या यू फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेपर। प्लीज राम्या, आर यू देयर? Hello, participate. Remaya, Yes, sir. Remaya, Ramya, I'm what's here. your name? Yes, Remya, yes. Remya. Remaya, please come and Yes, sir. present your Yes, sir. paper. Yes. Sir, please give me a second. Sorry for the inconvenience caused. Okay. On your mobile or system audio and your system where you presenting your PPT is off the or mute your audio. Yes, sir. I'm trying, sir. Just a minute. Yeah. Now, can you see the screen, sir? Yes, sir. Please. Go ahead. आगे बढ़ें. So this is my topic. I'm Remya Yu. I'm an assistant lecturer in Chopan Suvidya College of Special Education. It is in Mumbai. रेमाया, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपका यहाँ से प्रेजेंट कर देंगे। आप नेक्स्ट बोलते रहना, होता रहेगा। अदरवाइज आप रीडिंग कर लो। प्लीज रीड योर पेपर। Dr. Tiwari, just I would suggest you that ask her to present without uploading the PowerPoint. Maybe she's facing a difficulty in uploading, so she can just go ahead with the context only. We will listen. Okay, sir. Remaya, I'm audible? Remaya?
It's okay. She is trying. Remaya, maybe you are unable to present your PPT, and just leave it. You can read your paper मेन simply. पॉइंट्स बताइए सर. Your audio is mute, Remaya. It's Ramya okay. Menon, please unmute yourself, then you will be able to speak. It's okay, कोई बात नहीं है. हम नेक्स्ट को बुला लेते हैं सर. प्रोफेसर साधना जैन. प्रोफेसर साधना जैन. Hello, sir. Yes, sir, I am ready. यस मैम, आप प्रेजेंट करिए. Yes, sir. आप A very प्रेजेंट good कर तो afternoon करिए, नहीं तो मैडम आप the उसको पेपर रीड कर लें. ओके, प्लीज गो अहेड जी मैम. सर. आप प्रेजेंट कर पा रही तो करें मैडम, नहीं तो वैसे भी रीड करके आप अपना Yes, sir. I am presenting without PPT. ओके ओके, बिल्कुल गो अहेड. आगे ठीक बढ़िए. है. Thank you, sir. A very good afternoon to one and all. At the outset, I would like to thank Madhume Education Society for organizing a wonderful conference on the wonderful theme, which is the need of the hour also, and for organizing a very, very insightful inauguration for the program. I am also very grateful to the Madhume Education Society for giving me an opportunity to present my work. The topic of my presentation is challenges and opportunities for learners with disabilities during COVID-19. जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है 30th जनवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था. एंड ग्रेजुअली ये वायरस जो है बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड होता गया. एंड देन इंडियन गवर्नमेंट ने 25 मार्च को फर्स्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर लिया इन द फॉर्म ऑफ कंट्री वाइड लॉकडाउन. एंड जब ये कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा तो उस समय जो रिस्ट्रिक्शंस एंड SOPs आए उनमें कहीं ना कहीं दे वर वेरी वेरी डेफिशिएंट इन taking into account the needs and rights of the people with disability. And though they are in many ways people with disabilities are more prone to catch infections, but और उनकी लाइफ भी काफी डिसरप्ट हो गई थी. ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन हुआ तो उनका रूटीन डिस्टर्ब हो गए और फैमिलीज में भी काफी डिस्टर्बेंस आई. तो ये जो पेपर मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस पेपर इज एन आउटकम ऑफ द वेरियस रिसर्च स्टडीज which we have done at our institutional level, and also the insight which I got through the by attending various faculty development programs on children with special needs, and participating in RCI related CREs, and also through the very very insightful deliberations of CVC Lucknow. तो सबसे ज्यादा जो हमने अपनी रिसर्च स्टडीज में पाया कि जो people with disabilities हैं, they were very badly affected by the corona virus infection and consequent restrictive measures. But उसके साथ साथ ही उनके पेरेंट्स की जो एबिलिटी थी टू टेक केयर ऑफ देम, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई. और इसके कारण बहुत एक जो स्टेबलाइजिंग एनवायरनमेंट उनके घर में था, सपोर्ट सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा पैरालाइज्ड हो गया. पहले क्या होता था कि पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, जहां पे वर्किंग पेरेंट्स हैं वो एक लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड पैरेलली जो उनके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी नीड्स जो है वो स्कूल्स के थ्रू एंड दूसरे रिहेबिलिटेटिव प्रोफेशनल्स के साथ वो फुलफिल हो रही थी, बट वो फुलफिल नहीं हो पाई. एंड देन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का भी सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन with special needs and as well as to cater to their work related needs. तो challenges, एक तो ये बहुत ही important challenge सामने आया. इसके साथ जो PWDs थे उन्हें बहुत difficulty हुई hand hygiene maintain करने में, if suppose they are orthopedically handicapped हैं, या face mask use करने में if they are hearing impaired, और physical distance maintain करने में if they are living with visual impairments. इसके साथ साथ ही orthopedically handicapped हैं, cerebral palsy people हैं जो regular physiotherapy की जिनको
जरूरत होती है वो फिजियोथेरेपी भी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी लॉकडाउन के कारण. एंड इट वाज रियली सर, जस्ट अ मिनट. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. या और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वो फिजियोथेरेपिस्ट को घर में बुलाना भी मुश्किल था बिकॉज देयर वाज अ फियर ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन. एंड देन दे वर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट फॉर द होम विजिट. तो ये एक बहुत चैलेंज था एंड पेड अटेंडेंट भी उनको नहीं मिल पा रहे थे. दूसरी बात, जैसे क्लोजर ऑफ स्कूल हुआ तो कनेक्शन उनका रह गया और उनके शेड्यूल में चेंजेस आया. और फिर जब धीरे धीरे हमने हैबिचुअलाइज किया, वर्चुअल क्लासेस हुई और उनको इस तरह के प्रोग्राम्स एंड थेरेपीज पेरेंट्स को करने के लिए बताया गया थ्रू द यूट्यूब चैनल्स एंड थ्रू स्मॉल वीडियोस, तो भी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे उनको वर्चुअल सेशंस के साथ हैबिचुएट होने में बहुत प्रॉब्लम हुई. इसके साथ साथ क्योंकि पेरेंट्स जब अब डबल प्रेशर उनके ऊपर था कि उनको अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी टेक केयर करना है एंड एट द सेम टाइम अपनी वर्क रिलेटेड नीड्स को भी फुलफिल करना है, तो उससे क्या हुआ, पेरेंट्स में एक हाइटेंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस डेवलप हो गया. और इसके साथ साथ वो डील कर रहे थे एक सोशल स्टिग्मा ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. तो इन सब के साथ डील करने में उन्हें इशू हुआ. और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनके कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम थे. फॉर एग्जाम्पल दोज चिल्ड्रन हु वर लिविंग विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज. तो it was a great challenge, it was a huge challenge for the parents having children with disability. इसके साथ साथ और क्योंकि ये करना था तो इनका नेग्लिजेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज भी हुआ. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी फेयर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पे कट हो जाए और या फिर दे में बी fired from the job. अब जब there were people who were infected during the second wave of the infection, there were people who were quarantined और क्वारंटाइन होने के कारण भी कुछ इश्यूज उनमें आए जैसे irritability, anger, confusion, frustration, ये उनमें डेवलप हुआ. Then there was a stigma also during the first wave. There was a stigma against those who were found positive. लोगों ने उनको बुलिंग करना शुरू कर दिया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और जिसके कारण से भी. और इनफैक्ट जब एडमिशन की बात आई हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, तो भी उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा. मेडिकल रिसोर्सेज का एलोकेशन और किस तरह की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं एंड दे वर रियली डिस्क्रिमिनेटेड फॉर दैट टू. और क्योंकि सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन बहुत उनके साथ हो रहा था, सोशल आइसोलेशन था, तो उस कारण से भी उनके अंदर डिप्रेशन एंड एंजाइटीज ये जो डेवलप हुए. साथ साथ बहुत से ऐसा भी हमारी स्टडीज में आया कि दे फेस्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट even at home because there was increased domestic violence and abuse and it may be because parent overcrowding थी, घर में सभी लोग रह रहे थे, financial insecurity भी थी जिसके कारण से भी मतलब it was dual in the sense कि parents का भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे एंड चिल्ड्रन भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे. और इसके कारण से ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे और जिसके कारण से स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हमारे रिसर्च स्टडीज में आए. और ये दोनों साइड में पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स में भी एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में भी डिसेबिलिटी फैक्टर्स थे. इसी के साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज वो एक्सेस कर रहे थे उसमें भी उनको कुछ इश्यूज आए जैसे कि उनको पेड सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी या जो एड्स वो यूज करते हैं अगर उसकी सर्विसिंग उन्हें करानी है तो बिकॉज लॉकडाउन था प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो जिसके कारण से भी और उनको बहुत इश्यूज आए एंड ग्रेजुअली दीज इश्यूज वर resolved to a great extent with the help of NGOs and other people involved in it. तो जब वर्चुअल क्लासेस की बात हुई और इंक्लूजन की बात हुई तो एक बात तो ये भी सामने आई है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस समय लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे या कंप्यूटर्स नहीं थे, एक्सेस टू इंटरनेट नहीं था. जनरली देयर वर पीपल. अभी नेक्स्ट का है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैडम अभी नेक्स्ट का है, टाइम अप हो गया है. तो बहुत अच्छा सेशन रहा मैम. बाकी आपके बुक में जो पेपर आएगा वो हम उसमें आपका सारे ये जो आपके मत हैं, जो आपके विचार हैं वो कंसीडर किए जाएंगे. आप फुल पेपर में दें. बहुत अच्छा सेशन आपने किया मैडम, 10 मिनट का रहा आपका. वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी नॉलेजेबल. थैंक यू सो मच साधना मैडम. नेक्स्ट मैं अभी इनवाइट थैंक यू सो मच सर.
Sir, can I? I'm Remya. Can I present? Remya, I will tell you about your time. Now we are looking for next paper. I will call you for your presentation. ठीक है? Okay. Thank you, sir. Thank you. Now Ambika Vishwakarma and Dr. Nishi Tyagi. Yes, sir, I am Yes, ready. ready. Please go ahead. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ensure, sir, my screen is visible. Excuse me, sir. Yes, visible. Please start. Okay. Good afternoon, you all. Today, I am going to present my topic, a development of self-regulated strategy on learning outcomes of special needs learners. I am research scholar from Sharda University, and objective of my study is it focuses on the development of self-regulation learning strategy, including metacognition, motivation, academic learning, and performance. In addition, this study aims to draw a link between self-regulated development strategy and students with learning disabilities. Need of the study. The theoretical focus of this research will be the study of academic self-regulation by connection the thought cycle of self-regulation and self-reflection. Self-reflection will encourage students to determine how their goals have been achieved, to remind them of the responses to be taken to enhance current achievement, and to enable them to change future learning goals. Self-reflection, which has great educational potential, may potentially increase the impact of setting target more significantly than setting target alone, especially considering the self-reflection will encourage learner to attach goal with their performance and will indicate great educational potential. This research will incorporate self-reflection with goal setting to enable students to learn. Self-regulation researchers have been criticized for analyzing self-regulation mechanism in turn rather than as a whole. Some introduction parts of my topic. Self-regulated learning. Self-regulated learning is another term for this proactive approach, which include learning by student effort and techniques. Self-regulated learner. Who are self-regulated learner implement and conduct their endeavor to gain information and ability rather than relying on teachers or parents for assistance. According to Zimmerman, they plan, create objective track and assess their learning metacognitively. Learning disorder. What is learning disorder? According to Right Person in 2014, as introduced in Indian Rajya Sabha, define a specific learning disorder as a heterogeneous set of conditions in which language processing is defective, whether spoken or written, and which may present itself as a complexity in understanding, speaking, reading, writing, spelling, or numerical computation, including conditions such as depth of understanding, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, and dyspraxia and aphasia. Types of learning disability: dyslexia, difficulty in reading and language-based disability, dysgraphia, handwriting and motor abilities difficulties, and dyscalculia, numbers problems, and math absorption problem. Non-verbal learning disability like facial expression and body movement and other type of disability. ADHD, in the sense in this disability, lackness of attention,
specific reading comprehension difficulty in speaking, reading, writing, and so on. Dyspraxia, difficulty with mobility, coordination, language, and speech, and executive functioning. It is conditioning that affect planning, organization, strategy, meticulation, attention, time, and space management, known as executive functioning. Next, self-regulated strategy development. Self-regulated strategy development is an academic practices developed by Karen Harris and Stephen Graham in early 1918 for teaching writing and other related skills to young students with learning difficulties. The practices have evolved over time and can now be used with students in grade 2 to 12 across multiple content area and in individual small group or whole classroom setting. Although SRSD can be used with all students, especially appropriate for students with learning disability, the focal population. Stages of self-regulated strategy development. There are 6 stages. First, gain background information. The instructor identified skill gap and assist pupil in developing the necessary skill to understand, learn, and apply the techniques. Go through the plan. The instructor and student review the student performance in order to find area for development and to encourage the student to apply. Create a strategy model. The teacher used a think aloud method and positive self statement to model the strategy as many times as necessary. Recall the plan, and mnemonic devices are used by students to memorize the procedure necessary to implement the method. Pupil can paraphrase the steps, and teacher can utilize prompt to help students who are having difficulties. Adhere to a strategy, student increasingly take on more responsibility for putting the plan into practices. The teacher give individualized assistance to the learner as well as regular critical comment and positive reinforcement. Teacher can also include other students by forming peer group to encourage strategy use outside of SRSG classes. Self-content performance. A student consistently and successfully employ a method in a variety of constant and activity. A student can learn now how to use the method to improve their performance and how to tweak it as needed. Throughout the education process, the instructor gradually delegates responsibility for executing the technique to a student until they are able to complete the task independently. Application of SRSD. SRSD is an academic approach that entails teacher providing explicit instruction to students in order to offer them real strategy for improving their writing and other academic skills. Depending on the material area as well as the student is and needs, several strategies are used. Teacher may expose particular pupil to a specific approach for planning and then storming tell ideas. Mnemonic devices are frequently given to students by teachers to ensure that they are remembered to incorporate all needed stages or aspects when executing a plan. Teacher teach students how to utilize self-regulation to monitor and assess their use of method and then model this behavior. The next check to see is if people have learned the approach and are able to implement it appropriately on their own. Lesson are scheduled as the list 3 times each week and between 20 to 60 minutes. Next conclusion. Self-regulated strategy is sensitive to learners who struggle with learning because it tackles their many cognitive, behavioral, and emotional issues. The self-regulated strategy and competency development are long-term initiatives that can provide good outcomes through specific teaching and the application of method in the classroom. The SRSD approach can aid students with learning difficulties and other struggling learners. Thanking you. Thank you so much, Ambika. Thank you, sir.
The next is for Durga Prasad Yadav. Sir. Durga? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please start your session. Thank you, sir. Hello, good afternoon, everyone. I am Durga Prasad Yadav, research scholar, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. Sir. Yes, start करिए. आप Yes, जिस sir. भाषा में बोलना चाहते हैं उस भाषा में करें. ओके सर. हाँ, जिसमें आप सुटेबल समझ रहे हैं. सर स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना स्टार्ट करिए. ओके सर. सर मेरा टॉपिक है उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों पर कोविड-19 के प्रभावों का एक समाजशास्त्री विश्लेषण. प्रस्तुत शोध पत्र का संबंध उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का एक समाजशास्त्री अध्ययन है. दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या कुल वैश्विक आबादी का 1 बिलियन 15% है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार देश भर में कुल आबादी का 2.68 करोड़ या 2.21% लोगों में अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता है. हालांकि कई राज्यों की तरफ से जारी प्रमाण पत्रों में संख्या कहीं ज्यादा है. वही यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2016-17 के आंकड़े के अनुसार उच्च शिक्षा में दिव्यांग छात्रों के नामांकन में गिरावट 1.1 से 2.025 तक हो गया है. इस स्थिति में कोविड-19 के कारण उनके नामांकन में अत्यधिक गिरावट देखने को मिल रहा है. शिक्षा का महत्व तब बढ़ जाता है जब किसी समाज, समुदाय या व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक विकास करना हो. उस स्थिति में दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिव्यांग छात्र समाज के सबसे उपवर्जित वंचित समूह से होते हैं. निःशक्तजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है. शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है. इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर उनके लिए नीतियां लाती रही है. जैसे भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, जिसमें विकलांग लोगों को समान अधिकार, उनके अधिकारों का संरक्षण और उनकी पूर्ण सहभागिता लगा है, जिससे निःशक्तजनों को विकलांग शब्द से संबोधित किया गया. लेकिन समाज के बदलते परिदृश्य को देखते हुए वर्तमान भारत सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग की जगह पर और विकलांग की जगह पर डिफरेंटली एबल्ड शब्द दिव्यांग के उपयोग पर जोर दिया. इस शोध में कोविड-19 संक्रमण महामारी के दौरान दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में है. इस अध्ययन पद्धति प्रस्तुत शोध को ध्यान में रखते हुए वर्णात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है. यह शोध पत्र मिश्रित पद्धतियों गुणात्मक और वर्णात्मक दोनों पर आधारित है. शोध पत्र से संबंधित तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीय स्रोत का प्रयोग किया गया है. प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए उत्तर भारत के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों से प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े संकलन किया गया है, जबकि द्वितीय आंकड़ों के लिए समाचार पत्र, सरकारी नीतियां, इंटरनेट स्रोत का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए निदर्शन की संख्या 50 रखी गई है एवं प्रत्येक स्तर पर उद्देश्यपरक निदर्शन का प्रयोग किया गया है. विकलांगता की समझ. विकलांगता मूल रूप से सामाजिक घटना है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक विकलांगता की परिभाषा तथा उससे जुड़ी समस्याओं के लिए आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में विकलांगता में सामान्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को न कर सकने की बाध्यता या कमी को कहा जाता है. एक कमी या बाध्यता उन कार्यों की होती है. थैंक यू सो मच दुर्गा जी, आपका पेपर बढ़िया है, बहुत अच्छा है. आप अपना पेपर पूरा हमें सेंड करें. लिख करके बाकी आपका मैटर बुक में पब्लिश किया जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर दुर्गा प्रसाद.
सर मैंने And पेपर सेंड कर दिया आपको. okay. Thank you so much. And next, Sultan Khan Mazumdar. Sultan Khan Mazumdar, are you there? Sultan Khan Mazumdar, are you there for the presentation? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, सुन पा रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी कोई यहाँ पे एंट्री नहीं दिख रही है शायद. सुल्तान खान मजामदार का. द नेक्स्ट पेपर इज राजेश रामचंद्रन सर. ही इज नाउ बिजी फॉर समथिंग वर्क. तो मैं इस समय जिसका पेपर अभी छूट गया था, रेमाया, आर यू देयर? रेमाया, आर यू देयर? नीरज जी, मेरा सेशन जो कल है मैं कल में ले लूंगा. ओके 5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन. ओके थैंक यू सर. रेमाया, आर यू देयर? रेमाया मेनन. एक मिनट में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं राजेश सर. Remaya, please present your PPT. Where are you? Please come and present your paper. Hello, can you hear me, sir? Yes, you are audible. Please go ahead and present your paper. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, my paper is on parental survey on inclusive education for children with intellectual disability in the COVID era. First, I would like to tell you about the basic things about COVID-19 shutdown of schools and other social distancing measures which has been taken by the Indian government as well as in the whole world. Therefore, the students with intellectual disabilities or children with intellectual disabilities and their families and teachers are finding a n number of difficulties to overcome the online strata of teaching. So therefore, there is a segregation and discrimination of CWID in face right now because of this COVID-19 issues, because the teachers cannot reach them. So in the inclusive setup as well as in the special school, so therefore their learning and development will become a major issue or the major hindrance for their learning and development. So therefore this paper presents you about what all are the issues faced by parents of children with disability, especially with intellectual disability. There are two review of literature which talks about in general how or illustrates the pandemic issues they are facing right now because of this COVID. They are lacking in the field of inclusiveness in the path of learning as well as in the path of other co-curricular activities. And the research objective of this particular study is to study the effect of inclusive education for children with intellectual disability from parents in the COVID era. And research question is that what is the understanding of inclusive education provided for CWID in the COVID era? And the methodology part is I have taken research design as survey study, 2-point checklist, that is yes or no. Sample size is 10 because this is a pilot study, and gender is both male and female. Tool is questionnaire consisting of number of items is 10, and sampling technique is non-probability through purposive sampling method. And area of data collection is Thrissur in Kerala. Variables of the research. First one is the independent variable, as we all know, that is parent
parents of children with intellectual disability, and dependent variable is that inclusive education in the COVID era. As I have told you earlier that I have prepared a questionnaire on parental survey of inclusive education with CWID in the COVID era. It consists of 10 questions, and the first, so just a moment, sir. Give me a second. I hope you can see my screen now. Sir, is it visible? Yes, yes, please go ahead. So these were the questions asked from to the parents, and these were the answers we got. In general, there is a lacking between the understanding of the parents of children with intellectual disability, and therefore we need more of kind of experimental design to study more about the investigation. And thank you, sir. Thanks a lot. जहां तक मुझे लग रहा है, अशाक सर, जफरुल सर, यस सर, टेक्निकल सेशन फर्स्ट यहाँ पे ही खत्म हो रहा है, तो सर आप थोड़ा सा इस पर अपनी दृष्टि डालें। ओके, थैंक यू। Thank you very much for all the participants, like Dr. Sadhana Jain, Dr. Ambika, Dr. Durga Prasad, and Dr. Ramya Menon. They all presented their ideas in such a manner which consider in terms of intuitive presentation. The presentation which they gave us was too much subjective and having a lot of information. Being an academician, we got opportunity to learn from these research scholars as well as some teachers about what are the challenges and opportunities are there in terms of disabled persons. So I learned a lot from these presentation and got a lot of information and inspiration from you people, as because at this age really your work in terms of the research work, which is very much authentic, providing a lot of information which is going to give avenues for the future researchers by taking into consider your ideas while they are going to write a research paper, keeping in mind the challenges and opportunities related to a disabled person or in terms of the learners. And I hope that you people must continue with such kinds of the scholastic work, which will not only give the information to within the country, like this message will spread all over the world as well. So at the end of this my comments, I will also thank to Dr. Neeraj Tiwari for giving an opportunity for me to be the part of this wonderful and challenging task. And also I am thankful to Dr. Ashak Malik that we are meeting after 1.5 decade because we work together in Eritrea Institute of Technology. And he was very much energetic, enthusiastic, and doing such kinds of the workshop seminar there. So thank you very much to Dr. Ashak Malik for being with us. And now finally, thank you very much the organization committee and all the participants who presented the paper. Really your paper is having a lot of avenues and scope for future research. Thank you very much.
Dr. Ashok sir, please, few Yes, sir. words for the conference, sir. Thank you. Thank you, Anil sir. Really, it was a pleasure to meet Professor Zafar Alam after a long time. And in fact, in our session, we had 5 presentation out of 5. The 4 presenters, they presented their work. And Professor Sadhna Jain, she spoke on the support system. And we can say she pointed out and highlighted different aspects of the disability, and the stigma concerned are linked to the disabled people. And then she gave the, we can say, an option of the virtual teaching, how we can effectively we can say implement the virtual teaching, especially for the disabled students. Then Ms. Ambika Vishwakarma, she spoke on the, we can say, development of the self-regulatory and the self-reflection, we can say, strategies of the teaching. She discussed the different types of the learning disability. And then Mr. Durga Prasad Yadav, he spoke on the, we can say, on the different, of course, different disabilities. And then he said we should have the common consensus to reach where we can help the, we can say, differently able people. And then finally, the first speaker who spoke in the last, that is Remia. She spoke about the segregation and the discrimination that is faced by the different people. She discussed the methodology and some, we can say, the conclusions, how we can help the disabled people. So, and I'm highly impressed by the excellent work of the presenters. And it was also nice to listen Professor Zafar Alam after a long time. So I once again thank you to all the organizers and wish all the best to this today's. Thank you so much, sir. Thank you both of you. थैंक यू सर, जफरुल सर, बहुत ही हेल्प हुई आपके द्वारा. एंड असाक सर, आप दोनों का बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन रहा. मैं नेक्स्ट जब भी होगा मैं आप दोनों को याद करूंगा, और हो सकेगा तो बहुत जल्द हम सब मिल करके एक और अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, और उसमें हम सर आपको इनवाइट करेंगे. श्योर. तो सर अब हम अपना आपको थैंक यू बोलते हैं. हम नेक्स्ट सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टेक्निकल सेशन. सो थैंक यू सो मच अगेन सर. एंड नेक्स्ट टेक्निकल सेशन सेकंड इज स्टार्टिंग नाउ. द स्पीकर इज पॉल कॉनबर्ग, बॉनमेयर, नीदरलैंड. वेलकम सर. Welcome for the technical session second. And co-chairperson Dr. Nihar Ranjan Mishra, JRD University, UP, India. Nihar sir, are you there? Nihar sir? Nihar sir, welcome. Thank you, sir. Good afternoon. Afternoon. Paul sir and Nihar sir, both welcome for the technical session second. And we are starting sir technical session second, and inviting for the paper presentation to Dr. Shilpi Raj. Dr. Shilpi Raj. Yes sir, very good afternoon sir. Wait. Now sir, Nihar sir, हम आपके द्वारा भी 2 मिनट चाहेंगे कि आप यहाँ पर 2 मिनट अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें, और पॉल सर से भी बोलें, बिकॉज मैं हिंदी भाषी हूँ सर, इतना इंग्लिश का प्रयोग नहीं जानता. तो मैं कहूंगा कि आप पॉल सर से भी एक बार रिक्वेस्ट करें, वो भी 2 मिनट अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें, और आप भी सर प्लीज सर. Okay, sir. Good afternoon, all the participants. Professor Paul Kurenberg from Germany. He is a social engineer. With the No sir, Germany not Netherlands. Sir is from Netherlands. With the mistake
शेड्यूल शेड्यूल में थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर, वो नीदरलैंड के हैं सर। Okay. सर इज इंजीनियर, सोशल चेंज इंजीनियर। Okay. He is a social change engineer, and he's from Netherlands. And by technical background, he's from mechanical engineering, computer science, commercial technology, and data communication, science systems. He is running operational management at Kantari. He's very eco-friendly, cost-effective, hardware technology individual, and mostly important with respect to the architecture. Working together with respect to the better tomorrow. In the physical terms, you can say the technical solutions or mental strengthening. I request Professor Paul Kronberg, please come to the session and have a talk, sir. Please. Paul sir, your audio is yes. Can everybody hear me? Yes. Okay, I have one request, because I see just names on a screen. I don't see faces, and it's very hard to speak just to an empty screen. So if somebody could put on their video, leave your audio off. But if some people could turn on their video so I can see you, and then it's much easier to have some interaction. Thank you so much. I appreciate that. So every good story starts with once upon a time. So I want to start the same way. Once upon a time, I was very lucky to be at the right place at the right time. And this was in 1997. This goes a long way back. And I was traveling, and I'm from the Netherlands originally, and I ended up by sheer coincidence in Tibet, of all places. And the first person, or one of the first people I met there, was a young woman, and she was traveling by herself. And I was wondering what she was doing in Tibet. So I asked her, "Are you here for sightseeing?" And she said, "No." And of course she said no because she's blind. So her name is Sabria, and Sabria, at that point, she told me her story, her life story, and it has changed my life completely. And her story has changed the lives of thousands of other people as well. So what happened is Sabria was born in Germany, and she was born with RP, retinitis pigmentosa. And so at a slow rate, she would lose her vision. And her parents understood that she was going to go blind, but they didn't tell her. That was great, because blindness is linked very much with fear. And a lot of people, and this is the biggest stigma that we have to fight, is that the big stigma is that a lot of people think that blind people live in the dark. Because if we close our eyes, we can't see anything and it's dark. But that's a myth. Because a blind person sees as much as your toe in your shoe. Now imagine you have, in your shoe, it must be very dark. But now you take off your shoe, you take off your sock, then it should be very light, but your toe doesn't see anything. So it doesn't see dark, and it does also not see light. So a blind person doesn't see anything. They see what they imagine. So Sabria, when she slowly but surely became blind, of course, she was bullied by other children in her school. They didn't like, if somebody's different, and all of you know this, if somebody's a little different, people don't know how to handle that. So bullying is the easiest way. So Sabria was bullied terribly. And then at some point she said, "Listen, I'm done with this. I'm going to drop out." So she stayed at home with her parents for a little bit. And what happened is her father was a pianist, but also a philosophy teacher. And he read a book to Sabria, and it was a book about Angela Davis. I'm not sure if some of you heard about Angela Davis. Angela Davis is the Black Power movement, one of the women that started the Black Power movement in the US. And in the book, there were 3 words that made a difference, and has made a difference for millions of Black people around the world. Black is beautiful. And so Sabria, she understood, she said, wow, if this lady can transform the concept of Black being negative or being inferior to something beautiful, blind is black and black is blind, because that was still the perception. So she said, then I have to find the beauty of blindness. Now, guess what? there is this issue of what is beautiful about being blind. So we go around the world quite a bit, and we speak many times, and especially in schools for the blind. And the first question we ask these blind children, we ask them and say, what is the most beautiful thing about being blind? And usually the kids start and they a little quiet,
And there's always one child that raises their hand and says, well, at night, I share my room with my sister, and at 9 o'clock, my parents come in, they switch off the light, and my sister has to stop reading, but I can continue because I can read and write in the dark. So that's already a very good example, and then advantage. Then other kids says, well, my friends, they have these smartphones, but when the battery dies, they're no smart no more because they don't remember the numbers, but I have the numbers in my head. So they come to me and ask for the phone numbers of their friends. So Sabria was also thinking about, okay, what is not just what is good to be blind, but what can I do better? What is my advantage of being a person without sight? Came with 4 points, very, very key. First one, focus. Not being distracted by Hollywood, Bollywood, and advertisement. We sighted people are terrible. We have these beautiful built-in HD wide-angle cameras in our head, and from the morning that we open them, they start recording the entire day. And if you live in a city, and especially an Indian city, bad luck, because what you record is a lot of rubbish. It's advertisement, and advertisement has one goal only, that is to make you unhappy, to buy the product that you don't need. So blind people, they're not distracted by Hollywood, Bollywood, and advertisement, which is a great advantage. The second one is, if I blindfold you right now, you have a problem, and you have to find a solution to continue, to manage daily life. So blind people and differently able people as well, they have this issue where they have a disability, so they have to compensate, so they have to find solutions all the time. So if given a chance, they're very good problem solvers. The third one is they are forced to become very good communicators. A blind person cannot point and say the finger there or there, right? Because they have to be very precise. So Sabria would describe to me, okay, 2 meters in front of you on top of the shelf, the third shelf, that's where you find the cookie jar. You have to be very precise in their communication. And the last one is they have to, envision everything. I'm really upset about everybody talking about innovation. There's very little innovation these days, very little. But everybody talks innovation, blah, blah, blah. Bull. Okay, so we have a cup. We had a cup before, right? And this cup is in my hand, and suddenly it slides out. Now, a sighted person saw a handle on a door, and they thought, let's take the handle, put it on the cup. Now we have a mug. Innovation. That's not innovation, that's an add-on, right? We have, right now there's a lot of add-ons. There's not a lot of new things that are being invented. But a blind person, because they can't see, they have to think about everything, and they have to imagine. And anything that's called a vision is to imagine something that's not there yet. So blind people are potential visionaries. So when Sabria understood this, she said, hey, I've got all the stuff that it takes to create a great life. What I need now are skills. So she decided when she was about 11 years old, she said, or 12, she said, I want to go to a school, a special school for the blind. She was lucky, she was in Germany, she went to Marburg, and the school was focusing on the ability and not the disability, which was wonderful. They did horseback riding. Well, that's easy, the horse could see, right? Then they did downhill skiing. Can you imagine downhill skiing with your eyes closed, following somebody with a little bell? They did whitewater kayaking solo. Can you imagine being in a kayak going through a white river alone, not seeing? It's all possible. So Sabria was she got a lot of opportunities there. And one day they went to an exhibition about Tibet. And then she said, oh, this sounds interesting. In Tibet, I can do horseback riding, downhill skiing, whitewater kayaking. She didn't know what was going on in Tibet, but that was her dream. So she said, can I study this? And they said, yep, there is a study Tibetology in the Bonn University, but you are blind, so forget about it. And this is what happens. Sighted people, normal people, I don't think there's any normal person anyway, right? But normal people, they would say, you cannot do this because you're blind. You cannot do this because you're in a wheelchair. You cannot do this because you cannot hear. Because everybody tells people what they cannot do, and that's terrible. I'll come back to that in a minute. So Sabria said, I want to go to this university. But there was a problem, because never ever a blind person had enrolled in that university. So Sabria was the first student there. And she had a problem because she couldn't write down Tibetan notes in Tibetan language because there was no Braille script for Tibetan language. Well, I just mentioned that blind people are good problem solvers. 2 weeks later, Tibetan Braille was born.
Sabriya developed a Tibetan Braille script. It's very complicated, but she made it very simple. And now it's the official Braille script for Tibetan language in Tibet. So a Tibetan scholar saw this and he said, who can come and teach in Tibet, right? And he said, oh, I know Sabriya. She will come immediately. No, that's not possible. She's a woman and she's blind. That's not going to work. So this was 1997 when Sabriya was traveling by herself to Tibet. And once she was in Tibet, that's where I met her. She told me this story. And she said, I want to start a school for the blind here. And I said, you know what? I'll join you. Just give me a call when you're ready. We do this together. Sabriya went on horseback that trip. And when she was in the remote areas of Tibet, she found a lot of blind children locked away in dark rooms. And they were left there. And they were left to die. People believe they have done something wrong in their previous life. They have committed, a crime. They have bad karma. Parents believe that they are possessed by demons. They don't even touch their children, which is terrible. So Sabriya was very frustrated because she said, what can I do as a foreigner coming here, telling them what they're doing wrong? How can I make a difference here? Luckily, on that trip, she met Tenzin. And Tenzin had this smile on his face and he said, oh, you're blind? I'm blind too. And Sabriya was wondering, how come that this boy has a smile on his face? Because all the other ones were literally like vegetables in a dark room. Then she asked him questions. She said, what do you do, Tenzin? And he says, well, I'd love to go to school, but my teacher didn't let me or the headmaster, because I can't see. But the village of the head gave me a task. He says, you can, herd the yaks, right? The yaks, these big cows, and they have these big bells around them. So he found a system that he could keep the cows together, listening to the bells. Now here comes something very essential. This counts for everyone. He had a task. If you have a task, you have value. If you have value, usually you're respected. If you're respected, you get the most important part, dignity. And only when dignity is in place, then self-confidence can come. I'm sure that you know a lot of people that never came to dignity because they don't have real self-confidence, but they pretend. And the pretenders, you see them with their smart gadgets, with their expensive car, with a big house, trophy wife, trophy husband, whatsoever, right? They show off whatever they have, but inside it's empty. Now, for Sabriya, she understood immediately what was needed. She said, I need to start a center where we can bring these children together. They get these skills. They get to the point of dignity where they have something to offer, and everybody has something to offer, everyone, no matter what, no matter being disabled or not, everybody has something to offer. And once you have that dignity, then with newfound self-confidence, they can go out to regular schools and integrate themselves into society. This was the story. So she went home, raised some funds, and in 1998, I got a phone call. I was at work back in Holland, and it was Sabriya, and she said, well, how are you? And I'm leaving next week. I'm going back to Tibet. And I didn't say anything. And she said, well, at least you can wish me luck. We don't know each other that well. You don't have to cry or anything. And I said, you know what? I'll join you. So the next day I quit my job. I had a well-paid job. Quit my job. 5 days later, we went back to Tibet together. That's where all the trouble started. Not because of me, but we had lots of issues. Sabriya wrote a book. It's called My Path Leads to Tibet. Has lots of issues in it. We were kicked out of the country. People tried to run off with our money. But the biggest challenge we had was, how can we give these children hope for the future? Thank you so much. My life slogan is, life is what you're happy getting up for. Right? So I'll finish the story and then we'll go into a discussion. Is that okay? Okay. So my personal life slogan is, life is what you're happy getting up for. 1 year ago, a tumor was found in my spine. And it was taken out. It was taken out 1 year ago on the 5th of February. And the biopsy resulted in cancer. So I have lymphoma cancer. And I got 6 chemos. I lost my hair. Now it's back. I got 15 radiation therapy. And now I'm pretty much okay. This morning I did a blood test. So hopefully later this afternoon, I'm going to get some good news. So what happened in Tibet, the biggest challenge we had was, how can we give these children hope? And it comes back to what we're doing here. You have to have a reason to get up in the morning. And if you have a reason that comes from yourself, that's the most powerful thing ever, right? So we said, okay, we started a dream factory. And we ask our students, what is it that you want? And I think this is very important in the discussion later on as well. And for everyone here, if you find out what it is that you want in life, most important question to answer, what do you want?
You don't have to work a day in your life anymore. Sabrina and I have done this for 23 years. We are here 7 days a week. Mornings, 5 o'clock, we get up and we work all day. And we love what we do because we chose to do this. So here's this little boy. We gave him 1 week time. There's Norbu, 8 years old. He smiles. He says, I want to become a taxi driver. So we could have ruined his dream right there and then and say, you stupid blind boy, you cannot see, you cannot become a taxi driver. Well, Norbu was, we said, wonderful. 2 years afterwards, he speaks English, Tibetan, Chinese, walks with a cane, serves on the internet. And we asked him, what about your dream? And he said, well, now I realize the fact I can't see. Maybe it's not so safe to become a taxi driver, but I can set up a taxi company and run it. 2 years, 10 years old, right? 2 years after that, he became interested in making cheese. And he was the first blind person ever in Tibet to fly. He flew all the way to Holland, learned how to make cheese, came back and started our cheese factory. This is 20 years ago. Now he has his own restaurant and a medical massage clinic. And he's successful. Why? Because he loves what he does. It's that simple, right? So now when we come to disability, right? Because we're talking about disability. What is disability? I think we all are disabled in one way or the other, but we don't want to show it off, right? So it depends on what perspective you look at it. And Sabrina came up with a very, very good example, I think. And it's a wonderful example. You're walking on the beach and up high above, you see an eagle. This eagle is flying high above us. Now, put yourself in the perspective of that eagle up there, looking down on this person on the beach. The eagle looks at that, strange character and starts laughing because that person can't fly. So from the eagle's perspective, we are disabled because we can't fly, right? Now, what did it do to us? Sabrina came back today morning. And how did she come back from Germany? She flew. So the fact that we couldn't fly, that we were disabled in that sense, forced us to come up with a solution and to invent a solution. So disability is the mother of inventions. Everything we have today, a ballpoint, very simple, a ballpoint we have today was first made for the blind. Right? A keyboard was made for the blind. We sighted people are happily using it. A lot of things were made for people with disabilities or with a disability. So now, if you look at disabilities, we are all disabled, and over age, we will become disabled. So let me come to I'll give you a few more examples of this children in Tibet, how they have overcome their disability as such. And I think the first part, one very, very important is acceptance. Right? There are two kinds of people in the world. If something happens to you, either you sit down in the corner and start crying and feel sorry for yourself, or you say, this is how it is, and I'll stand up and deal with it and make the best out of what is coming. Right? So now, Kumi was in our courtyard. He was with us for about half a year. No, a little bit longer, about 8 months. He already spoke a few words of English. He spoke pretty well Chinese. And Kumi was standing in the courtyard, and he had a smile from ear to ear. He's about 6 years old. And I said, Kumi, what's up? And he says, I'm so happy. And you could tell. You could feel it forever. He was just radiating happiness. And I said, why? And then he says, because I am blind. And I said, why? He says, well, I'm the only one in my family that can read and write. I'm the only one in my village that speaks 3 languages, English, Tibetan, and Chinese. I'm the only one in my entire region that knows that the world is round and surfs on the internet. And that not despite, but because I'm blind, my brothers and sisters don't go to school. I have this knowledge, they don't. I have another example, and this is for me, that's people say, where do you get your fuel? Where did you get your energy? Here's a very good example, and this is very very, very powerful. Tsering Namu was about 4.5 years old when she came to our school. And she looked, very sweet little girl. And she was really in a down mood. We didn't know exactly what was going on. And so she stayed for us for half a year, and after half a year we said, okay, it's summer holidays. Do you want to go back to your parents? And she said, no,
And we said, why not? And she said, well, because my mom beats me. And then we said, why do they do this? And this girl, she was in our school for half a year. And in our school, the first thing is that we have to respect everyone. And we deal, we treat everyone with the same respect you want to be treated with. And she said, she just turned 5 years old. She said, I don't know why they do this, but now I know they don't have the right to do this. 5 years old. That's empowerment, right? If a girl knows that there's no right to hit or to be hit, why? Because she was given a chance. She was in an environment where everybody treats each other equally. And I think that's a very important part. Now, of course, I hear a lot of people say, well, equally, there is no equality in the world, right? And you're right. There is no equality in the world. And I think as long as I live, and maybe as long as you live, there won't be the equality that we wish for, because people are just too selfish for this. But there are two things that are equal for everyone. No matter where you are, what country you are, what skin color you have, what religion you have, if you're alive, there are only two things that are equal for everyone. 24 hours a day and death. Now, knowing these two, I'm always wondering how so little people are not looking harder to find the best way to fill those 24 hours every day. I see a lot of people wasting their time. They're not really using it very effectively, right? Our time is limited, and if we want to leave something behind, if we want to help other people, if we want to be, it's not about me, it's about us, right? And in the last 2 years during the pandemic, I've seen one thing, and in many cases, I see that the I is beating the we. And if we don't get the we in front of the I anymore, then we're doomed in the future, because it is about us. I hear people that say, I'm a self-made man, I'm a self-made woman. Well, that's a miracle, because it takes two people to make a person, right? It's you can't make yourself. So, and then of course, if you're self-made in your business, you were taught in a school. You depended on other people that taught you things. There's nobody self-made. We're all here in this together, right? And we have to look and find solutions to work together to create a better tomorrow all together. Now I will close up with a few points that I would like to share. So yes, life is not fair. It is not equal. There are a lot of challenges there, but I can tell you one thing: being alive is the biggest disease that we have, because we're in danger every day that we're alive. Only the dead are safe. So yes, challenges will be there. Challenges will always be there. Yeah. So now the question is, how can we deal with the challenge? Right? And it doesn't matter if you're now disabled or not disabled. We all have to deal with challenges every single day in our life. Now, for the blind, I just focus on the blind for this part. We were criticized that we don't have a blind-friendly campus. And we have done this with a purpose, because we have a very simple strategy. There's a lot of technology these days, and it's wonderful. What we're doing here right now is amazing. I can see people around the world. We have a communication, right? You can hear me, you can see me, I can see you. However, it makes us dependent. So our first point in whatever disability you have, if you can't find a solution that is not technically driven, learn it. Learn how to walk with a white cane. Because we cannot adapt the entire world to the blind. We have to adapt the blind person to the entire world. I'll give you an example. In Hong Kong, Hong Kong is perfectly laid out for the blind. They have these tactile tiles everywhere, the traffic lights, everything works wonderful. But you hardly see any blind people on the street. Why? Because can you still hear me? I think there's something going. Yes, sir. Okay. So hardly any blind people are on the street. Why? Because they are not trained to use their white cane. And you see them at the end when of course, if you come at the end where the tactile floor is stopping, the blind people can't find beyond that, right? So don't get too much
depending on technology. If you can learn a skill without technology, do that first. And then, of course, yes, to make life easier, use the technology. But then the battery is empty. At least you have a second. You have a how to say plan B. And for me, what I've learned in the last 4 years that I've been working with Braille Without Borders, that's the name of our organization, and with Kantari here in Kerala, I think communication is probably one of the most important parts that you need. You need good communication skills to make sure that, first of all, you are heard, and second of all, it has to be clear what it is that your problem is and what you want. And I think that's something that is, a lot of people, they're not very concise in the way they communicate. So, and I do blame schools for this as well. Schools you're not taught to stand up and speak up for yourself. Basically, you're taught to say what the teacher wants to hear, right? It's as long as you say what the teacher's hearing. It's a very wonderful example. The teacher comes in first day of class, first grade, and she asks all the students, what happens in autumn? And all the kids raise their hand, and she says, Johnny. And Johnny says, in autumn, my grandfather has his birthday. The teacher says, wrong. And then she says, Lizzie. And Lizzie says, in autumn, the leaves fall from the tree, man. Good. That's a good answer. So Johnny thinks, like, as long as this lady, as I say what this lady wants to hear, I make good notes and I pass this school. But that's where creativity is gone. So to empower people, I think the most important gift to give them is to allow them to communicate, to allow them to speak up and help them to be more concise, precise about what it is in life that they want, right? One thing is very good is you can record yourself, right? Everybody has a mobile phone these days. Just record yourself. Visual, audio, your audio you can record and listen back and see if you were audible, if you were clear, if you were concise, you're not repetitive. In America, the word like is being tossed in like 20 times in one sentence. Yeah, I was like, it doesn't say anything, right? So, and it doesn't make your communication more clear. So I think communication is very, very, very important. Then I think it also what should stop is to compare to others. People like to compete with other people, which is terrible because you are unique, just like everybody else. You are unique and you should celebrate your uniqueness. Right? So don't compare to other people. We all have different talents and we all have different stages in life where we want to be and where we can get. That's how it works. It's as simple as that. Sir, I'm audible, sir? Yes, please. Sorry? Yeah, I'm audible, sir? Yes, you are audible. Yes, please. Yes, sir. Sir, the presenter wants to present their paper. So okay. Can we invite them? Sure. Yeah. Okay, sir. If there's any questions, there's also fine for me if you want to have any questions. Okay. Nihar, sir, are you there, sir? Nihar, sir? Nihar, sir? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. सर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, शिल्पी राज को बुलाते हैं या फिर आप सर वहां आपके पास शेड्यूल हो तो सर आप स्टार्ट करा दें. Sir, can I ask a question? Yeah, please. So, whatever you have experienced, you have long experience, and it was really a great pleasure to hear you. Anamka ma'am. Yes. You can your question of after the session. Please write out on the paper and please ask your question, all questions after the session because the presenters are waiting for the presenting their paper. All right. Okay. Fine. Okay. Thank you. Nihar sir, please sir invite करिए. अब शिल्पी आपके पास शेड्यूल है तो सर आप प्लीज बुला लें एक करके. Okay, sir. Dear presenters, now I invite Dr. Shilpi Raj to present her paper.
Okay, thank you so much, sir, and good afternoon, everybody, all the participants here. Very warm good afternoon. And I would like to take this opportunity to thank the organizers, the organizing committee for giving me this opportunity. I'm an assistant professor at Central University of Jharkhand, Ranchi in the Department of Education. And when I was in Delhi University, I had taught in two colleges as an assistant professor, which were specifically dealing with inclusive education, and they were B.Ed for visual impaired students. So I have that kind of experience, and kindly allow me to share the screen and present myself before you. So, okay, I hope the screen is visible. Could somebody please confirm? Yeah, Bijbal, please. Okay, thank you so much, sir. So, the topic of my paper is, or rather, the topic of my presentation today is inclusive education post COVID-19, response, recovery, and resilience. So, now what are the global challenges for inclusive education? So, children with disabilities are among the most vulnerable, and this contributes to the country's human capital gap when there is a gap in the understanding and the knowledge repertoire of a country. And at the peak of the lockdown, all of us witnessed that there were many countries which were forced to close down schools. So because of this reason, many learners are out of school, and which further contributes to the risk of marginalization for children with disabilities. See, here we need to understand two things. First, there is a normal. Second, there are people with disabilities, and then among them, they are the marginalized. So we need to see how the categories are further being clearly understood, and how we need to provide interventionist strategies, and our special efforts should be directed towards them, because disabilities is not a homogeneous group, or rather a classification, but within that also there are different kinds of issues which are there. So, what is the purpose and scope of research? There is a growing demand at country level on recommended practices for disability inclusion, and the students with disabilities who are excluded or marginalized, they need initial rapid response solutions for COVID-19. And we also know that there were a lot of issues in developing countries regarding budget allocation, and regarding funding for these things, education, plus all the PPF kits and other things. So that is also an issue. But definitely there is a need for a global public intervention from all the aspects, from all the stakeholders, to take care of and to come rather out properly from this COVID-19 pandemic or scenario. So my paper focuses on the emerging education and social needs, barriers and issues for children with disabilities as they try to overcome the COVID-19 crisis. And it also gives some recommendations on education and social inclusion, and also proposes some accommodations for children with disabilities during the COVID-19 pandemic, and as we are trying and making full efforts to come out of this pandemic situation. So what are the major issues and themes? The relief phase, when the first phase was just over and we were trying to relax a bit. The recovery phase, while we were trying to recover, but again there was a second phase. And the resilience phase, where we try to come back to the normal. So whether our attempts at coming back to the normal, they have been fully successful by now, or due to these various waves of COVID, or phases of COVID, it is still in process. That we need to see. So we need to rethink education with an inclusive perspective for learning, very important. We need to support resilient, inclusive teachers and social responsibility. There is this debate in inclusive education where it's a social construct, it is a medical issue, or it is a psychological issue. So the social constraints or circumstances or the environment needs to be taken cognizance of. Family and community support, again, it is related to the social surroundings. Inclusive nutrition and wash, that is water, sanitation, hygiene, the major issues. And budget, as I've talked about. So when we rethink learning from an inclusive perspective, what are the major challenges when we talk about these marginalized people, even in the umbrella term of disability? So major issues: inequitable access devices,
Like Sir talked about the cane thing, whether how much it favors and how much you can use it. Inequitable internet and data access, all of us know, and this is more so pronounced for people who have disability rather than the normal people, because we have seen or heard stories or anecdotes about normal people who Dr. Silpi, your voice is not clear. Dr. Silpi, your voice is not clear. Are you there? Maybe sir technical issue is creating here. Technical issue हो गया है उनकी तरफ से. Next कर ले क्या सर? Technical issue के कारण आवाज नहीं आ रही. Okay. Now I would like to invite Dr. Dr. Nakul Khatri. No sir, Dhawal Modi schedule something change sir. I'm sending you next updated schedule. Next is Dhawal Modi, and then Nazia Ali, then Sudipta, then Sabha. Sir, Nakul Khatri is not there. No sir, Nakul Khatri is now busy in something work from today. Okay. तो सर वो कल करेंगे तो उसका हट गया था. तो धवल मोदी का है सर. धवल मोदी का अपडेट हो गया है. Now I would like to invite Dr. Nazia Ali. नाजिया अली को भी कर सकते हैं सर. Hello. Dr. Nazia Ali, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm there. Yeah. Please go on. नाजिया अली आप start करें. Yes, sir. I'll share the screen. Very good afternoon, all of you. So myself, Dr. Nazia Ali, I am working as an assistant professor and an occupational therapist in the Department of Occupational Therapy at Jamia Hamdard. So today I'll be presenting a paper of mine. I hope my screen is visible, sir. Yeah, visible. Yes. So I'll be presenting a paper which is called as Perceptions of Inclusive School Students Regarding Online Classes During this COVID-19 Pandemic. Everyone has here talked about what is about the online classes, how we have gone through it. We all know that COVID-19 has caused lots of changes in this era. So basically, COVID-19 is the coronavirus disease which came in 2019, and we have all faced a lot of issues regarding that. There was social, cultural, and political life which was hampered of the people around the world. And basically, what happened was that it was a lockdown which was imposed globally, and basically the impact was on the education institutions. So when schools were closed, people were facing lots of issues, and there were lots of students who have difficulties, and they were not able to actually go to the schools. So work from home, this one word which came into being, work from home, and it basically created a gap between lots of students and the teachers. So not only the gap was created, but teachers were not able to show their creativity according to this work from home initiative. So I have done this recent research which had a rationale which has worked on this work from home thing. And this research was basically done on problems faced by students in higher education during online teaching. Lots of researches has been done on that, but my current research was on perception of students who were studying in 5th standard to 8th standard, and they were in the inclusive school. So students who were going to these inclusive school setups, so the basic agenda was to find out their perceptions, how they feel about the online classes, and what were the difficulties with these online classes. So methodology what I adopted was that there were 200 students who were taken, and they were studying in an inclusive school which was a part of West Delhi, and it was a 3-month study from August to October which was done.
Verbal consent was taken from the people, and basically student with disability and typically developing students, both of them were a part of this study. There was a questionnaire which was used, which has different questions which demonstrated the demographic details of these children, and it highlighted their acceptance of e-learning, whether they were happy to do e-learning or not. And there were other facilities also which were asked from them. The results which we obtain, I would just like to highlight the results which I obtained. As you can see in the diagram, this table, what we found was there were 55% were male students and 45% were the female students. And the religion basically mostly were the Hindu religion students, then followed by Muslim, Christians, and Jains. And class students were 5th to 8th onwards. And we had a representative sample जिसमें 100 बच्चे disabled थे and 100 normally going या typically developing children थे. जब हमने एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लिया पेरेंट्स का, सो हमने क्या देखा उसमें कि यूजुअली बिकॉज दैट वाज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल व्हिच वाज सेट अप, and it is an inclusive school which had people from lower economic status, parents were there. So educational status जो था parents का, fathers and mothers का, वो बहुत low था. And this educational status was actually associated with the economic conditions, क्योंकि उनकी economic conditions ऐसी थी. And majority participants जो थे, जो fathers थे, because of this COVID-19 pandemic, they they had lost their jobs, and majority were the daily wage workers. So they were having earnings on the daily basis. When we had a discussion about the ITC devices, क्या उन्होंने पहले कंप्यूटर यूज किया है, have they been attended online classes, तो हमने ये देखा कि 90% जो स्टूडेंट्स थे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, 97%. बट द मेजर थिंग वाज कि 70% स्टूडेंट्स ने पहले कंप्यूटर यूज किया हुआ था, रेस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं किया हुआ था. ऑल्सो एक जो मेजर फैक्टर था वो ये था कि ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे. तो जो प्रॉब्लम जो अराइज हुई, जो व्हाट परसेप्शन जो स्टूडेंट्स ने कहा वो ये था कि अगर वो मोबाइल फोन्स में क्लासेस लेते हैं, दे वर डाइवर्टेड. उनका हमेशा रहता है कि कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलें, कभी व्हाट्सएप खोलें, कभी फेसबुक खोल लें, और स्क्रीन प्रॉब्लम्स, कभी कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पे तो उन्हें वो देखना होता है. तो ये जो था, ये सारी जो चीजें थी जो उन्होंने देखी थी, this was actually creating loss of interest in the classes. So that is why they were not able to have quality education. Also हमने ये देखा कि 6% of the students थे, उनको ये लग रहा था कि connectivity issues होते हैं, and few of the people had internet issues also, and कुछ ने ये कहा कि they faced electricity problems also. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की बात करते हैं या कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हमने अभी हमारे इसमें सीआरई में भी देखा, देयर आर मेनी अ टाइम्स जब हमें ये चीजें फेस आउट करनी पड़ती हैं. When we have taken the strata, we found कि जो फैमिली साइजेस हैं, जहाँ पे बच्चों के यहाँ 5 मेंबर्स से बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी अटेंड करने में. और कई बार ये देखा गया कि जिस फैमिली में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, उनको ज्यादा मोबाइल को हैंडल करने के लिए दिया गया. इफ पीपल हैज ओनली वन मोबाइल फॉर द फैमिली. ऑल्सो जो लोग वन रूम में रह रहे थे, दे वर हैविंग डिस्ट्रैक्शंस, स्पेस की अनअवेलेबिलिटी थी. And many a times, because the social economic strata was very low, so parents were not so educated, they were illiterate, and they were not able to help them. अगर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करें, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेंबर या कोई अपना सिबलिंग चाहिए था अपने साथ, ताकि वो अगर कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है या कुछ शेयर करना है या कुछ रीड आउट करना है तो वो कर पाए. हमने 2-3 चीजें और फाइंड आउट करी कि जूम बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म था बच्चों के लिए यूज करने के लिए. बच्चों को ये लगा कि यूट्यूब लेसन्स जो अगर टीचर्स के थ्रू दिए गए थे वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे उनके लिए. एंड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इस पेंडेमिक के बाद नॉर्मल क्लासेस चाहिए या नहीं. तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी 76% ने कहा कि हमें नॉर्मल क्लासेस चाहिए, बल्कि 22% ने ये कहा कि दोनों नॉर्मल एंड ऑनलाइन क्लासेस विल बी ओके. एंड जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 53% ने कहा कि नॉर्मल क्लासेस होनी चाहिए आफ्टर द पेंडेमिक. एक्सेप्टेंस की कुछ अगर बात करें, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी तो जो थे 33% को ही लगा कि दे वर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस, एंड 48% नॉर्मल चिल्ड्रन को लगा दे वर एंजॉयिंग.
बट क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, नाउ स्टूडेंट्स आर आल्सो फीलिंग कि क्लासेस फिजिकल होनी चाहिए और उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो जाएं। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ने ये कहा कि ट्रैवलिंग टाइम उनका कम था, डेफिनेटली उनको लग रहा था, और घर पे रहने का एक अवेलेबिलिटी थी, ऑनलाइन मटेरियल मिलता था, अपने सारे नोट्स मिलते थे, और एक अपने ही अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका एक पेस बन गया जैसे वो लर्न करते थे, तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी देते थे। बट प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो टेक्निकल इश्यूज, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने बहुत ही डिसएडवांटेज एक दिया गया। आईटी इक्विपमेंट एंड आईटी सपोर्ट भी कहा गया कि अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स के लिए। हाउ टू एक्चुअली गिव अ जिस्ट ऑफ इट, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इंटरनेट एक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड जो कम रूरल एरियाज में है या फिर वीकर सेक्शन सोसाइटी है, उनके पास हाई हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, दीज वर द प्रॉब्लम्स। ये भी देखा गया कि बहुत सारे टीचर्स के पास भी अपने ही इंडिविजुअल टेक्निकल डिवाइसेस नहीं है, एंड स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के पास, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो देखी गई। एंड लिमिटेशंस एंड रिकमेंडेशंस जो मेरी स्टडी के थे, हम ये स्टडीज हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी कर सकते हैं, एंड जो बेसिक एजेंडा जो हम हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट को एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैंडल करें ऑनलाइन एजुकेशन को बेटर वे में। और एक जो चीज जो मैं सिर्फ कहना चाहूंगी, लास्ट टाइम है मेरी स्टडी की, कि स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के लिए एक सिंक्रोनस क्लासेस हो जहाँ पे स्पेशल एक्सपर्ट्स, पीपल लाइक ऑल ऑफ यू हु आर देयर इन दिस, शुड बी फैसिलिटेटेड, एंड उनको एक रोल मिले ताकि वो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज को ऑनलाइन क्लासेस दे सके। थैंक यू। दीज आर माय रेफरेंसेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Now I would like to invite Sudipta Chakrabarti. Sudipta Chakrabarti. सर इसमें एक धवल मोदी जी हैं जो अपडेटेड शेड्यूल में थे, तो उनका हमें कराना है धवल मोदी का। तो वो शिल्पी राज के बाद ही थे, तो उनका करा लेते हैं सर, फिर सुदीप्ता मैडम का करा लेते हैं। जी जी। Okay, Dhaval Modi, are you there? Yes, hello. I'm Dr. Aishwarya Parmar, and I would be presenting it on behalf of Dr. Dhaval. Okay. Please start, ma'am. Okay, so hello everyone. Good afternoon. I'm Dr. Aishwarya Parmar. I'm an occupational therapist from Mumbai, and I'll be presenting my paper now. Can you all see the screen? Hello? Yeah, visible. Yes. Okay. So the topic of my of the research is case study to assess the efficacy of the SPED at Home program on the learning outcomes for children with special needs. On March 2020, WHO, as everyone know, that COVID-19 was declared as a pandemic. So this developed a necessary transition of face-to-face intervention services into an online or virtual service delivery mode. The aims, hence, of our study was to assess the efficacy of the online SPED at Home program on the learning outcomes of children with special needs. The objectives were to increase access of education to all, provide high quality online special education and occupational therapy, and to build an ecosystem of learning by empowering children, parents, and teachers, and to identify the strengths and challenges of the program. The inclusion criteria was children aged between 6 to 13 years of age. They were from a regular school. They were either with combination or individual disabilities like specific learning disabilities, attention deficit hyperactive disorder, children with autism spectrum disorder, and all of these children were with gross annual family income of less than 8 lakhs. And exclusion criteria, children with cerebral palsy or any other physical disability were excluded, or any other children who might require psychotherapy, they were not included in the study. This was a prospective experimental study. An invite who met the inclusion criteria was posted over social media,
and the applicants who met the inclusion criteria and availability of internet and technological devices were included in the study. The total sample size was 9 children, out of which 5 were girls and 4 were boys. The assessment tools were, there was a pre-assessment which was done through our online SPED at Home program for English language, math, and occupational therapy. This is a pilot study with children from regular school with either a combination of the conditions which were already mentioned. Parents were also asked about the availability of devices and level of proficiency in using technology. An adaptive grade level program of remedial sessions twice a week with each for math and English were provided. Occupational therapy sessions were once a week. Therapy was for a period of 6 months. An individualized plan of treatment for deficits in developmental and academic areas was provided for the children. The progress was monitored in performance areas of reading, writing, spelling, and math. The level of independence and their level of compliance was also monitored. Subjective feedback was taken from parents periodically, and the study was self-funded. There was no external funding. The observations which we could find, so before the intervention, the number of children who were having difficulty in learning areas were 8 children had reading issues, 2 children out of 9 had writing issues, 3 had spelling issues, and 8 had numeracy or math problems. Children with difficulty in developmental skills or areas were 5 children had gross motor skills difficulties, 1 had fine motor skill difficulty, 9 had cognitive skills issues, 4 children had behavioral skill issues, 9 had social and emotional skills difficulty, and 5 were having sensory area difficulties. We would also like to comment on the level of independence and the compliance which was found during the sessions and also the home assignments which were given to the children. So remedial therapy had 3 children who had issues with level of independence and 4 children had issues with level of compliance, and during occupational therapy sessions 3 children had level of independence issues and 4 with level of compliance issues. So after 6 months of the therapy, the improvements after remedial therapy sessions were 6 children had improvement in reading area, 3 had improvement in writing area, 6 had improvements in the spelling area, and 9 had, all of the 9 children had improvement in maths. And after occupational therapy sessions, all the 9 children had improvements in cognition and visual perceptual areas. 5 had improvements in sensory areas. 5 had improvements in gross motor area. 1 had improvement in fine motor skills. 4 had improvements in behavioral skills, and 9 had improvements in social and emotional skills. Discussion. This current study explores the impact of SPED at Home program, which was delivered online. It provides an integrated online remedial and occupational therapy intervention. The access to care in this study majorly refers to achieving better learning outcomes for children with special needs, improving their level of independence, thereby improving their functional and developmental skills in children with special needs. The difficulties we faced during sessions were access to technology. So, since the children were from family income of less than 8 lakhs, there were lack of accessibility to technology. The children did not have personal mobile phones or computer or laptop to attend the session, so there were issues. Access to services. One point over here that since the children were not having access to such specialized services, uh, through our program, since we provided an online education and therapy program, they had. ऐश्वर्या मैम, Yes. योर स्लाइड इज नॉट मूविंग. आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही है, और ये स्लाइड आप हमें ग्रुप में प्रोवाइड करें ताकि जिसको ना मिल सके उसको हम भेज देंगे. ठीक है, और थोड़ा जल्दी करें मैम. थैंक यू. Okay, can I? या Okay. ऐसे ही प्रेजेंट कर दें आप. Okay, I'll just try again. आप ऐसे ही प्रेजेंट कर दीजिए मैडम, कोई बात नहीं है. हम स्लाइड यहाँ पे सभी को प्रोवाइड कर देंगे. अभी दिख रही है? Yes, clear. Okay. Yeah, so
Access to services, better learning outcomes could also be due to the access of services which was provided, and difficulty in utilizing technology was because children had shared devices and there was inability of the child to independently use the device. Difficulty in utilizing services, there were poor network connectivity, personal reasons from parent side to reschedule the sessions. And after 6 months of services which were provided, there was improvement in academic skills and developmental skills of children. I would like to conclude that adaptive and integrative approach of SPED at Home program showed a significant improvement in academic and developmental skills, improvement in the specific areas of reading, writing, spelling, numeracy, sensory, cognitive, motor skills, behavior, and social emotional skills was shown. The strengths of the study, it adds to the literature on remote learning, improvements in academic and developmental skills. Limitations of the study was small sample size and the exclusion criteria that not all children with special needs were included. Recommendation would be to conduct a study on a large sample size. These are my references. Thank you. Okay, thank you, madam. Thank you, Dr. Ashwarya. Thank you so Now, much. I would like to call Sudipta Chakrabarti. Sudipta Chakrabarti, are you सर there? सभा का करा लेते हैं। सुदीप्ता मैडम का अभी हमें दिख नहीं Dr. रहा है। Sabha आप Anis? सभा का करा लीजिए। सभा अनीश। Dr. Sabha Anis? Yes, sir. Yeah, please Good, continue. good afternoon, sir. Is my screen getting visible? Not visible right now. Is it visible, sir? Yeah, right now. Okay. So good afternoon to all of you. And as we know that today's we are going to have a virtual international conference on challenges and opportunities of education and rehabilitation of persons with various disabilities in post-COVID-19 era. So my paper and the topic of my presentation is social inclusion beyond the classroom, a paradigm shift from equal educational opportunity to educational acceptance. As we all know that much have been talked about that earlier I have just seen that Nazia ma'am has given a brief discussion about she has just quantified the ICT use of the technology use in the education. So her study was very comprehensive, we can say. So this paper generally it just deals with the connecting, moving a paradigm shift from quantifying the things with the core concept, the psychological effect which the persons with disabilities they just face in their lives. So this is something which is going to be a psychological approach of what kind of inclusion do these group need in real society. So, so first, before understanding that what is social inclusion, we must know that what is exclusion basically. So social exclusion describes a state in which individuals are unable to participate fully in economic, social, political, and cultural life. A lot has been done in providing opportunities to this group, but still there is a far way away कि हम इनको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी में मर्ज हो चुके हैं ये ग्रुप या इंक्लूड हो चुके हैं। तो एक्सक्लूजन को समझने के लिए हम इंक्लूजन को समझने के लिए हमें एक्सक्लूजन को पहले समझना पड़ेगा कि एक्सक्लूजन कई तरीके से हो सकता है, कई जगहों पे हो सकता है। In all countries, in nearly all countries, varying degrees, age, sex, disability, race, ethnicity, religion, migration status, social economic status, place of residence, and sexual orientation and gender identity के basis पे social exclusion को describe किया गया है। अगर हम बात करते हैं social inclusion की, now as we can see कि इन सारे पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का ग्रुप है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंक्लूजन डू वी नीड for this group? So inclusion as it has been defined, that is a process of improving the
terms of participation in the society, particularly for people who are disadvantaged through enhancing opportunities, access to resources, voice, and respect for rights. So, although this inclusion, social inclusion, has been a core aspiration of the 2030 agenda of UN, but conceptual and analytical work in this direction has not been available in public, and that's why we can say that social inclusion, जैसे World Bank ने इसे define किया है, that it is a process of improving the terms for individuals and groups to take participation in the society. So social exclusion or inclusion is also the important of UN concept, and in particular of the UN Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, which sets targets of to lift at least 20 million people out of poverty and social exclusion. So here I would like to highlight that current scenario as per the Right to Person with Disability Act 2016 क्या है? Since 2016 का जो Right to Person with Disability Act है, उसने enhance कर दिया है, उसने expand कर दिया है इस definition को, and included all these terms like cerebral palsy, dwarfism, muscular dystrophy, acid attack victims, and all these things have been added in the definition, in the so-called definition of this group. Now, apart from this, a major milestone in this direction is to add is to replace this word mental retardation by intellectual disability, and which is defined as a condition or characteristics by significant limitation both in the intellectual functioning and in the adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills, including specific learning disabilities and autism spectrum disorders. These 3 points highlights the extended conditions of Right to Person with Disability Act 2016. Reservations in educational opportunities are there for this group, that all government institution of higher education have to reserve at least 5% of seats for persons with benchmark disabilities, that is 40% of their disability nature. Reservation in employment opportunities are there, that 4% reservation for persons with benchmark disabilities has to be provided in post of all government establishments. Incentives उनको देना है, 5% reservation का incentives में भी है. Special employment exchanges भी person with disability के लिए set करने की बात कही गई है इस act में. Exemptions भी है, like road tax में exemption है, income tax में under 80U exemptions है इस एक group के लिए, GST है, insurance है. लेकिन अदर फैसिलिटीज भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि और भी अदर फैसिलिटीज हैं, जैसे एक्सेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स है, विद डिस्क्रिमिनेशन एंड बिल्डिंग कैंपसेस एंड वेरियस फैसिलिटीज आर टू बी मेड एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी. नेसेसरी स्कीम्स टाइमली इंट्रोड्यूस की जाती हैं बाय डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज एज वेल एज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू एम्पावर दिस ग्रुप. Awareness and sensitization programs are to be conducted and promoted regarding the person with disability. This is what has been highlighted during all these years. But what about to change the attitude of society towards person with disability? The purpose of this paper is to bring into focus that there is a need to change the societal perception, to change the attitude of the society towards person with disability. What government policies are there which are working in this direction? What are the government initiatives? What are the individual initiatives? What are the organizational initiatives by the profit making organization या non profit and जो non government organizations है, वो इस direction में कितना काम कर रहे हैं कि लोगों का attitude person with disabilities के लिए बदले. तो कोई इफेक्टिव पॉलिसी जब फ्रेम की जाएगी लोगों के एटीट्यूड को बदलने के लिए, तभी पूरी तरीके से इन्हें सोशल इंक्लूजन कहा जा सकता है. अदरवाइज एजुकेशनल इंक्लूजन, वहाँ पे रिजर्वेशन फिक्स कर देना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में रिजर्वेशन फिक्स कर देना, इट इज नॉट एनफ. ऑल्दो इट इज अ गुड थिंग, बट इट इज नॉट एनफ. नाउ we have to move a step ahead. हमें रिजर्वेशन के आगे की बात करनी चाहिए, हमें लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की बात करनी चाहिए, हमें सोसाइटी में, फैमिली में उनके इन्वॉल्वमेंट, उनके इंक्लूड होने की बात करनी चाहिए. So society right now, what kind of societal perception is there for these kind of group? तो sympathetic है लोगों का perception rather than empathetic.
इनको अभी भी वो फियर और पिटीनेस के तौर पे ही देखा जाता है। कॉम्पिटिटर्स हैं इनको, जहाँ पे आप रिजर्वेशन की बात करते हैं 3-4% जो अभी जो नए एक्ट में बात की गई कि 4% रिजर्वेशन है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके एडमिशंस के लिए, तो वहाँ पे इन्हें एज अ कॉम्पिटिटर्स देखा जाता है। कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस इज सोशल स्टिग्मा इन द माइंड ऑफ द आवर सोसाइटी मेंबर्स, कि वो सोशल स्टिग्मा अभी भी लिए हुए हैं कि दिस पीपल इज स्टैंडिंग ओवर हियर, इट मीन्स दैट इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द रिजर्वेशन which has been provided to this person. Unequal treatment by the society, lack of opportunities are there. There are number of things which cannot be accessed by this group. So this what government attempts are there in this direction. They just assume inferior. The society just assume this group as inferior in performing various life tasks. Still, आप कहीं पे भी अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो यहाँ पे अभी भी लोगों को इंफीरियर समझा जाता है। यहाँ पे अभी भी एक सो कॉल्ड नॉर्मल और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने से पहले सोचा जाता है। इनको रिज्यूम उनको अपीयर होने का चांस ही नहीं मिलता है। तो ये जो इंफीरियरिटी जो लाइफ स्किल्स के टास्क हैं, चाहे वो आपके किचन से लेके खाना बनाने का, नहीं इसको रहने दो हम कर देंगे, तो वो जो एक इंफीरियर समझा जाता है ये नहीं कर पाएगा, ये वाली चीजें अभी भी समाज में हैं और बहुत अंदर तक ये इनकलकेटेड है, बहुत अंदर तक दबी हुई हैं ये सारी चीजें। इसको लेकर गवर्नमेंट जी सर Please conclude. We are running out of time. ओके सर। तो इसको लेके अभी भी चीजें हैं जो बात करने के लिए हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है ऐसे लोगों में, देखा जाता है एज दे जस्ट यूज टू सी देमसेल्फ, उनके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी देखी जाती है। अपने आप को भी अपने नियर बाय पीपल के नजरिए से, परसेप्शन से वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन फैमिली कंसीडर्स देम एज एन एक्स्ट्रा बर्डन एंड ओवरशैडोइंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ग्रुप ओनली एंड ओनली ड्यू टू द डिसेबिलिटी विच दे आर हैविंग। तो सेल्फ स्टीम की जैसे भी बात करी कि ऐसे लोगों में सेल्फ स्टीम की कमी देखी जा सकती है। तो इसकी वजह से अब आप इनके सेल्फ स्टीम को रीबिल्ड करने के लिए, इनके कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने के लिए किस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है और वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं और उनका क्या टाइमली इवैल्यूएशन हो रहा है। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंड the thing is that finally I would like to come to my last slide, that some suggestive measures. So for this I would like to suggest that of timely counseling of family persons, which include counseling of parents, siblings, grandparents, spouse, children and in-laws too, as marriage is also one of the important aspect to live a healthy and social life. So ये इन सारी चीजों को लेके गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, अभी भी बिल्कुल लैकिंग देखी गई है काफी जगहों पे। काउंसलिंग एम्प्लॉयर की, को वर्कर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वर्क प्लेस पे, उनकी काउंसलिंग के लिए स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट। काउंसलिंग टीचर्स और स्टूडेंट्स की भी हो सकती है टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस ग्रुप एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ these kind of persons, and awareness and community counseling programs can also be run at a larger scale to sensitize the general public to the masses in this direction. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for your excellent talk on this particular topic. Right now, I want to call Dr. Dhaval Modi. धवल मोदी का हो गया। धवल मोदी का ऐश्वर्या परमार ने प्रेजेंट किया है। धवल मोदी का ऐश्वर्या परमार ने प्रेजेंट कर दिया है। ओके, इसके पहले ISL इंजीनियर। नेक्स्ट ISL इंजीनियर। सर उन्हीं के में थे, वो उन्हीं के को ऑथर थे वो लोग। अभी सर ये हमारा सुदीप्ता चक्रवर्ती का है, सुदीप्ता चक्रवर्ती एंड स्वीटी। ओके, सुदीप्ता चक्रवर्ती। सुदीप्ता चक्रवर्ती प्लीज। सर मे बी सुदीप्ता चक्रवर्ती, आर यू देयर? इज सीड एब्सेंट। ओके, सुप्रिया दास इज देयर? सुप्रिया दास। सर इन लोगों का हो चुका है ये। It's all done together. We were 5 co-authors, so okay. It's done. Yeah. Okay. Anybody else?
सर स्वीटी एंड सुदीप्ता चक्रवर्ती का रह गया है, बट स्वीटी एंड सुदीप्ता चक्रवर्ती Sweetie दिख sir. नहीं रहे। हाँ Sweetie स्वीटी, sir. आप प्रेजेंट करो, अपना पोस्टर प्रेजेंट करो। Sweetie there, Okay, Sweetie. okay. Yes, yes, sir. Yes, go ahead. This is Sweetie, and I have completed. Within 5 minutes, conclude Okay, talk. okay, sir. Okay, Okay. okay, sir. Hello, good afternoon, everyone. This is Sweetie, and I have completed my special B.Ed in Learning Disability. And today, my topic is empowering students with disabilities in post-COVID-19 crisis. Okay, first of all, empowerment has been claimed as one of the most important benefit of children participation. It consists of mainly three factors like attitude, capability, and conditions. Attitude, like to recognize our ability to feel we taking action, influencing our outcomes, high self-esteem, and face challenges. And in the capability, ability to do something like from own experience or from others' experience. And there are conditions and opportunities. We are able to find our opportunities ourselves. We know that each child with disability is unique, and parents need to be made aware about the causes of disability, its various types, and their needs. इन द अगर नॉर्मली अगर हम बोले तो डिसेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो पेरेंट्स का होता है. दे आर द सपोर्ट सर्विस. दे प्रोवाइड पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स. ठीक है. देयर आर सम की फैक्टर्स लाइक इन द 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन there are more than 1 billion people live with disabilities, and 2 to 4% find day-to-day life challenges. Disability is more prevalent in low and middle income countries. Disability is affected by the internet accesses, and online based high technique approach is not always ideal for creating an inclusive learning environment. The other factor is there is an inadequate educational support due to pandemic 19. There are some educational needs where for COVID, their educational need for students with COVID-19. Like high online and high based techniques, learning platform, and resources needed to be available, and all students need must be accommodated in order for government school and teachers to ensure that learners are not left behind during school closures. There are some barriers like less help and inadequate trained teachers, more time and access, and disabled students don't play with their friends. They don't socially interact, and the other is they lose access to school meals, which are equally important for developing and learning. Some other barriers like ICT skills and knowledge, they are unprepared. There are some teachers who lack professional IT skills. They are unprepared to teach online and cannot ensure student engagement, specifically the students with disability. There are some addressing barriers to education and relevant resources like assessing accommodation, modifying curriculum and instructions. Due to pandemic, a special educator can ensure that कि वो curriculum इस टाइप का बनाए कि जिसे special child बहुत अच्छे से समझ सके. लाइक वो पिक्चर्स का यूज कर सकता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग कर सकता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकता है. And UDL, third UDL, Universal Design of Learning. UDL aims to help teachers reach a wide variety of students, focusing on how students learn and demonstrate knowledge. And the other method is implementing project-based method. This method is used for spatial as well as general learning. And the next is individualized education program, IEP. IEP requires that educators, students, parents, and family work together to decide on an effectiveness of a remote learning setting and how to best proceed with each student education. Support teachers, it is important to provide teacher with guidance and relevant evidence-based resources on how to deliver lesson in remote and online setting in the special education. Providing family and caregiver support. Systematic approach are necessary to help parents and caregivers with both their domestic responsibilities and student education. And
It is collectively responsibility of government, teacher, parent and caregiver to help reduce educational inequality for students with disabilities, especially during a time of crisis like COVID-19 virus. In order to ensure that systematic long-term solutions are provided, all factors that affect access to education, including policy, legislation, financing, human resources, and data, must be explored. And as a special educator or resource person, our aim is leave no one left behind. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, Nihar sir. Thank you, sweetie. Thank you, sir. Over to Dr. Neeraj Shukla sir. सर नीरज शुक्ला की जगह मैं हूँ नीरज तिवारी। शुक्ला सर आज थोड़ा उनके यहाँ प्रॉब्लम है तो वो आ नहीं सके हैं प्लेटफॉर्म पर। Okay, I'll conclude now. यस सर, आप कंक्लूड करें सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पॉल सर को भी सर आप इनवाइट कर लें आप भी, और इसका कंक्लूजन करके सर फिर किसी का क्वेश्चन हो तो उसका सर उसका समाधान कर लें। ओके सर, थैंक यू। Dr. Paul, sorry, Professor Paul, he has very insightful lecture today. Discuss about blindness. He said that black is beautiful, black is blind. He said that we have the excellent perception of the blindness, and it is with respect to the museum of blindness. He moreover touched upon the focus, that is the problems, that the solution, the management, good communication, and in each and every aspect that there must be the solution. He in that particular point of view, he said that we have the home of disability. In each and every problems, then there must be a solution. He given examples of successful story of the blind, and in that particular respect, he said that ability, it is not the disability. He said he defined disability in terms that we all are the disabled in one way or the other. He said that disability is the mother of invention. If there is problem, we have to find out the solution. And in the society that we have the problems because most of the people find that blindness is a problem. But if we said that if one particular problem is there, then the problem have to be found out and the solution must be had. So we have to accept the blindness. It is not a problem, it is the solution. On that particular aspect, he also said that we have to respect each and everyone. There is inequality in the world. So equality must be enhanced with respect to each and every individual. Moreover, the whole over the world, that we have to self that I am the self-made man. It is not the clear concept, but we have to grow together. He said we have to grow together. We have the more challenges, that this particular challenges need to be solved, whether we are disabled or not disabled, but we have the challenge. That particular challenge has to be complete out with respect to each and everywhere. That he presented an example of Hong Kong, where blindness has been perfectly switched on, and each and every facility that we are find out in the Hong Kong, the most important country in our world. Then he discussed about the empowerment of the people, the way we want to communicate ourselves. If we have time, if we wanted to have some problems, then that problems has to be solved. Then with respect to our presenters, the first presenter was Silpi Raj. She was from Central University, Ranchi, Jharkhand. He discussed on the topic inclusive education post COVID-19 response and resilience. She discussed about the schooling. She discussed about the learner deficit, the scope, the growing inclusion. Then her the focus paper was emerging education needs and barriers. It discussed on the issues and themes, the relief phase, the recovery phase, and the resilience phase. The
inclusive education is the financing. The most problem is that finance. How in our country, how much money that we are having, so that we can have a good society. We are having such a powerful method to include each and every individual. Then the next presenter was Najia Ali from Jamia Hamdard. Her topic was perception of online school teaching. She mostly pointed out her concept was database research, and he discussed about the work from home, how the online classes and the inclusive school happened to be throughout the state, and he did her concept from the Delhi, South Delhi, and her result was that 90% of the online classes that happens to be in the online mode, wherever 70% of the students they know computer before, and but with respect to the mobile concept and the computer concept, if each and every individual should have laptop or desktop, they might understand the subject matter, or we can say that if there is a cluster of the computer that may be available with respect to each and every parents, so that the misuse of the misuse of the personal mobile phone may not be happen. The third participants, it was Ashwad and others. She had the case study to assess the efficacy of Spedothon program on the learning outcomes for children with the special needs. She discussed about this particular concept. And the fourth one was Dr. Saba Anis. Her topic was challenges and opportunities of education and rehabilitation of persons with various disabilities and in the post-COVID area. He discussed with respect to the social inclusion and exclusion, highlighted the current scenario with respect to RPWD Act 2016, with respect to the policy change that need to be happens to the society with respect to PWD and social perception. In the last, Dr. Sweetie presented her topic very well. So I thank to all the participants for a very insightful discussion on the topic. And over to Dr. Neeraj. Yes, Dr. Neeraj. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी अनामिका थी कि कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, Nihar sir and Paul sir will resolve your problem or your questions solution. Any question from participants? Anamika, are you clear? Any question for participants to the presenters? We have Dr. Silpi Raj, Najia Ali, Aishwarya, Savanis, and Sweetie, the 5 presenters. If any participants have any questions to these presenters, please go ahead. Maybe Anamika, are you there? Anamika? Anamika. Your slide is showing, but your video is... Anamika, are you there? Sir, maybe all questions, answers. Okay. So we are not finding any questions for this session. So right now, I thank all the participants, or especially I thanks to our chief guest, chief speaker, Professor Paul. I thank all the participants to have beautiful presentation today. सर अब हमें लगता है कि अगर इनके पास एक हो सकता है कि कोई प्रश्न का इनके पास न हो, सभी प्रश्नों का आंसर इनको मिल चुका हो पार्टिसिपेंट्स को, तो इस वजह से हमें नहीं लगता कि कोई प्रश्न है किसी के पास। तो अभी कुछ देर का हम लोग ब्रेक कर दें क्या सर? फिर 3:35 से इन लोगों का
सीआरआर पॉइंट्स का इन लोगों के पास सीआरआर यस पॉइंट्स यस का यस वो सेशन चलना है ना? ठीक तो है अभी ठीक है। कुछ देर का ब्रेक कर देते हैं, फिर मिलते हैं 3:35 पे सर। जी ओके सर। ओके 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 जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो रिक्वेस्टिंग टू मच। ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर आप आए को शेयर के लिए ये बहुत बहुत हमारा सौभाग्य का विषय रहा। और सर हम चाहेंगे कि आगे भी जब भी प्रोग्राम होगा तो हम आपको सर कांटेक्ट में रहेंगे। सर आपका नंबर मेरे पास से मिस हो गया है, वो कोई बात नहीं, नंबर मैं भेज दूंगा। सर आप भेज देना सर, वो नंबर मिस हो गया। मैंने शर्मा सर से अभी अभी बोला कि नंबर, लेकिन शर्मा सर ने अभी उसको व्हाट्सअप देखा नहीं उन्होंने। तो आप हमें भेज दीजिएगा सर, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा शर्मा सर से या फिर किसी के थ्रू। मैं आप मुझे चाहे कांटेक्ट, मैं आप किसी ओके भी ओके तरह। ओके, ओके थैंक सर, यू सो फिर कल मच। मिलते हैं। अभी आज का ब्रेक करके अभी थोड़ी 3:35 पे 3:35 पे अभी इन लोगों का फिर ओके, सर आई विल बी देयर, सेशन। आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। ओके सर, ओके, नमस्कार सभी थैंक यू को। सो मच। सभी अपना डिस्कनेक्ट कर दें, लिंक यही रहेगा 3:35 पे, फिर जुड़ जाएंगे आधे घंटे बाद। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
Isa ma'am, welcome. जी सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है मैम, तब तक सुनाई दे रहा है मैं जी। धीरे धीरे जी, सबको ऐड करता हूँ। जी अभी सब बिल्कुल ऐड सर। हो जाएंगे, जी फिर जी स्टार्ट आएंगे। आपको थोड़ा टाइम लग जी जाएगा जी, ऐड बस होने में, बता धीरे धीरे दीजिए। सब ऐड होंगे। नो प्रॉब्लम सर, हम यहीं पे वेट कर ले रहे हैं। जी। ओके, थैंक यू मैडम। पहले मीटिंग है तो पहले वो सब में
सर आवाज नहीं आ रही है। अभी स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को ऐड किया जा रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, मुझे लगा कि मेरे पास ही आवाज नहीं आ रही। ना 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 ना, अभी ओके। हो रहे हैं, सभी ऐड हो रहे हैं, जी स्टार्ट जी होने जी वाला है। ठीक। जी जी, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Are we supposed to type the CRR number in the chat box? No, no need. Okay. ईशा मैम। जी सर। मुझे लगता है कि शुरू कर ही देना चाहिए, जी सर ज्यादा देर बिल्कुल। करें, है ना? जी जितना जी होगा कम से कम आपको टाइम मिल जाएगा इन लोगों से इंटरेक्शन करने का, थोड़ा जी पहले ही बिल्कुल शुरू सर। कर देंगे तो। जी जी तो लेट्स स्टार्ट मैम। मैम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जी इंट्रोडक्शन, बिल्कुल। और फिर स्टार्ट कर दें। पीपीटी आपको मैम उधर से प्रेजेंट करना है कि इधर से देंगी हम करने के लिए हमें? नहीं सर, हम आप प्रेजेंट कर लेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, जी। थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सर हम खुद ही इंट्रोड्यूस कर लें अपने आप को। या मैम श्योर, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बिल्कुल चाहिए भी, इंट्रोडक्शन तो देना ही चाहिए। आज जितना आदमी स्वयं से इंट्रोडक्शन देता है वो बढ़िया होता है, दूसरा क्या दे पाएगा, तो जी आदमी को स्वयं ही देना चाहिए। तो फिर भी चाहेंगे कि आप इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सो हमारा नाम ईशा है, ईशा सिंह, और हम प्रोफेशन से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। 15 से 20 साल हो गया है प्रोफेशन में। जी, ये इतने पुराने हैं हम और इतने ओल्ड हैं। हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक में काम करते हैं, दैट इज अनन्या चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक, विच इज बेस्ड इन हैदराबाद। It has few branches all over India. And हम मार्शल यूनिवर्सिटी में कुछ दिन काम किए थे, दैट इज बेस्ड इन यूएसए। मार्शल यूनिवर्सिटी में ऑटिज्म सेंटर में हमने काम किया है। सो जैसा कि हम बताएं कि अनन्या चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर स्पेशल नीड्स के बच्चों को करते हैं केटर। सारे स्पेशल नीड्स के बच्चे, राइट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, या ऑटिज्म हो, या लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या एडीएचडी हो, या सिंपल डेवलपमेंटल डिले हो। जैसे कि आज ही एक बच्चा देखा है 4 साल का, और वो हाई फंक्शनिंग एएसडी है। सो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी देख रहे हैं आजकल हम लोग काफी। सो उस सारे बच्चों का थेरेपी यहाँ पे होता है, डायग्नोसिस के बाद थेरेपी होता है। जब नीरज सर ने कहा कि स्पेशल एजुकेशन के बारे में और कोविड-19 है, तो दिस इज अ वेरी क्लोज टॉपिक टू मी, क्लोज एट हार्ट, इन द सेंस दैट कि हम लोग बहुत ज्यादा पिछले 2 साल में बच्चे, स्पेशल नीड्स के बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज्यादा। वो 1-to-1 थेरेपी के लिए आते थे, उनके लिए एक रूटीन बन गया था ये चीज, थेरेपी के लिए आना, 45 मिनट्स 2 घंटा बिताना, थेरेपिस्ट के साथ रैपो बनाना। आप लोग जिन्होंने में भी काम किया हो स्पेशल नीड्स के साथ, आप लोगों को ये मालूम होगा कि कितना डिफिकल्ट होता है उन बच्चों के लिए एक रूटीन बनाना, अपने लिए एक रूटीन जो कि एवरी डे का हो, उससे कंफर्टेबल होना, थेरेपिस्ट के साथ कंफर्टेबल होना जो कि एक स्ट्रेंजर है। 2 से 3 हफ्ता लग जाता है वो लोग को सेटल करने में। कोविड के चलते ये सारा रूटीन अचानक से ही सारा बंद हो गया। वन फाइन डे इट जस्ट क्लोज डाउन, राइट? जैसे कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हम बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स को हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान फाइनेंशियली हुआ है नुकसान। बट इन बच्चों को, स्पेशल नीड्स के बच्चों को जो नुकसान हुआ है, तो वो बस पेरेंट्स या थेरेपिस्ट ही समझ सकते हैं, प्रोफेशनली ही समझ सकते हैं। क्योंकि एक रूटीन बनने के बाद बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट डे सेंटर क्यों नहीं जा पा रहा है। Why is he or she not following the same routine that he or she has been following for 6 to 8 months now, or a year or more than that, right? इसलिए वो लोग को समझाना ये चीज कि भाई आप कल से सेंटर नहीं जा सकते हैं, that was a very very difficult task, both for the parent and for the therapist. Fortunately, क्योंकि इतना रिसोर्सेज है हम लोग के पास, और इंडिया में तो किसी भी चीज का होता है ना, जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। तो आई मीन ओवरनाइट पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन चला गया।
ऑनलाइन जाने की वजह से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि कम से कम बच्चे हम लोग को देख सकते थे। सेम, आई मीन इट्स नॉट द सेम थिंग एज एन एनवायरनमेंट, लेकिन एक जैसा महसूस करना कि हाँ थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, राइट, रूटीन, वो थोड़ा सा उनके लाइफ में वापस आया। और फिर धीरे 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 करके ऑनलाइन थेरेपी शुरू हुआ। बट इट हैज बीन अ वेरी 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 स्ट्रगलिंग फेज। राठौर जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। आई मीन अभी लेक्चर चल रहा है, तो इफ यू डोंट माइंड सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ रखें भाई। जी, थैंक यू सो मच Please. सर, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता है। आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठते हैं, तो आप लोगों को इतना बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो प्लीज अपना वीडियो तो ऑफ कर लीजिए। अजय कुमार प्रजापति, प्लीज ऑफ योर वीडियो। जी, तो अब चलते हैं और इस प्रेजेंटेशन में, और नीरज सर ने जैसे बहुत अच्छा से लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि क्योंकि हम डेवलपमेंट सेंटर में काम करते हैं, तो लाइव बच्चों का जैसे थेरेपी हम लोग करते हैं, वो दिखाने से एक डिफरेंट लर्निंग होता है। तो इस प्रेजेंटेशन में भी आई हैव गॉट सम वीडियो जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन थेरेपी कर रहे हैं बच्चों के साथ। वो बस एजुकेशनल पर्पसेस से है, एंड द कॉपीराइट इज विद अनन्या सीडीसी। और बच्चों का फोटो वोटो ना लें तो ज्यादा अच्छा है, प्राइवेसी इश्यूज रहता है, राइट, सू कर देंगे पेरेंट्स, आप लोग को भी हम लोग को भी टाइप्स। सो केयरफुल रहें उस चीज के लिए। सो फॉर दैट आई जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो, डू द प्रेजेंटेशन एंड देन टेक क्वेश्चन आंसर्स। तो अपना क्वेश्चंस कहीं कुछ हो तो लास्ट 15 मिनट के लिए रिजर्व कर लें, प्रेजेंटेशन के बाद हम ले लेंगे। राठौर शिव कुमार, प्लीज ऑफ योर वीडियो यार। हेलो राठौर शिव कुमार, आप अपना वीडियो ऑफ करिए। माय डियर राठौर शिव कुमार। Yes, sir. Yes. Okay. जी सर। तो स्पेशल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड कोविड-19, जैसा कि हम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है इन बच्चों के लिए, खास करके वो ऑटिज्म के बच्चे हों, हाई फंक्शनिंग के बच्चे हों, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के बच्चे हों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हों, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सिंपल डेवलपमेंटल डिले हो, स्टैंडर्ड ऑटिज्म हो। आप जो भी बच्चा स्पेशल नीड्स के अंदर आता है और उसका स्पेशल एजुकेशन चल रहा था, उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये 2 साल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। So let's go a little bit towards what difficulty they have found and how to cope up with them. How to support the children in online classes? सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम लोग ऑनलाइन गए तो हम लोग को ये समझ में ही नहीं आया कि हम लोग कैसे थेरेपी करवाएं। बच्चों को तो सामने हम लोग जब बैठते हैं बच्चों से तो एक्सरसाइज करते हैं, हाथ से लिखवाते हैं, स्पेशल एजुकेशन में खास करके रीडिंग करवाते हैं। ऑनलाइन जब बच्चा सामने सिर्फ देख पा रहा है, ना उसका हम हाथ पकड़ पा रहे हैं, ना रो रहा है तो उसको गोदी में ले पा रहे हैं, ना उसको खिला पा रहे हैं, भाई ऑनलाइन सपोर्ट करें तो कैसे करें सपोर्ट, राइट। असेसमेंट्स में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था। 5 मिनट बच्चा, 10 मिनट बच्चा सामने रहता है, फिर चला जाता है। उसके बाद मदर को, फादर को रिक्वेस्ट करें कि वीडियो भेजें, आप वीडियो भेजें तो सिम्टम्स देखें हम लोग, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा था। फिर पता चला कि हमने पता क्या चला, फिर देन वी फिगर्ड इट आउट, कि हम लोग शीट्स के साथ, आंसर शीट्स होते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि पेरेंट्स कैसे हम लोग के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और फैमिली मेंबर्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन धीरे धीरे, आई वुड बी वेरी ट्रूथफुल टू यू कि पहला सेशन या सेकेंड सेशन ही हम लोग का परफेक्ट नहीं गया, right? Second session, third session, fourth session, with a collaboration of the parents and the therapist, right? वो दोनों के collaboration के साथ अब ये है कि हम लोग maximum to maximum numbers online classes, online therapy कर पाते हैं। So next हम एक वीडियो दिखा रहे हैं छोटा सा, जहाँ पे ये हाई फंक्शनिंग ASD का बच्चा है, वो वर्बल है बच्चा, थोड़ा सा हाई फंक्शनिंग ASD, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे दें। हाई फंक्शनिंग ASD का 3 क्राइटेरिया होता है। कार्स चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल में हाई फंक्शनिंग ASD का एक अलग से स्केल है, उसमें 3 क्राइटेरिया दिया रहता है कि बच्चा बिल्कुल वर्बल होता है, मतलब वर्बली फ्लुएंट होता है, स्पीच डेफिसिट्स नहीं होता है, वर्बली कम्युनिकेट कर सकता है, IQ उसका 80 से ऊपर होता है और 6 साल से ऊपर होना चाहिए उस बच्चे को। तो ये बच्चा हाई फंक्शनिंग ASD से डायग्नोस्ड है। हमारी थेरेपिस्ट इनके साथ एक एंगर मैनेजमेंट पे
राइट, वो वर्क कर रही हैं. This is a worksheet, my anger triggers का. I'll just show you for a few minutes. 4 color pencils. Blue, that is for calm. For 1 and 8, you can take green. For 3 and 4, you can take yellow. 3, 4, 5 is yellow. I'm gonna take blue for frustrating and calm. No, frustrated will have yellow. Yes, I'm gonna take. Frustrated will have yellow. Okay. Angry will have orange, and furious will have red. Yes. Yellow and green for frustrated. No, frustrated will have only one color, that is yellow. For anger, it's orange. राइट, जैसा कि आपने देखा हमारी थेरेपिस्ट को बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन, राइट, एक ही टोन में रिपीट करना पड़ रहा है. ASD का बच्चा है, इसलिए ऐसे भी रेपिटेटिव हर सी बिहेवियर्स रहता है, एंड ही वांट्स टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन, अपने तरीके से करना, अपना कलर्स चूज करना. और स्पेशल एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है ADLs, एवरीडे एक्टिविटी, ऑल डे एक्टिविटीज सिखाना. तो इसको इमोशंस अपना सिखा रहे हैं हम लोग, किस तरीके से अपना इमोशंस, अपना जब वो काम रहता है या कब जब वो एंग्री होता है, खास करके किस ट्रिगर्स पे वो एंग्री होता है, क्या फील करता है, वो चीज हम लोग सिखा रहे हैं. और किस तरीके से एक्सप्रेस करें, राइट, एक्सप्रेशन की हम, हाँ अभी आई एम फीलिंग एंगर, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट लाइक दिस, दिस इज नॉट ओके. ये चीज हम लोग इस वर्कशीट के साथ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं इस बच्चे को. इट इज डेफिनेटली अ वर्क इन प्रोग्रेस. वो एक दिन में या 2 सेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है. मल्टीपल टाइम्स ये वर्कशीट्स हम लोग को करना पड़ता है, डिफरेंट वेज में करना पड़ता है इस सारे वर्कशीट्स, राइट. सो ये चीज एक सिखा रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट आया क्वेश्चन कि डू पेरेंट्स हैव अ रोल इन ऑनलाइन क्लासेस. जैसे थेरेपी के लिए बच्चे आते हैं तो वी प्रिफर कि बच्चा हम लोग के पास आए और पेरेंट्स जनरली नीचे वेटिंग एरिया में वेट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को देख के बच्चे और थोड़ा सा टेम्पर टैंट्रम्स शो करते हैं, थोड़ा सा और रिजिड हो जाते हैं, थोड़ा सा रोने लगते हैं. मदर्स खास करके साथ में रहती हैं तो रोते हुए बच्चे को, उनको लगता है कि ठीक है अभी करने का जरूरत नहीं है, बाद में कर लेते हैं. मदरली इंस्टिंक्ट्स आ जाता है. बट वो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं एक्चुअली, और बच्चे ये बात समझते हैं कि पेरेंट्स साथ में रहेंगे तो रोएंगे तो हम थेरेपी से निकल जाएंगे. थेरेपी किसी भी काइंड का हो, राइट, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, हाथ से पकड़ के हो, या सिंपल एक्सरसाइजेस हो, बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड. नो चाइल्ड लाइक्स इट. किसी भी बच्चे का, वो स्पेशल नीड्स का हो या टिपिकली डेवलपिंग हो, क्लासरूम में बैठना, कुछ सीखना स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल पसंद नहीं आता है. इसीलिए ये बच्चे भी जब पेरेंट्स साथ में रहते हैं थेरेपी में, 1-to-1 थेरेपी में, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स नीचे बैठे रहें, ऊपर ना रहें जब हम लोग थेरेपी कर रहे होते हैं. बट ऑनलाइन में क्योंकि बच्चे ये बहुत छोटे हैं, बहुत सारे बच्चे 5 इयर्स से बिलो रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो 5 इयर्स से अबव भी हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डायग्नोस्ड हैं, राइट. वो लोग लैपटॉप नहीं वर्कआउट कर सकते हैं, और आजकल का लैपटॉप तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है ऑनेस्टली. तो लैपटॉप के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं. मोबाइल फोन्स को हम लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन्स नहीं बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है, इसलिए मोबाइल फोन हाथ में भी नहीं छोड़ सकते हैं. ऐसा एरिया भी होना चाहिए जहाँ पे वो बच्चे थोड़ा सा मूव कर सकें, कहीं फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, राइट, वो सारे चीज के लिए. सो द क्वेश्चन केम फॉर अस दैट कि पेरेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करें या ना करें पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में. उसका प्रो ये था कि पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चा कहीं नोटिस नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा ज्यादा रिजिड हो रहा है, या तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उस साइड देयर इज समबडी हु इज इन आवर सपोर्ट टू हेल्प द चाइल्ड लिटरली. तो इसीलिए पेरेंट्स का इसका कौन ये था कि कहीं मदर्स या पेरेंट्स, फादर्स, दोनों भी कहीं को हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है वो लोग को जो हम लोग थेरेपी कर रहे हैं, तो वो लोग क्वेश्चन करना बहुत शुरू कर जाते हैं, ये क्यों सिखाया जा रहा है, ये कैसे इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, राइट. दिस इज नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, सो दिस इज नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द पेरेंट, लेकिन हम लोग सब लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं. और गूगल इज द न्यू गॉड
कुछ भी हम लोग सिखाते हैं सबसे पहले गूगल पे टाइप होता है, मैम लेकिन गूगल तो ये बात नहीं कह रहा है। अरे मैम गूगल नहीं कह रहा है तो हम इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, हमारा एजुकेशन ये कहता है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक नेक्स्ट जो दिखा रहे हैं बच्चे को, वो बच्चा डाउन सिंड्रोम से डायग्नोस्ड है, राइट, और उसकी मदर उसके साथ काम कर रही हैं यहाँ पे। One, two, three, and jump. Okay, again, let's do it. ये हमारी दूसरी थेरेपिस्ट है। One, चलो, हो गया मेरी। One, this order. 1, 2, 3, jump. Very good. Again, one more jump. One more jump. So put it down. We're on the yellow block. Good. Properly. Very good. Now go back. One. Jump. Then jump. Then white. Do it. Then jump. Jump. You can do it the way. Nothing will happen. It's okay. Nothing will happen. You will not fall. You bend and jump. Nothing will happen. Do it. Bend. Good job. Bend your knees. Right. ये पूरा सेशन Bend your knees and. राइट, ये पूरा सेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रहता है, राइट। 45 मिनट्स मदर इस बच्चे की खास करके वो पूरा टाइम कोऑपरेट करके बैठती हैं साथ में और हेल्प आउट करती हैं हम लोग को, क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटीज है जो कि डायरेक्टली हम लोग बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस, राइट। हाथ पकड़ कर नहीं सिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके पूरा नहीं दिखा सकते हैं, करके नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं इन सर्टन केसेस कि मदर्स, पेरेंट्स या कोई भी एजुकेटेड जो हो आसपास जो कर सकते हो, फिजिकली एक्टिव हो, वो साथ में बैठें, उनको हम लोग सिखाएं और वो लोग हेल्प करें बच्चों को करने में, जिस तरीके से ये मदद कर रही है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर सच पेरेंट्स कंप्लीटली, राइट। ओके, नीड फॉर पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने में प्रो भी है और कॉन भी रहता है, राइट। प्रो ये रहता है कि हम लोग को हेल्प मिल जाता है, कौन ये रहता है कि बहुत सारे हम लोग को क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं, व्हिच ऑफ कोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड दे हैव अ राइट टू नो अबाउट देयर चाइल्ड, बट स्टिल। सो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को खास करके सबसे पहले कि बताएं हम लोग कि भाई ऑनलाइन कहीं हम लोग ये वाला वर्कशीट्स करने का कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस करने का कोशिश कर रहे हैं, ये एडीएल एक्टिविटीज सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, राइट। ये पहले से कहीं हम लोग पेरेंट्स से बात करके, पेरेंट्स से मीटिंग करके बताते हैं, वो लोग को समझाते हैं एंड take them on our side. They understand very well. At the end of the day, both of us want that it helps the child, it helps their child completely. So agenda, goal हम लोग दोनों का, पेरेंट का भी और टीचर का एक ही होता है. So it's better to communicate with the parent. पेरेंट को समझाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग करना चाह रहे हैं, ये गोल है, ये कुछ सेशंस में हम लोग ट्राई करके देखते हैं. And all of us at Ananya especially are very honestly telling the parent कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अब नहीं हुआ तो हम लोग चेंज करेंगे एक्टिविटी डेफिनेटली, बट एटलीस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई. हम लोग में से कोई ऐसा नहीं है आज तक जो प्रॉमिस किया हो कि नहीं ये तो हम लोग क्योर कर ही देंगे, ऑटिज्म तो खत्म हो ही जाएगा, हम लोग पूरा चीज सिखाई देंगे, सारा एक्टिविटीज सिखाई ही देंगे, बस 10 सेशन हम लोग को दे दीजिए. ऐसा हम लोग में से कोई आज तक नहीं कहा है. We always tell the parents कि we are going to try this activity with your child. If the child cooperates, right, and if the child shares, if the child is able to do it, then definitely the results are going to be very, very good. So that need for parent and teacher collaboration is a must, especially when we are doing an online session. बिना parent के collaboration के कोई भी activity, कोई भी therapy sessions बिल्कुल भी successful नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. क्रिएटिंग सोशल अपॉर्चुनिटीज. कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ था कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे. बहुत सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, बहुत लोग इंडिविजुअल फैमिलीज में रहते हैं, सिर्फ एडल्ट्स हैं अगल बगल, बहुत लोग के बहुत छोटे बच्चे हैं, या तो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है बच्चों में, और सिबलिंग राइवलरी तो सारे ही बच्चों में होता है, वो स्पेशल नीड्स हो या टिपिकली ग्रोइंग हो. आज तक हमारी बहन से हमारा झगड़ा होता है, सो सिबलिंग राइवलरी तो हमेशा ही होता रहता है.
So इस सब चीज के कारण बच्चों को सोशल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि क्रिएटिंग सोशल अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि आप लॉकडाउन भी हो तो भी आप नीचे पार्क में ले जाएं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपने बिल्डिंग में, अपने सर्कल में, या अपने कजन्स के साथ या अपने बच्चों के साथ, दो ही सही, अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ छोटा सा पार्टी, कुछ ऐसा सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशन, गेट टुगेदर प्लान करना चाहिए जहां पे उन बच्चों को इंटरैक्ट करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। कहीं अपने फ्लोर पे ही, फॉर एग्जांपल 4 फ्लैट्स है उसमें ही सही। यहाँ पे इनफैक्ट अनन्या में हम लोग जैसे खुलना थोड़ा बहुत शुरू हुआ था और ऑनलाइन सेशंस ले भी रहे थे हम लोग, तो उन ऑनलाइन सेशंस के बच्चों के लिए स्पेशली राइट एक छोटा सा गेट टुगेदर कर देते थे, राइट, लाइक अ ग्रुप सेशंस। आपको नेक्स्ट पिक्चर उन्हीं का है, राइट। ये ग्रुप सेशन ऑफ आर्ट एक्टिविटीज ही हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ उसको लिखाना पढ़ाना वैसा कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बट ये सारे बच्चे ऑनलाइन थेरेपी के लिए आते हैं। तो 15 दिन में, 2 हफ्ता में एक बार ये लोग को बुला के एक छोटा सा ग्रुप सेशन हम लोग कर देते हैं कि दे वुड अंडरस्टैंड, दे वुड नो हाउ टू मीट अदर चिल्ड्रन, दे वुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, टू टॉक टू अदर चिल्ड्रन, to be with other children, to play with other children. तो ये social opportunities in given this situation, जो situation है हमारे आसपास, वो बहुत ही ज़्यादा important है। खास करके students and children with ASD, autism spectrum disorder, वो high functioning हो या standard हो, social relationship, social emotional relationships, वो लोग का communication बहुत ही ज़्यादा deficits होता है उसमें। I'm sorry. राइट, बहुत ज्यादा डेफिसिट्स होता है। इसी के चलते ये ग्रुप एक्टिविटीज, ये सोशल सिचुएशन में ग्रुप एक्टिविटीज बिकम वेरी वेरी एसेंशियल, कि थोड़ा सा ये लोग को प्रैक्टिस मिले, थोड़ा सा बाहर निकले और बच्चों के साथ खेलना, उठना, बैठना, कैसे बात करते हैं, कैसे ग्रुप गेम्स खेलते हैं, कैसे बोर्ड गेम्स खेलते हैं, कैसे टर्न टेकिंग करते हैं, राइट, ऑल दीज थिंग्स ये करना सीखें बच्चे। इसीलिए सोशल अपॉर्चुनिटीज अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स का और सेंटर्स लाइक अनन्या इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस कि ऐसा एक्टिविटी हम लोग क्रिएट करें बच्चों के लिए। Loneliness has become a huge problem in COVID-19, in the lockdown especially. और आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि सिर्फ एडल्ट्स लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से सफर नहीं किए, बच्चे भी लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से सफर किए हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि दे हैव नॉट बीन एबल टू कम्युनिकेट इट टू अस। दे शो इन देयर बिहेवियर, राइट, अग्रेसिव हो जाते हैं, मारते हैं, थोड़ा सा बाइटिंग आ जाता है, या टेम्पर ट्रांसफर्स आ जाता है, या हेड बैंगिंग आ जाता है, बट बिहेवियरली निकालते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। राइट, ट्रांजिशन टू स्कूल। जो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन करते हैं स्कूल में, वो लोग के लिए ये बहुत बड़ा गैप हो गया है। एक तो स्कूल इनफैक्ट जाना, राइट, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं खास करके, उनके लिए स्कूल जाना वापस इट्स अ ह्यूज टास्क, राइट। वो स्कूल जाके एडजस्ट करना और बच्चों से मिलना जुलना, that has become very very difficult for them suddenly when the schools have started opening. School मैम आप प्लीज म्यूट कर सकती हैं अपने आप को। आई थिंक यहाँ पे सारे स्पीकर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग को कुछ नॉलेज शेयर करने का, तो बेसिक रिस्पेक्ट तो शो ही कर सकते हैं आप लोग बाय म्यूटिंग योरसेल्फ प्लीज। राइट, ट्रांजिशन टू स्कूल। तो बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जहाँ पे जिस स्कूल के टाइम पे, राइट, जहाँ बच्चे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 9 to 12, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उस टाइम पे बच्चों को एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर देना, राइट, दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एरियाज टू हेल्प देम understand that they have to go to school now, or yeah, to make the transition to school smooth for them, राइट। आके टेबल पे बैठना, टेबल चेयर पे बैठना, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास में 2 घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए और बच्चों के साथ रहना, कुछ रिटन एक्टिविटी करना, कुछ होमवर्क करना, कुछ क्लास वर्क करना। इस तरीके से एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम करके बच्चों को ट्रांजिशन में वापस स्कूल में हेल्प किया जा सकता है, वो लोग को वापस भेजने के लिए। अगेन आई वाज मेंशनिंग ये चीज
ऑनेस्टली ये चीज सिर्फ स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, सारे बच्चों को जरूरी हो गया है। 5 साल के छोटे जो बच्चे हैं, खास करके प्री प्राइमरी, बेसिकली प्री प्राइमरी के बच्चों को ये हेल्प करना कि वापस स्कूल कैसे जाएं, कैसे बैठे वहां पे, कैसे डिसिप्लिन फॉलो करें, कैसे बेल के फॉलो करें, कैसे टीचर को रिस्पॉन्ड करें, that has become very very essential now, right? So it can be, I mean, this can be taught to each and every child, especially in pre primary, and every child would benefit from this fact. राइट, चैलेंजेस इन स्कूल, स्कूल्स में काफी चैलेंजेस आने लगे हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स, बहुत ज्यादा बिहेवियर इश्यूज, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन अवे फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. Right? Behavioral issues like hitting, biting other children, getting into frequent fights, verbal fights, abusive behavior, teacher का बात नहीं सुनना, बिना टर्न के बोलना, काम करना, बहुत ज्यादा challenges आ गया है स्कूल में. तो इसके चलते, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट कि इसके चलते schools are stepping up and they are getting a teachers training done for all their teachers. This is one of the teachers training that I have done last week only actually. Right? ये सारे टीचर्स प्री प्राइमरी, प्राइमरी या सेकेंडरी में डिवाइड करके पूरा दिन ये लोग ट्रेन किए हैं कि ऐसे बच्चे कहीं आते हैं तो किस तरीके से हम लोग हैंडल करें, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो शैडो टीचर्स किन बच्चों को हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट? क्या डेवलपमेंटल डिलेज, जो कि आई मीन WHO कह रहा है कि 14%, 14% इंक्रीज इन डेवलपमेंटल डिले है बच्चों में, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करें कि डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, तो डेवलपमेंट डिले अभी देख लें कि आगे चलते वो चाइल्डहुड डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो, राइट? तो ये चीज, टीचर्स ट्रेनिंग हैज बिकम वेरी 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 एसेंशियल. वी कांट बी एवरीवेयर, स्पेशल एजुकेटर्स हों या साइकोलॉजिस्ट हों या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हों, हम लोग सब जगह नहीं रह सकते, इन एवरी स्कूल, इन एवरी क्लास नहीं रह सकते हैं. सो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द टीचर्स, and we can only take help of the teachers by telling them, by teaching them, by telling them what to look for, how to look for. हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आपकी क्लास में जो भी डेवलपमेंटल डिले का बच्चा आप प्लीज भेज दें हमारे पास, वो उनका एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे टीचिंग हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, वैसे डेवलपमेंटल डिले को आइडेंटिफाई करना उनका एक्सपर्टीज नहीं है. So we have to teach them how to see signs and symptoms. I'm not asking them to diagnose at all, right? But I'm just trying to teach them कि signs and symptoms क्या हो सकता है आपके क्लास में, आप देखिए, and then ask one of us to come and check out the child, to do an assessment with the child, etc. Next is parent training. Parent training में ये बच्चा की मदर उनके साथ बैठती हैं, right? और पेरेंट ये एग्जैक्टली ये चीज एक्टिविटी मदर को सिखाया जाता है, एंड वो ये एक्टिविटी घर पे जाके इस बच्चे के साथ ये मदर करती हैं एवरी टाइम. सो दैट इज पेरेंट ट्रेनिंग. बेसिकली पेरेंट ट्रेनिंग इज नॉट ओनली कि आप सामने आइए और लेक्चर दे दीजिए. वी ट्रेन द पेरेंट्स विद ईच एंड एवरी एक्टिविटी सो दैट दे कैन डू दोज एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन देयर बैक एट होम. 1, 2, 3, 4, 5. Look, numbers. Yes. Good boy. First is 0. 0. 0. 0. Look down. 0. 0. Very good. Next is 1. 1. Very good. Then 2. Good job. 3. Number 3, next 3. 4. 4. Yes. Good job. 5. 5. Right hand. Take your right hand. 5. Right. So that was my session. I thought that जितना छोटा रखें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. So I would take now questions if there are any. किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मैडम से पूछ सकता है. सर हमें लगता है कि लंच के बाद सब लोग बहुत सुस्त हो गए हैं. नहीं मैडम, मेरे को एक चीज पूछनी है. जी.
एक्चुअली जो संगीता जी, HI जी, बच्चे हैं, HI बच्चों का पूछना है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनके जी, साथ ऑनलाइन टीचिंग करते समय बड़ी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। जी, तो उनके लिए ऐसा क्या करें? एक्चुअली मैम मैं HI बच्चों के लिए मैंने साइकोलॉजी को कोई बुक ढूंढी, कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं नेट पे मुझे ऐसा, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कुछ ऐसी बुक मिल जाए जिसके अंदर उन्हें साइन लैंग्वेज की सब चीजें मिल जाएं। मुझे मिली नहीं वो चीज। ऐसा कुछ ऐसा है, कुछ मटेरियल कुछ है ऐसा क्या? मैम ऐसा मटेरियल काफी इंटरनेट पे तो अवेलेबल होता है। आई कैन लुक फॉर इट डेफिनेटली एंड मे बी गेट बैक टू यू ऑन दिस। लेकिन मैम एक चीज याद करना, सॉरी मैम। मैम एक चीज मुझे, इंटरनेट पे तो है एक्चुअली, पेरेंट्स पुअर फैमिली के हैं, तो उनके लिए इंटरनेट पे हर चीज सर्च करना, उनको ये करना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए मैं राइट, कमिंग टू दैट मैम, वही हम बता रहे थे कि कहीं इंटरनेट पे मिल भी जाता है, कहीं आपको मिल भी जाता है, कुछ मिल जाता है या एक्टिविटी मिल जाता है, लेकिन बच्चे स्पेसिफिक, चाइल्ड स्पेसिफिक के लिए तो आपको एडिट करना ही पड़ेगा, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो या आईडी बच्चा हो, इको प्रॉब्लम। राइट, तो किसी का माइक ऑन होगा मैम। हेलो, राइट संगीता जी। हाँ जी मैम। जी, सो हर एक्टिविटी को बच्चों के लिए एडिट करना पड़ता है और बच्चों के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। तो पेरेंट्स से बात करके एक एक्टिविटी जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा, ट्राई एंड टॉक टू द पेरेंट्स, ये एक्टिविटी हम लोग घर पे उस बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं। Right? There is no harm in talking to the parent and asking them ये चीज सिखाना चाह रहे हैं, इस तरीके से सिखाना चाह रहे हैं, right? So how can we do it? For example, आप एक वीडियो में देख रही होंगी कि बच्चा ये कुछ वो लोग हर्डल्स अंदर रखते हैं, लेकिन हर्डल्स को हेलो मैडम, जी प्लीज म्यूट यू ऑल। राइट, हर्डल जंप करता है बच्चा, तो हर्डल तो हम लोग घर पे नहीं हो सकता है मदर्स के पास, तो वो गद्दा रख दिए हैं, राइट, गद्दा से रोल बना दी हैं। सो कोई भी एक्टिविटी का बेस होता है मैम, राइट, एक्टिविटी को चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करवाना पड़ता है। सो दैट्स वेरी गुड इफ वी कैन टॉक टू द पेरेंट्स। ओके मैम। जी, थैंक यू मैम। Hello. Yes, ma'am. Actually, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. जी. मैम एक्चुअली ना मुझे कंसर्न करना था आपसे कि जब हम वीडियो कॉलिंग में, मतलब ऑनलाइन टीचिंग में जब हम स्पीच थेरेपी या अनदर कोई थेरेपी करवाते हैं ना, तो थोड़े टाइम के बाद पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद जो हम चीज सिखा रहे हैं वो खुद करवा सकते हैं उस चीज को। मेनली स्पीच था इसमें, स्पेशली सभी में लगता है मैम। हाँ, तो उस करके ना फिर कई पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन इसमें करवाना बंद कर देते हैं। नहीं मैम, हम वो चीज करवा सकते हैं कि हम नेट से देख के वो चीज कर सकते हैं। तो कई बार समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं मैम, आपको हमें हेल्प करनी होगी आपकी इस चीज में। तो कुछ सजेशन दे सकते हो मैम, कुछ अनदर जिससे हम उनको ये चीज कर सके? मैम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इनफैक्ट कल शाम में ही हमारी बॉस है, हमारी फ्रेंड है जो फाउंडर है, के उनसे बात हो रहा था। वो कह रही थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स ना सर्जरी पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे दिखाने के लिए। तो सर्जरी देखने का मतलब ये तो नहीं होता कि सर्जरी हम लोग भी करने लगे। राइट, सो ये तो होता नहीं है, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकती हैं ये समझने से। I mean, really, you can't stop them, right? As I said, it's been 15-20 years in this field. तो आज तक हम ये समझा नहीं पाए हैं लोगों को कि भाई साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्यों जरूरी है, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। Right? What you can do is when you are approaching the child and the parents, and that is my personal experience, ma'am. हम जितना हो सके scientifically, factually, right, explain करते हैं, right? कि आपके बच्चे में ये इश्यूज है, ये कंसर्न्स है, और इस तरीके से हमको लगता है हम लोग को ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी तो बच्चा आपका, पेरेंट्स आप हैं, तो राइट आपका है। एक्चुअली मैक्सिमम प्रॉब्लम मैम वहाँ पे है ना, जब बच्चे की स्पीच आ जाती है ना, तो देन पेरेंट्स सोचता है कि नहीं अब ठीक है, हमारा बच्चा बोल रहा है, तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है स्पीच थेरेपी की। एकदम 110% मैम। लेकिन पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि स्पीच जाना और स्पीच आना, राइट, ओनली एक ही सिम्टम है, बाकी डेवलपमेंटल एरियाज दिखता नहीं है, स्पीच ही सिर्फ दिखता है। तो स्पीच आया है तो बाकी डेवलपमेंट एरियाज को भी काम करना है। ऐसा नहीं कि काम नहीं एक्चुअली
एक्चुअली मैम जो मतलब कि एजुकेटेड पर्सन है ना, जो पेरेंट्स है, उनके लिए ये चीज समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको लगता है अच्छा ठीक है अब हमारा बच्चा बोल रहा है, देन ओके ठीक है मैम, अब हमें जरूरत नहीं है स्पीच थेरेपी या अनदर किसी थेरेपी की, तो हमें बताना पड़ता है कि नहीं मैम अभी हमारा एक प्रोसीजर है, अभी हमें उस तक जानना है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ठीक है मैम। थोड़ा टाइम के लिए जब उनको लगता है ठीक है, देन वो उस चीज से कट आउट कर देते हैं। जब वो अगेन आते हैं, अग्री नहीं जब करेंगे वो आप जो कह वापिस रही हैं। आते हैं, जी जब वो वापिस आते हैं मतलब कि तो बच्चा फिर उतना डाउन हो चुका होता है कि उसको ऊपर बिल्कुल उठाना हमारे लिए completely बहुत agree। मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल, डेफिसिट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैम बस हम एक ही चीज से आपसे अग्री नहीं करेंगे कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो आप कह रही हैं, एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं मैम। जो बच्चे का जब बात आता है तो उतना नहीं ही एक्चुअली मैम पता है क्या होता है कि जैसे अगर कोई मतलब कि चलो मैं ये नहीं बोलूंगी जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको चलो अच्छा है वो समझ, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं वो मैम ये चीज हमने ये देखा है, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आप नेट पे भी चेक करोगे, गूगल वगैरह पे पेरेंट्स सबसे पहले वो चेक करते हैं कि अब हमारे बच्चे की स्पीच आ गई, अब हम खुद उसको आगे करेंगे। लेकिन अनदर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं उस चीज को, नहीं कि अभी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं है कि अब हमें अभी इस चीज को रेगुलर करना है, जी तो थोड़ा इस चीज में हमें प्रॉब्लम आता है। मैं जस्ट में जो चीज मैंने फेस किया है मैंने आपसे जस्ट डिस्कस किया है। यू आर राइट मैम। सॉरी अगर मेरी किसी प्रॉब्लम से कुछ बात है, मेरे कुछ ऐसा लगा तो सॉरी। नो नो मैम, यू आर कम्प्लीटली राइट। हम ऐसा रोज फेस करते हैं हम लोग मैम। आई एम कम्प्लीटली अग्रीइंग टू इट, बट एज आई सेड हम फैक्चुअली प्रेजेंट करते हैं उसको, फिर बाकी तो पेरेंट्स का राइट है मैम डिसीजन लेना। या श्योर। ओके थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Hi, ma'am. Hi, ma'am. Yes. I have a question. Yes, ma'am. Please. ये बहुत अच्छा लेक्चर था मैम, बहुत प्रैक्टिकल था। Thank you so काफी चीजें ऐड हुई एग्जिस्टिंग नॉलेज में। मुझे ये पूछना था कि प्राइवेट प्रैक्टिस में आप लोग लाइक लर्निंग डिसेबल बच्चे जो स्कूल से आते हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइक लखनऊ में भी उन्हें ज्यादातर बार ताल्लुक ऑफिस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजना पड़ता है। मैम ये 110% राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में भी काफी दिन काम किए हुए हैं और यूएस में भी काम किए हुए हैं, और हैदराबाद में हम पिछले 5 साल से हैं इस सेंटर में। जब लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कोई बच्चा आता है सर्टिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले उसका असेसमेंट, राइट, आईक्यू या एलडी का असेसमेंट जो निम्हांस बैटरी से हो सकता है, रैट 5 से हो सकता है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करती है मैम। ये अगेन प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ये आरसीआई का रूल है मैम, ये हम रूल नहीं लाए हैं। सो वो आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ओनली। आई एम ग्लैड अबाउट दैट मैम। राइट, सो एक एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो उसका असेसमेंट होता है, और उस असेसमेंट के साथ मैम एक बहुत बार एक पीडियाट्रिशियन हो या एक साइकियाट्रिस्ट साथ इवैल्यूएशन भी होता है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि द चाइल्ड that in question is does not have any comorbid conditions, comorbid psychiatric conditions, right? So ये दोनों के बाद, ये दोनों सर्टिफिकेशन के बाद सीबीएसई आई मीन आज तक तो हमारे और वो प्रॉब्लम बीच में नहीं इंटरप्ट कर रही हूँ, जी। वो साइकियाट्रिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जरूरी नहीं है। मैम गवर्नमेंट प्रेफर डेफिनेटली हम लोग करते हैं, डेफिनेटली हम लोग करते हैं, और कुछ स्कूल शायद वो भी प्रेफर करते हैं, बट हैदराबाद और दिल्ली में इंटरनेशनल जो स्कूल्स होते हैं मैम, आईबी स्कूल जिसको कहते हैं, राइट, आईबी स्कूल्स तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी आराम से ले लेते हैं। I mean that's simply no problem ma'am at all. I haven't faced a problem ma'am, and I have always worked in a private setup, so I've never faced a problem with that ma'am. मैं अपनी रिपोर्ट एक बना के देती हूँ उनको, बट स्टिल उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। नहीं मैम, यहाँ पे स्पेशल नीड्स का जब डायग्नोसिस होता है ना मैम, जैसे ऑटिज्म का होता है और आईडी का होता है, तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ भी जाना पड़ता है। बट लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए मैम दैट इज अ डिफरेंशिएशन। लर्निंग डिसेबिलिटी एंड एडीएचडी के लिए I mean it's not necessary, but if there is a diagnosis of autism or there's a diagnosis of intellectual disability, then it's a must to go to a government hospital ma'am, and to be the assessment needs to be done by a clinical psychologist working in a government hospital ma'am. So that is a difference ma'am. Okay ma'am, thank you. Yeah, thank you so much. Thank you Zafar ji, thank you so much for the feedback.
So if there is no किसी other का और question, कोई प्रश्न है? जी नीरज मैम जी, पूछ लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है. thank you Pradeep ji for the feedback. Anybody want to ask any question? Thank you Subhash, Pradeep. And Neeraj ji, thank you so much for giving this opportunity. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आपने ये ऑफर मैंने आपको दिया, ये मेरी तरफ से नहीं था, ये हमारे जो कमेटी मेंबर थे उन्होंने आपको रेकमेंड किया था. ये जो आप हमें उन्होंने कहा था कि ईसा मैम को बुलाया जाए और मैम का एक होना चाहिए, तो मैम उनको थैंक यू कहें. हम तो बस आपको एक माध्यम थे आपको बुलाने के. नहीं सर, आपको हमको ये लग रहा था कि एक बार कंप्लेन कर दी कि आप लोग लास्ट मिनट में ही हमको बुलाते हैं. So sorry for that, but thank you very much for the opportunity, sir. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. अभी किसी का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है. जी सर, मैं कॉल कर रहा हूँ संजोनी मैडम को, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं. ओके मैम, थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू, बाय. Hello. प्लीज आप लोग हम संजोनी मैडम को कॉल कर रहे हैं, और अगर मैम आ गई है तो सुन रही हो? जी सर, गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर. आप आई हैं? वेलकम संजोनी मैम. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. वेलकम आप. थैंक यू सो मच. मैम हम स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? ठीक है मैम. जी, मैं अपना प्रेजेंटेशन अपलोड करती हूँ, फिर मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ. एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे करके मैम प्लीज स्टार्ट करें. जी, एक सेकंड. तो आ रही को बोलो पूछो. जी, so a little bit about myself. My name is Sanjoni Sethi. I'm based out of Gurgaon, and I'm a clinical psychologist, RCI registered. I've also had training in suicide prevention and also certified psychological first aid trainer. So I'm practicing independently as an independent consultant at the moment, and the topic given to me is inclusive education on the learners with disabilities in COVID-19 and its responses. So thank you so much, Neeraj sir, मुझे ये opportunity देने के लिए. And I hope इस topic पे बहुत सारी information थी, तो I've tried my best to sort of put it together and go through it quickly. And एक बार ये presentation हो जाए तो आप अपने questions, you can write down your questions, and then after the presentation we can definitely take it forward. I'd request you all to sort of mute yourself, and I think I'll begin with that. So जब हम disability inclusion, सबसे पहले जब हम inclusive education की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा disability और disability inclusion पे बात करना चाहूँगी, which is very important. और ये एक definition है जो United Nations Convention ने दे रखा है for the persons with disability, and they talk about how जब आपकी लाइफ में कोई इम्पेयरमेंट होता है और एक बैरियर है, और आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस मोर मीनिंगफुली. इसका मतलब अगर आज जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है इस प्रेजेंटेशन के लिए, समझना बहुत जरूरी है फॉर अस दैट हम हर कोई हम सारी लैंग्वेजेस नहीं जानते. वी आर नॉट फेमिलियर विद ऑल द लैंग्वेजेस. सो इट इज हाईली लाइकली दैट आई मे ब्रिंग अप a poem or an article and ask you to read in a different language. Like I probably don't know Italian, and if somebody gives me the language Spanish to sort of read, I will not be able to read Spanish properly at all. And अगर मेरा assessment उस पे होगा
So I'm probably not very qualified to sort of be assessed on that as well. So I probably am not very able on that language sphere. So similarly, जब हम डिसेबिलिटी को एक उस नज़रिए से देखते हैं तो हम इंक्लूजन को भी बहुत इजीली समझ पाएंगे जब हम बात करते हैं कि जब हम असेसमेंट या हम किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें वो चीज़ को फुलफिल करने का, उसकी कैपेबिलिटी पे, इंसान की कैपेबिलिटी पे, तब हम इंक्लूजन और डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. सो टू मूविंग ऑन टू डिसेबिलिटी इंक्लूजन में क्या क्या चीजें आती हैं. डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म एंड वी टॉक अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स हियर, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी. जो चीज हम यूज कर पाए एंड थिंग्स दैट आर सॉर्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल टुगेदर. इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एन इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव. So we talk about education, we talk about healthcare, we talk about work, employment. We're talking about social protection altogether. And यहाँ पे poverty का और disability का बहुत ही एक असर दोनों का एक दूसरे पर होता है, जो समझना अगेन बहुत important है जब हम disability inclusion की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हर इकोनॉमिक स्ट्राटा से हैं और हम हर इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंक्लूड होने की. सो टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी का एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है पॉवर्टी कंडीशन पे. अगर आपके पास समझ लीजिए कि लिमिटेड एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, या आपके पास लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है, या कोई पेरेंट है, जैसे मैम पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को जिनको डिसेबिलिटीज हो सकती हैं उनके साथ काम करने के लिए घर रहना पड़ रहा है. सो वो फैमिली इनकम पे भी असर आता है. सिमिलरली व्हेन यू आर इन अ पॉवर्टी कंडीशन, if you don't have the best healthcare infrastructure, या आपके पास healthcare accessibility ही नहीं है, usability नहीं है, तो अगर आपको एक रिस्क भी है किसी इलनेस का या डिसेबिलिटी का या इम्पेयरमेंट का, तो वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी पे शिफ्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन. तो वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इज द आइडिया ऑफ इंक्लूजन कमिंग इन. जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी and we are talking about a general education paradigm to include. जब हम inclusive healthcare की बात कर रहे हैं तो हम basic healthcare की बात नहीं कर रहे हैं, हम healthcare की बात कर रहे हैं कि हमारी buildings, equipment, technology हमारे को use कर पा रहे हैं हम उन चीज़ों को to make those assessments. Similarly for social protection, अगर कोई earthquake आता है तो कितनी ही buildings, how many buildings are constructed in a way and planned in a way where a child or any individual with disability can walk down on their own, with the accessible support within the environment. तो हमारी ऐसी क्या infrastructures हैं, इसीलिए हम inclusion की particularly बात कर रहे हैं. I hope that is clear. Now coming to inclusive education, there are various definitions that talk about inclusive education, but to just highlight one or two of them, this one particularly is talking about how we are talking about increasing participation, specifically with regard to children with disabilities. A learner, अगर आप एक लर्नर की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक लर्नर की नीड्स पे फोकस करते हैं. एक बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है उस स्कूल से घर पर कहीं बाहर सोशलाइज करने के लिए. सिमिलरली अगर हम लर्नर की नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टीचर अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोफेशनल बिल्डअप. सो टीचर एंड बच्चे में क्या गैप्स आ रहे हैं उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेके बच्चे की नीड रिक्वायरमेंट में. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. उसी से हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट. Similarly, these two other inclusive definitions of inclusive education are talking about that हम हमेशा बात करते हैं, समझते हैं inclusive education का मतलब है ज़्यादा तौर पर सर्वेज में दिखाया गया कि लोग समझते हैं जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज हैं, एंड दे कैन बी एनी डिसेबिलिटीज, हम उनको एक मेन स्ट्रीम स्कूल में इंटीग्रेट कर दें. दैट मीन्स एक बच्चे को जिसको डिसेबिलिटी है, आप उसे एक मेन स्ट्रीम स्कूल जहाँ पे कम से कम 30 से 50 बच्चों का क्लासरूम है, उनकी एज लेवल, एजुकेशन लेवल के हिसाब से वहां पे डाल दीजिए, विच इज फिजिकल इंटीग्रेशन. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. In terms of inclusive education, we are talking about looking at disabilities and differences uniquely.
अंडरस्टैंडिंग, समझने की और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम समझने की उन बच्चों को, और उसी के हिसाब से एजुकेटिव जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इंक्लूसिविटी बढ़ा सकें. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक we are diversifying rather than integrating, and that is why it's very very important for us to understand this. Now, ये एक ब्राजीलियन एजुकेशनिस्ट है फ्रायर्स अप्रोच, वेयर इन्होंने बहुत ही रेलेवेंट बात करी है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, एंड दे टॉक अबाउट हाउ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थिति में हम रहते हैं, हमारा सोशल और कल्चरल रियलिटी क्या है, बिकॉज वो हमारे डे टू डे लाइफ पे डिपेंड करता है बच्चे के, एंड उसी से हम बच्चों को एक एजेंसी दे सकते हैं to sort of bring in that change in their environment. And that is why it is very very essential कि हम teacher education needs को भी समझे, learner education needs को भी समझे. For instance, let me give you an example. If a child diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder is in an inclusive education environment, and जो उनके क्लासरूम टीचर हैं, अगर उनकी ट्रेनिंग में या क्वालिफिकेशन में या एक्सपीरियंस में उन्होंने आज तक कभी मान लीजिए वर्कशॉप्स नहीं अटेंड कर पाए हैं या कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है with a particular child who is diagnosed with this sort of diagnosis or condition, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मे बी अटेंशन में या इंस्ट्रक्शन देने में क्या कमी आ सकती है. तो अपनी उस इंस्ट्रक्शन को ना बाकी बच्चे हैम्पर हुए ना ये बच्चा हैम्पर हुए, उसे कैसे मॉडिफाई किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में एंटर करते हैं गुड मॉर्निंग के बाद, रादर देन सेइंग कि चलिए चलिए सब ये वाली बुक निकालिए, इस पेज पे आ जाइए और फटाफट पढ़ना शुरू करने से, आप सब बच्चों को एक टाइम दीजिए दैट यू टेक आउट द बुक, and once the book is out, we turn to this chapter and wait and give a pause, so that not only a child who is sort of experiencing a condition of disability, but everybody else in the classroom is sort of given that same space and time to adhere to the instruction and respond to it appropriately. This way हम किसी भी बच्चे को exclude नहीं कर रहे हैं. So these are minor differences that teacher training programs can also be taken into consideration, and this is why this sort of a learning is very very important. Similarly, आज के टाइम पे जब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड की बात करने के टाइम काफी टीचर्स ने एक्सपीरियंस किया जो बहुत टाइम से स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, दैट हमें टेक्नोलॉजी से बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि हम प्रेजेंटेशन मोड पे या पावर पॉइंट यूज कर कर एक प्रेजेंटेशन क्लास में एक लेक्चर देते थे. तो इस चीज को समझना कि हमारी ट्रेनिंग कभी भी करिकुलम में उस हिसाब से नहीं हुई कि अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी might not be very well equipped to handle that sort of technology or just sit through PowerPoint presentation. Maybe it becomes boring for the child. Maybe the child doesn't understand how to respond to that behavior. So reflecting on that and then changing that method and teaching strategy is very very important based on all sorts of children. Before we come to talking about COVID particularly, it's very important to understand कि inclusive education का जो concept है वो काफी time से चलता आ रहा है, और कोविड से पहले क्या था. तो नेशनल लेवल पे जब सर्वेज हुए तो हमने ये देखा है और पता लगा है कि there was a lack of trained staff. For example, a combination of in an inclusive environment of not just classroom teacher या subject teacher, a psychologist in a school environment, a special educator, a speech therapist, a social worker, how all of these are trained professionals to work specifically with children with disabilities and also provide support to administrative staff in school, the teaching staff in school, physical training teachers in school. अगर किसी बच्चे को disability है और physical training session है, बच्चे को exclude ना करके हम क्या modification ला सकते हैं कि हम बच्चे को include कर सकते हैं. इसके लिए वो जो role of professionals था वो missing था pre-COVID time में ही, COVID से पहले ही, in terms of inclusive education. नीड बेस्ड असेसमेंट नहीं हुई है. आपको यही नहीं पता कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है, पर आप अज्यूम करके ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा डिसेबिलिटी के साथ आया है, क्लास 1 या 2 में आया है, करिकुलम ये कहता है, हम तो यहीं से शुरू करेंगे. सो दैट नीड बेस इज नॉट डन.
जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं आपको कोई लैंग्वेज में बात करने के लिए बोलूँ जो आपको आती नहीं है और मैं आपको उस पर असेस करूँ और नंबर 0 दूं 10 में से, तो दैट इज नॉट फेयर, इट इज इनइफेक्टिव. Similarly, this is what the assessment and evaluation is, in an inclusive education, we are trying to bring in a change that has not happened till now, but it is still ongoing. There is very, very limited data on achievements of a child with disabilities. That means administrative, जो एक school curriculum का data होता है, where a child with disabilities is probably academically not strong, but is very, very strong in art, music, dance or other forms. हमारे पास इतना relevant data ही नहीं है कि हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करें या push करें कि इन competitions में part लें. And then there is a lack of friendly environment. As simple example, I was some time ago, I was also a school counselor and psychologist in a school in Gurgaon. And in my work, experience, I saw how children with disabilities did not even have the need to cater to go to the restroom. हमारे टॉयलेट्स की हालत भी इतनी बुरी थी कि बच्चा नहीं जा पाता था या बोल भी नहीं पाता था जिसको जाना है, और हम उस चीज को, उस फर्क को, वी वर नॉट एबल टू ब्रिज दैट गैप. तो दिस इज जस्ट प्री कोविड. स्कूल लेवल पे काफी बारी स्कूल्स उन बच्चों को जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उन बच्चों को एडमिट करते हैं जब वो असेस कर लेते हैं कि ये डिसेबिलिटी हमसे मैनेज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. इज इट इजी डिसेबिलिटी? इट्स अ टर्म दैट इज यूज्ड इन डे टू डे लैंग्वेज. तो काफी बारी जब पेरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं एंड उनको एडमिशन मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन दैट इज अवेलेबल टू ऑल, वो उन बच्चों को नहीं मिल पाता है फॉर द सिंपल रीजन कि स्कूल को लगता है कि नहीं, the disability is too much for our teachers and our trainers to handle. So that is a very big drawback that has been seen, and that is why inclusive education has not been sort of come up. Again, like I said before, limited professional knowledge. जब हम subject teachers को train कर रहे हैं, when we bring awareness and sensitize them about, let's say, a particular disability or a particular child with disability or a diagnosis, हम सिर्फ काफी नहीं है कि symptoms बताएं, हमें ये बताना जरूरी है कि इन बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है. अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक मैंने पहले एग्जांपल दिया, इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है. It is very common for a child with autism to probably come out and sometimes exhibit behaviors of biting, yeah, slapping in or hitting someone in a classroom. तो रादर देन हम बोल देते हैं क्लासेस में, और ये मैंने खुद देखा, इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि टीचर्स आते ही कंप्लेन करते हैं बहुत लाउडली कॉरिडोर्स में, मैम ये देखो मेरी क्लास का बच्चा, उसको थप्पड़ मारा, कितना बदतमीज बच्चा है. और हम ऑलरेडी एक लेबल कर रहे हैं चाइल्ड को विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिसेबिलिटी एंड हाउ टू सॉर्ट ऑफ हैंडल दैट. So maybe we need to sort of include that. There is also a lot of resistance and hesitance seen in teachers because of this lack of professional understanding about disabilities and the whole concept of it. They are worried कि हमें integrate करना है, तो हम कैसे संभालेंगे अगर किसी को disability है तो हमारी mainstream school class में, while that is typically, that inclusive education is not talking about just physical integration. We're talking about expanding that to knowledge and ability to everyone. And the last being prejudice and doubts. Like I said, understanding, kabhi when at least I was working in a school environment, it was very difficult to sort of also change the understanding जो इतने सालों से चली जा रही है, stigma associated with mental health and illness conditions and disabilities, that we have to sensitize languages. A lot of times, काफी बारी schools में देखा गया है, बच्चे के नंबर नहीं आए, चलो इसको स्पेशल एजुकेशन सेंटर में भेज देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि हम उनको फॉर लाइफ शायद लेबल कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन या स्थिति से जो उनके साथ रहेगी. So it is very important to understand the difference between a difficult child and a child with disability that is sort of lacking till date. Lastly, about parents, there could be a lot of economic difficulty, जैसे कि hiring a speech therapist,
occupational therapist, a psychologist for behavioral problems, a special educator, सबके रोल्स अलग अलग होते हैं और बच्चे के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के लेवल पे ये तकलीफ आ सकती है। ये तकलीफ भी हो सकती है कि पेरेंट्स का खुद का एजुकेशनल लेवल एंड अवेयरनेस लेवल बहुत वेरी करता है, जिसे हम कहते हैं डिनायल होना। जब ये देखना कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है, डिसेबिलिटी का सिम्टम्स एंड साइंस शो हो रहे हैं, तो शायद वो एक्सेप्टेंस आने में भी समय लग जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इट्स एन इंक्लूसिव फैक्टर। पर्टिकुलरली अबाउट कोविड के टाइम पे जो देखा गया है, आप देख सकते हैं कि पहले से ही कोविड के इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं, इट हैज बीन सो चैलेंजिंग और कितने चैलेंजिंग फैक्टर्स हैं। तो जब हम कोविड की बात करते हैं तो राइटफुली सो कोविड में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, हमारी एजुकेशन, वर्क, सब कुछ ही हम एक लैपटॉप या स्क्रीन या आईपैड के सामने कर रहे थे। So quickly to explain, children with disabilities face a lot of issues that were not really highlighted or spoken about. For example, adapting to change. हम लोगों के लिए ही बहुत मुश्किल हो गया था स्टार्टिंग से, तो शायद हम ठीक थे, बट आते आते इतना मुश्किल हो गया था कि सारा दिन भाई लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठना है। तो आप समझ सकते हैं कि somebody जिनका एक रूटीन होता है, स्पेशली चाइल्ड विद ऑटिज्म, जिनका एक रूटीन स्ट्रक्चर दिया जाता है उन्हें, एंड चेंज से उनको थोड़ा तकलीफ होता है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है चेंज के लिए। सडनली स्कूल्स बंद हो गए, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, उनका रूटीन चेंज हो गया, उनके डे सेंटर्स बंद हो गए। तो पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि घर पे टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है एंड बच्चे को सपोर्ट कैसे करना है, हेल्प कैसे करना है। साथ ही साथ ये समझना कि अगर मान लीजिए किसी के घर में किसी व्यक्ति को कोविड हो जाए और उनको आइसोलेशन में रखा गया, इन द पीक ऑफ 2020 एंड 2021, children with disabilities were showing anger. They didn't understand. There was confusion, chaos था, ऑलरेडी एक पैनिक का स्थिति था, और सडनली ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, ना हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हमारा ईटिंग पैटर्न, बिहेवियर सबका चेंज हो गया। तो जिन बच्चों के साथ ऐसी स्थिति हुई जहां घर पे भी पेरेंट्स को कोविड था या कोई फैमिली मेंबर को था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट शिफ्ट एंड रूटीन। फिर ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना कि चलिए आप हमारे साथ, पेरेंट्स जैसे ग्रोसरी लेने जाए और हम साथ चले जाएं या बच्चे साथ चले जाएं, इट बिकेम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई, या क्यों आप यहाँ खड़े हो और वहां नहीं खड़े हो सकते, या कोई जिनको आप नेबर को जानते हैं उनको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। सोसाइटीज में तो नीचे जाना या लिफ्ट यूज करना भी मना हो गया था। तो दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जब हम बैठे बैठे एंजाइटी फील कर रहे थे, तो समझ सकते हैं आप कि it was so difficult for parents because they had to adopt different roles. जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में भी मैम ने कहा, पेरेंट्स वर टेकिंग पार्ट इन, चाहे थेरेपी हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, बच्चों को असिस्ट करना। तो उस टाइम पे इट वाज सो चैलेंजिंग कि स्टार्टिंग में इवन थेरेपिस्ट, इवन आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि बच्चे के साथ ऑनलाइन थेरेपी करना और अटेंशन सस्टेन करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, जबकि बच्चे स्कूल का भी काम कर रहे हैं, थेरेपी भी अब ऑनलाइन होगा। इट बिकेम डिफिकल्ट। एज बेसिक एज हर घर में 3 या 4 लैपटॉप में भी ना हो, तो जिन बच्चों के घरों में पेरेंट्स के पास लैपटॉप था और उन्हें अपना ऑनलाइन काम करना था एंड जॉब का लॉग इन करना था, उस टाइम पे ये बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। सेकेंडली, ऑनलाइन क्लासेस के जब हम बात करते हैं, द लर्निंग फॉर्मेट टोटली चेंज्ड। इट वॉज सीन फिजिकल क्लासरूम में ही टीचर्स को इतना कॉन्शियस या रेजिस्टेंस थे कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को कैसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर में इन्वॉल्व करें, या कोई क्वेश्चन पूछे, बच्चे का नहीं ध्यान है, कैसे उस चीज को हम मोटिवेट करें। वर्चुअल लर्निंग में, ऑनलाइन लर्निंग में ड्यूरिंग कोविड, there were a lot of dropouts in participation because children with disabilities were not given opportunity or a platform to even come forward and present themselves in the virtual format. And they were also finding it difficult to sort of use the technology. Like somebody had pointed out, I heard कि hearing impairment हो तो इन बच्चों को online classes में कैसे involve करें। तो ये सारे questions के लिए I think none of us were sort of ready. एंड जो टेक्नोलॉजी में भी एक आपको इंक्लूसिव सेंटर में या डे केयर सेंटर में मिल सकती है, वो शायद घर पे अवेलेबल ही नहीं थी।
एंड पेरेंट्स हैड टू टेक अप डिफरेंट रोल्स. आप पेरेंट्स हैं, उसके बाद आप स्पेशल एजुकेशन के साथ ऑनलाइन फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो एज अ स्पेशल एजुकेटर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं वो जर्नी, एंड मे बी यू डिडंट और हैड यू मे बी वर नॉट इक्विप्ड और हैड द स्किल्स फॉर इट. सिमिलरली चाइल्ड में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चे को भी समझ आ रहा है कि शायद घर में किसी को कोविड और पैनिक का माहौल है, बट फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि चेंज क्यों आ गया है. तो वो सब मैनेज करना वाज अ वेरी वेरी बिग टास्क. There are mixed reviews, though nonetheless some of the good researches have come up very very recently, और उन्होंने बताया है कि how in the pandemic some of the children with disabilities जो सारा टाइम डे केयर सेंटर्स में थे क्योंकि पेरेंट्स काम करने जा रहे थे, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिला पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का. उन्होंने जॉइंट एक्टिविटीज करे पेरेंट्स के साथ, as basic as promote करा एक independent learning environment, एक new skill और routine सीखा. For example, kids I were working with, we started coming up कि every evening the parent and the child would learn to cook something that the child can also cook when things get better and the child can come back. So cookies बनाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा fire का या ज़्यादा आपको assistance की requirement ना हो, तो इन चीजों को बच्चों ने पेरेंट्स ने इकट्ठे करना शुरू कर दिया. म्यूजिक क्लासेस लाइक एज बेसिक एज पियानो, जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आपके फिंगर मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा रोल होता है, टू इंक्रीज एज स्मॉल एज बटनिंग प्रोसीजर in a child, to learning skill at home with the parent and doing that activity was very very fruitful, that was seen in these and for these kids. Overall काफी researches हुई हैं globally, and I just thought quickly to share something with everyone here कि like I said, children with autism spectrum, some of the parents reported कि बच्चों को physical fatigue हो रहा है, बच्चे थक रहे थे physically, emotionally, गुस्सा था, एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए थे. This was something that came up in these researches. Even teachers felt the lack that हम अभी तक शायद क्लासरूम में एक माइक यूज कर रहे थे, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहे थे, बट व्हाट अबाउट द अदर टेक्नोलॉजिकल यूज जो हम जिसमें ट्रेंड ही नहीं है. अगर किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है एंड जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में अभी वो नहीं आया है, तो अब हम वर्चुअली उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें was a very very big task, and parents felt a lot of burnout here, managing work, the child at home, that maybe that they were not ready to sort of take up the role in terms of education, जितना support स्कूल के बाद काम के बाद देना था and वो full day में देना था, was a very big challenge. Some of the research that have done before, कहीं कंट्रीज में, काफी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे देखा गया है, जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग, होम स्कूलिंग एंड टेक्नोलॉजी एट होम अवेलेबल बहुत सालों से है इन बच्चों के लिए विद डिसेबिलिटीज. वहां देखा गया है पहले से कि कोविड में भी और कोविड से पहले भी बहुत स्मूथ ट्रांजिशन रहा है टू ब्रिंग अप एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज टीचर पेरेंट कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था, उनका रोल बहुत डिवाइडेड था टुगेदर, एंड वहां पे पहले से ही वर्क फ्रॉम होम फॉर पेरेंट्स एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी यूज होती आ रही है. So it was very easy at that time for these sort of countries to also work on this sort of a paradigm, and बच्चों के लिए individualized education programs बन पाए बहुत बहुत easily. There is also seen something जो आज specifically इंडिया में कृष्णा और राजूरमन ने रिसर्च, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करा है, जहाँ पे उन्होंने बताया है they have worked on urban and rural population के condition during COVID. So urban environment में जहाँ technology का facility was anyways higher, their research actually said 80% of the children were able to manage, and these children included both children with disability and children from other backgrounds and environment. However, still in that 80%, कम से कम 77% children who were neuroatypical in nature still found difficulties sort of to continue, which is a very, very high number that we're talking about. In rural schools,
children with disability actually were relying on phone call, phone के माध्यम से पढ़ाई करना, which was not easy at all. हम लैपटॉप से थक जाते हैं इतना बड़ा स्क्रीन देख देख के, तो सिर्फ फोन के माध्यम से वो काम करना was very very challenging, जहाँ पे पेरेंटल सपोर्ट भी देखा गया है कम था because of their education background. And then home visits थी, जहाँ पे some of the special educators and trained counselors were able to go to their houses. but जब एकदम extreme lockdown था, जहाँ पे ट्रैवल या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, तो वहां पे वो भी पॉसिबल नहीं था, और पेरेंट्स को इस टाइम पे बहुत ज्यादा डर था कि अभी तक अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी वॉट एवर दे हैव स्टडीड या जो सीखा है, जो भी थेरेपीज हुई हैं, जो स्कूल में प्रमोशंस हुए हैं, वो जब जो सीखा है शायद बच्चा रिग्रेस ना कर जाए, शायद वो भी ना भूल जाए कि हमें दोबारा सिखाना पड़े. तो ये एक बहुत बड़ा डर था पेरेंट्स में विद डिसेबिलिटी, विद देयर चिल्ड्रन इन डिसेबिलिटी. तो जस्ट टू कम टू वर्ड्स एंड एंड कंक्लूजन, मैं यहाँ पे ना आपके साथ कुछ एक किसी स्कूल प्रिंसिपल का एक रीसेंट इंटरव्यू था, जिसका एक लाइन मैं शेयर करना चाहूंगी. लाइक जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेड है, आज हम सब इस चीज को जानते हैं, पर क्या हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? And recently one of the interviews, without naming the person, I would just say उनका एक बहुत ही prominent interview था, जहाँ उन्होंने कहा we cannot take children who are running all over the place. They are not meant to be in an inclusive school but in a special school. We are only admitting students with disabilities perceived as easy. So are we really moving towards inclusive education is a question we all need to ask ourselves. Are we really practicing that requirement in need, right? Every school has a mandatory requirement of a counselor, a psychologist, a special educator. But काफी हैं, कितने हैं? जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में मैम ने कहा कि हर टाइम हम बच्चे के साथ नहीं हो सकते, तो एक ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स भी इक्वली पार्टिसिपेट हो एंड ओपन टू आइडियाज हो. अभी भी पैंडेमिक खत्म होने के उस पे नहीं है, बट जैसे अभी थर्ड वेव आया, स्कूल्स अब दोबारा खुलने वाले हैं. What do you all think? Are we ready to sort of, go through the change again? बच्चों को anxiety आपको लगता है हो रही होगी, वापस स्कूल ज्वाइन करना है, तो आप समझ ही सकते हैं children with disability, it would be again a change in their routine. अभी तक 2 साल में पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम मिला, अब पेरेंट्स का रोल चेंज होके दोबारा टीचर्स, ट्रेनिंग स्टाफ का रोल आ जाता है, दोबारा मोर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है काम करने की, तो उसको अडेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा. एज स्मॉल एज डिसेबिलिटी पेंशंस, डिसेबिलिटी मिड डे मील्स, इन सब की चेंजेस को अडेप्ट करने में दोबारा टाइम लग सकता है, एंड हो सकता है काफी लोग ड्रॉप आउट करें. At last, technology, I think it's a very well said research, by Krishna Ramarajan again, that हम पहले भी शायद टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थे, हम सरवाइव कर रहे थे, पर इस टाइम का पता नहीं, शायद हम डिपेंडेंट हो गए हैं या हम एक हाइब्रिड मोड भी अकोमोडेट कर पाएंगे. सो जस्ट टू एंड, एक यूनिवर्सल डिजाइन जो इंक्लूसिव एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो देखा गया है, विच इज जस्ट नथिंग बट लाइक अ ट्रू एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें अपना एनवायरनमेंट और अपना डिजाइनिंग को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, जिसमें हम बच्चों से नीड असेसमेंट करें, हम समझे बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, उस हिसाब से एक स्पेशल एजुकेटर, एक साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे मिलकर और क्लासरूम टीचर्स एक साथ मिलकर वो एजुकेशन प्रोग्राम बनाए उन बच्चों के लिए, जहाँ पे आप उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों पे काम कर पाए. तभी वो सेफ होगा, तभी वो इंटरडिपेंडेंट होगा, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, जहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, जिनको अपने रोल्स पता है, वो सब कंट्रीब्यूट कर पाए और वो एक इंसान को ट्रेन कर पाए, विच इज द क्लासरूम टीचर, टू सॉर्ट ऑफ टेक इट फॉरवर्ड. दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. And we can definitely need to start approaching towards a multi-sensory approach, कि आप अपने सारे senses को use करते हुए, टेक्नोलॉजी को use करते हुए just integrate नहीं करें. ये नहीं कि एक पुराने existing method को हमने change कर दिया, ये नहीं करना है, हमें modification लाना है rather than integration, जहाँ पे उन teaching strategies को सबके लिए appropriately use करा जाए.
So I think that is one thing, and it's very important to engage a learner. I was working with a child with cerebral palsy and with severe cerebral palsy, I'll say it here. एंड मैंने देखा कि यू नो टीचर्स लगे थे काम करने में एक ओपन स्कूल एनवायरनमेंट में, एंड वो बच्चा अकेले ही बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि जब सबकी बारी हो जाएगी तब फटाफट लास्ट के 5 मिनट मेरे होंगे, और ये पैटर्न था. तो आई चेंज द स्ट्रैटेजी लिटिल बिट, जहाँ पे मैंने सारे बच्चों को थोड़ा एजुकेट करा बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में, और बताया कि बाकी बच्चे थोड़ा थोड़ा मदद कैसे कर सकते हैं, और बच्चों से ही पूछा कि आप ये टॉपिक को इस बच्चे के साथ कैसे करना चाहेंगे. आप मानेंगे नहीं, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया वेयर दे डिसाइडेड कि हम इस टॉपिक का ये पार्ट मेरा बहुत अच्छा है, मैं समझा दूंगा मैथ्स का ये कैसे करना है, साथ में हाथ पकड़ के लिखवा रहे थे. एंड देयर वाज जस्ट अ सपोर्ट फ्रॉम अ लिटिल यू नो फ्रॉम द टीचर, लिटिल पुश एंड टू सी कि बच्चे बुली ना हो या काम ठीक से करें. तो आई थिंक वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वेयर यू कैन फॉलो द यूनिवर्सल डिजाइन which includes the 4 components mentioned here. So that's from my side. I think हमारे पास आइडिया है, हमारे पास अब मैनेजमेंट है, बट अब हमें इम्प्लीमेंटेशन इन द राइट वे करना शुरू करना पड़ेगा फॉर इंक्लूजन टू बी अ पार्ट ऑफ आवर यू नो डे टू डे एनवायरनमेंट. So if there are any questions या कोई कुछ शेयर करना चाहता है, I'll be happy to take that. बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैडम, बहुत बढ़िया. हाँ, किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है मैडम से. गुड आफ्टरनून नामिका. एक्चुअली मैम क्वेश्चन बता दें लेकिन मैक्सिमम स्कूल में स्पेशल एजुकेशन होते ही नहीं है, तो मेन स्कूल्स में रखा ही नहीं है. मैक्सिमम मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनके पेरेंट्स बोलते हैं मैम आप एडमिशन करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटर ही नहीं है, तो आप हमारे साथ शैडो टीचर बन के चलो, लेकिन अब इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो हमें थोड़ी इस चीज के लिए होना चाहिए कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर सी मैंडेटरी तो है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. इट इज एक्चुअली अ रूलिंग दैट इट इज मैंडेटरी, बट जहाँ तक ये होता है, कई बार क्या होता है कि एक ही इंसान को जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो एज अ स्पेशल एजुकेटर एंड एज काउंसलर, उनको भी अपॉइंट किया जाता है. तो आई थिंक उस टाइम पे टू एजुकेट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक वो आपका मेरा हम सबका रोल है वहाँ पे, जहाँ हम उन्हें सेंसिटाइज करना शुरू करें. इनफैक्ट पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना शुरू करें. When I started working a couple of years ago and I was you know applying for a school, I was also given this opportunity that I should take both the roles, and I stood my ground and I left that job. So I'm sure हर किसी में वो अपॉर्चुनिटी का भी नहीं होता, कभी कभी आप वो जॉब जरूरी होती है, but I think we need to start educating in that environment जहाँ पे आप हम सबका बहुत important role है. मैम एक्चुअली इंटरव्यू की गई थी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर, तो हमने जैसे ही मैंने वहाँ पर बोला कि आप यहाँ से पॉजिटिव होगी स्पेशल एजुकेटर, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैम हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल बच्चा नहीं, तो हम स्पेशल रखना भी चाहते हैं. थोड़े टाइम के बाद जब वहाँ पे स्पेशल बच्चा है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम अब हमारे यहाँ पे है आप आओ. तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मतलब अगर आपके पास स्लो लर्नर तो होगा बच्चा, MRA और बच्चे उसी के स्पेशल आप एक स्लो लर्नर उसके लिए भी है और आपको स्पेशल एजुकेटर चाहिए. तो मैक्सिमम स्कूल में चीज का बहुत क्लियर था कि नहीं हम इस चीज को रख सकते हैं. तो हमारे लिए स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए. ये तो रिक्वायरमेंट है. नॉट ओनली एज स्पेशल एजुकेटर, इवन ट्रेन स्कूल काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड. Maximum small school 1 to 5 क्लास के स्कूल होते हैं, इसमें ज्यादा मैक्सिमम जो बच्चे स्कूल होते हैं पेरेंट्स होते हैं इसका एडमिशन करवाए, स्पीच करवाए बच्चा, अटेंडेंस में भी अच्छा है तो मैं इसमें स्कूल में एडमिशन करवाऊँ. लेकिन वहाँ पे मतलब प्रिंसिपल वगैरह
बोलते हैं कि नहीं हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है, तो उनको बोलते हैं कि नहीं अब हम किसको लेके चले। फिर टीचर, क्लास टीचर को भी यही प्रॉब्लम आता है कि बच्चा बैठता नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो नॉर्मल टीचर उस चीज पे ट्रेन नहीं है कि वो कैसे वर्क करवाए, तो चीज़ में एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम आता है। या सो मैं आपको थोड़ा सा ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि एट अ स्कूल लेवल जहाँ पे टीचर्स का भी एजुकेशन बैकग्राउंड ने उन्हें सेंसिटाइज नहीं करा इन बच्चों के लेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि जैसे मैथ्स की जब टीचर आती है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे को कौन सी कॉपी कब लानी है, क्या उस दिन टॉपिक होगा, अगर वो बोर्ड पर लिख दे या जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है या जो क्लास टीचर है वो सुबह ही लिख दे कि भाई आपकी टीचर ने ये चीजें कही हैं, उससे भी काफी बच्चे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अच्छा ये एक्सपेक्टेशन है, आप ये चीज उन्हें समझा सकते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्रेशन है फ्रॉम अ क्लास टीचर पॉइंट ऑफ व्यू to a child, you can sort of cut it down, break it down without just thinking for one child or two children with disability, but to make it easier for 50 children or 30 children in the class. It is just a matter of fact कि आपको ये नहीं सोचना कि अरे हम इन 2 बच्चों के लिए अपना ये स्ट्रैटेजी थोड़ा ना बदल देंगे। हमें ये समझना है कि हम उन 30 to 50 बच्चों के लिए एक साथ मिलकर इसको इजी कैसे कर सकते हैं। Anamika, I can't hear you properly. There's a lot of background noise. योर अनामिका, आपकी आवाज बहुत ही क्लियर, मतलब वो आ रही है, अनक्लियर है, आप इसको ठीक करो थोड़ा सा। अनामिका अवस्थी, आप टाइप कर सकते हैं, I'll answer that. ओके, आप म्यूट कर लीजिए अनामिका अपनी तरफ। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, एक्सक्यूज यस मी मैम, प्लीज प्लीज, यस मैडम, कोविड के दिनों में बच्चों का कोरिकुलम कैसा बनाना चाहिए डिसेबल्ड बच्चों का? बहुत ही जेनेरिक मैम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज डिसेबिलिटीज तो वी नो दैट देयर आर अबाउट 21 डिसेबिलिटीज, सो बेस्ड ऑन लाइक आई सेड नीड असेसमेंट, जब आप करिकुलम की बात करते हैं एज बेसिक एज मान लीजिए कि मैथमेटिक्स की क्लास है अगर किसी बच्चे की, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी वेरी जनरल एग्जांपल, तो टाइम सिखाना सिर्फ एक करिकुलम की रिक्वायरमेंट या बच्चे को आना नहीं चाहिए नंबर्स के थ्रू, लेकिन आगे जाके भी लाइफ में बच्चे को इंडिपेंडेंटली विद एनी डिसेबिलिटी वो टाइम देखना बहुत जरूरी है। इट्स अ स्किल दैट दे नीड टू लर्न। तो आप उस चीज को मॉडिफाई करते हुए आई थिंक कोई भी करिकुलम उस वे में बच्चे के नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड जब देयर इज अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस एंड लॉट ऑफ एक्सपेंशन। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Are there any other questions? Is there anybody else who would like to share or ask anything? Thank you, Kapil ji. Thank you so much. हेलो मैम। अभी और किसी का प्रश्न है? यस सर। हाँ, पूछिए। मैम, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से कि स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेटर हायर किया जाता है, मान लीजिए मेरी स्पेशलाइजेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बट मेरे पास दूसरी डिसेबिलिटी लाइक हेयरिंग इम्पेयरमेंट या विजन इम्पेयर बच्चा आया, तो उस सिचुएशन में मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उस वक्त क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि कैसे उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, और वहां पे कोई और स्पेशलाइज नहीं है उस जगह? Right. इस केस में there is also a mandation of a school counselor. Now, as a school counselor, they have understood, masters in psychology or even people with MPhil with psychology. They have understood and उन लोगों ने पढ़ाई करी है related to बाकी disabilities भी.
तो माय सजेशन टू यू इन दैट केस इज कि अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एक डोमेन ऑफ डिसेबिलिटी में है, पहली चीज तो आप बाकी एक्सपर्ट्स जो स्कूल में है रिलेटेड टू द फील्ड या इवन आउटसाइड फ्रॉम द फील्ड, जैसे कोई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है या कोई और स्पेशल एजुकेटर विद द सेम अदर डोमेन ऑफ डिसेबिलिटी ट्रेन्ड है, आप उनसे डिस्कशन, पैनल डिस्कशन ले सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एटलीस्ट इन द रोल एंड फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कि हम लोग सुपरविजन लेते हैं। जो लोग हमसे बहुत ज्यादा सीनियर है फील्ड में, हम उनके साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम विदाउट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेशेंट और अ चाइल्ड, हम उनके साथ केस डिस्कस करते हैं, बताते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और गाइडलाइंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं हम कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कुछ ढूंढ सकते हैं जहाँ पे बहुत ही सीनियर सुपरवाइजर्स हो आपकी फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी में, जिन्होंने इन बच्चों के साथ पहले काम करा हो और आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कूल एनवायरनमेंट में कैसे और इस प्रॉब्लम पे क्या काम किया जा सकता है। तो आई एम श्योर यू कैन लुक अप एनी RCI trainers and supervisors and they'll be happy to sort of give you guidance and assess you and help you out. ओके मैम, थैंक यू। मैडम मैं गौरव जी को एक बात बोलना चाहूंगी। जो जी। बात इन्होंने पूछी, हर जोन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपर्ट टीम ऑलरेडी बनाई भी गई है, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू। ये डायरेक्ट उनसे संपर्क करें और उन्हें बताएं। उन्होंने एक्सपर्ट टीम इसीलिए बना के रखी है कि अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए। करेक्ट। आप वहां से भी सुपरविजन एक्चुअली ले सकते हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट। नीरज सर, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू for giving me the opportunity and in case anybody requires any help or anything from my side, आप मेरा email share कर सकते हैं and anybody can get in touch. I'll be happy to help. Thank you, Purnima. हाँ जी। अभी हमें लग रहा कि मैडम किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और अगर कोई क्वेश्चंस हो बाद में भी, कोई भी मुझे ईमेल करके रीच आउट कर सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। वेरी नाइस। तो ठीक है, अगर किसी के मन में बाद में भी इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो मैम को ईमेल कर सकता है या हमारे पास वो क्वेश्चन आप फॉरवर्ड करिएगा, हम मैम को पास करके फिर आपका समस्या का समाधान कराएंगे। नीरज सर, शायद कई सारे लोगों ने अपने हैंड राइज किए, एक बार उनसे बात किए तो चलेगा सर। क्या? कई सारे लोगों ने अपने हाथ तो ऊपर किए हैं, देखो सिंबल दिख रहे हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए। तो माइक ऑफ करके पूछे ना। अखिलेश यादव कुछ पूछना चाहते हैं या? जी, एक बार देख लीजिए। कोई क्वेरी है तो पूछे। थैंक यू सर। अखिलेश यादव, आपका कोई प्रश्न है? सर ये हाथ नहीं, ये हैंड तो ऐसे ही रेज है सर, इसमें कोई किसी ने कुछ किया नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छा क्लास रहा। ओके, थैंक यू। ये सभी का ऐसे ही है, हैंड राइज कर लिया है या फिर उनका बटन कुछ ओके सर जी, शायद मुझे उससे लगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं है भैया, अभी आप क्या है कि आप आउट हो सकते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजनी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, रियली वेरी नाइस सेशन। और हम चाहेंगे कि मैडम आगे भी आपसे कांटेक्ट में रहें और इसी तरह के सेशन आपसे हम लाभान्वित होते हैं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। और मैडम हो सके तो आप अपना पीपीटी हमें शेयर कर दीजिएगा ताकि इन लोगों को हम प्रदान कर सके। जी सर, जी। हाँ, तो वो क्योंकि ये पीपीटी आज के लिए नहीं मैडम, हमेशा के लिए इनके पास हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो इनका समस्या का समाधान बहुत सारी चीज उस पीपीटी से हो जाता है। तो वो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम अगेन। थैंक यू। हाँ, अभी मैं अनामिका मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। अनामिका रालानी मैम, आप लाइन पे हैं? ऑनलाइन है मैम? हाँ, मैं हूँ ऑनलाइन। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनामिका मैम इस समय ऑनलाइन है और मैम प्लीज प्रेजेंट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैम आपको तो शायद अभी थोड़ी देर पहले भी आप थी। हाँ, मैं थी सेशन में। ओह सॉरी मैम, मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप आई एम सो सॉरी। ओके मैम, हमारी बहुत देर से हमारे साथ है और मैं समझ नहीं पाया। और मैं आपको फर्स्ट टाइम मैडम, अभी क्या हुआ हमारा आपका क्या है, वैसे तो इंटरेक्शन हुआ नहीं है
है ना, और निधि हाँ, मैम मुझे के द्वारा निधि जी के जी 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 मीडियम से इसके बारे में पता और चला कोई था। बात नहीं मैम, आई एम सो सॉरी, मैं आपको समझ नहीं नहीं पाया नहीं, था उस कोई समय बात पे, नहीं, इसमें है ना। अपोलॉजी की तो कोई ठीक बात है, नहीं है। अभी मैम आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और फिर मैडम क्लास स्टार्ट करें मैम। हाँ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। स्क्रीन शो हो रहा है? नो मैम, स्क्रीन नहीं आ रही अभी। नो मैम। हाँ, अब आ रही है? नहीं मैम, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल। आप सभी पार्टिसिपेंट से एक अनुरोध है, बार बार मैं सुबह से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखा करिए आप लोग। इससे डिस्टर्ब होता है कि जो हमारा रिसोर्स पर्सन है, जो हमारे स्पीकर है, उनको डिस्टर्ब होता है, वो अपनी बातें जो आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं फिर वो रख नहीं पाते हैं वो अच्छी तरह से, इसलिए अपना मेरे वीडियो ख्याल ऑफ से अब शेयर हो रहा होगा। नहीं हो रहा मैम। नो मैम। नहीं, आ गया इसमें आ लिख गया। के आ रहा यस है। यस मैम, विजिबल विजिबल मैम। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, ओके थैंक यू। एक सेकंड में इसे बस स्लाइड शो में ले लूं। अब दिख रहा है? यस 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 मैम। विजिबल। हाँ, ठीक है, मैं अपना अभी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। मेरा नाम अनामिका है और मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लखनऊ में समाधान मेंटल हेल्थ क्लिनिक में। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी ऑर्गेनाइजर को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये आज इतने अच्छे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी और इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी और अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ इस टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज लिविंग इन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि मैं ज्यादातर काम क्लिनिकल पेशेंट्स के साथ करती हूँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज को ज्यादा एड्रेस करती हूँ, तो मेरा प्रेजेंटेशन भी ज्यादा उसी चीज को फोकस कर रहा है। मतलब खाली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को नहीं, इन जनरल अडल्ट्स, यंगर पॉपुलेशन, उन सबको भी। ये बेसिक एजेंडा है मेरी प्रेजेंटेशन का। कोविड ने हम सबको अफेक्ट किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मैम दिखाइए तो अगेन तार ये टॉपिक क्या है? वो लोग जो लोग इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, लाइक किसी हॉस्पिटल सेटिंग में या किसी डे केयर सेटिंग में रह रहे हैं, जिनको डिसेबिलिटी है, उनके ऊपर कोविड का क्या प्रभाव पड़ा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू। स्क्रीन नहीं क्लियर, हमें दिखता है स्क्रीन। All right, I'm continuing. Am I audible clearly? यस मैम, प्लीज डू। यस मैम, यस यस। मैम अगेन टॉपिक It's impact of COVID-19 on person with disabilities living in institutions. जो कि किसी डे केयर सेटिंग हो गई या किसी हॉस्पिटल सेटिंग में या किसी रिहैब सेंटर में जाते थे या रहते थे, उन लोगों पर डिसेबिलिटी का क्या प्रभाव पड़ा, उन लोगों पर कोविड का क्या प्रभाव पड़ा। Hope my topic is clear to the person who is asking the question. यस मैम, क्लियर है मैम, आप बताएं मैम, वो समझ नहीं पा रहे थे। Everything COVID-19, okay. Everything about COVID-19 has affected us. Never has such an event affected so many individuals all across the globe. Like most countries, daily life in India has also been disrupted due to this worldwide pandemic. जब से ये लॉकडाउन हुआ, हमें क्वारंटीन करना पड़ा, सोशल आइसोलेशन फॉलो करने पड़े, स्कूल बंद हो गए, सोशल गैदरिंग कम हो गई, मॉल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। इन सब के चलते हम सब आम लोगों की लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए। हम सबको भी कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़े। इन सब
इन सब के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। जब कोविड आई, इमरजेंसी सिचुएशन देश में लागू हो गई, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने सीरियस स्टेप्स लिए कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें, जिनको हो गया उनके लिए क्या चिकित्सा करें, कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लाएं। बट स्टिल उनका ध्यान उस पॉपुलेशन की तरफ जल्दी नहीं गया जिनके बारे में आज हम पूरा दिन बात कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। There was lack of attention toward disabled people living in institution and closed settings. They were more likely to infected by COVID-19 and have higher rates of mortality. वो लोग क्यों ज्यादा रिस्क पर थे? जो डिसेबल्ड पर्सन थे कोविड की, उनको ज्यादा जल्दी वायरस हो सकता था क्योंकि उनकी सेंसरी, कॉग्निटिव और फिजिकल इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम सब लोगों में है। तो उनमें ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन को ग्रास्प करने के। और वो लोग जो इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, उनमें बच्चे, यंग पीपल, ओल्डर पीपल, उन सबको ही एक समान लेवल की दिक्कतें हो रही थी कि वो कोविड-19 के लिए इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी के लोगों के लिए कैसे उनको किट्स मिले ताकि वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो क्या करें, क्या मेजर्स ले। इन सब के लिए कोई बहुत कुछ भी ऐसा नहीं स्टेप लिया गया, या ऐसी कोई भी डायरेक्टली तुरंत ऐसी कोई चीज नहीं लाई गई जिससे कि हमारा ध्यान जाए इस तरफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए हम क्या करें, कैसी इंफॉर्मेशन लेके आए जो उनको सेफ्टी, उनको मेजर्स प्रोवाइड करें। उनके लिए हम तुरंत पीपी किट ले आए, ये सब तुरंत नहीं हुआ। इन सब में एक टाइम लगा, चीजों को आने में एक टाइम लगा। People who are immobile or living with mental illness, for them to follow the instruction, containment measures like physical distancing, social isolation, quarantine, ये उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम उन लोगों को बोले कि आपको 15 दिन अलग कमरे में रहना है, या अब आपको 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलना है, अब आपको 3 महीने हॉस्पिटल नहीं जाना है डॉक्टर को अपना चेकअप कराने, जो कि कंप्लीटली अपने केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट है। केयर गिवर्स कौन हो गए? उनके घर वाले हो गए, या कोई उनका स्टाफ हो गया, या फिर उन्होंने कोई नर्स रखी है घर पे, वो नहीं आ सकती है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कोविड-19 कि वो कैसे अपने आप को संभाले और इस बीमारी का सामना करें, इस पेंडेमिक का सामना करें। इस टॉपिक को आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, नीड ऑफ दिस टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बोला कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर मोर वल्नरेबल टू द वायरस बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव लिमिटेशंस। उनकी लिमिटेशंस हैं, वो वायरस को कैच करने के लिए लाइक प्रोन है, वो रिस्क पर है, वो रिस्क पॉपुलेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे एक जरूरत है समझने की कि हमें क्यों नीड पड़ रही है। हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के किन किन डोमेन्स को पढ़ें, किन किन एरियाज को पढ़ें जो कि उनको काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है पेंडेमिक के आने से। उनके लाइवलीहुड्स, वो कैसे रह रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उसके बाद उनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक्सेसिबल है, क्या वो जा पाते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है। इतने जब बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, वो कैसे मैनेज कर पा रहे थे, या कैसे वो दवाइयां लेने जा पा रहे थे, या कैसे उनको अगर कि अलग अलग टाइप की जैसे थेरेपीज वो ले रहे थे तो वो कैसे जा पा रहे थे अपनी ओटी के लिए, या फिर फिजियोथेरेपी के लिए वो कैसे जा पा रहे थे। उनका सोशल पार्टिसिपेशन पे कितना असर पड़ा, उनकी एजुकेशन सर्विस पे कितना असर पड़ा, और उनकी एम्प्लॉयमेंट और जॉब पर कितना असर पड़ा, जो लोग इंस्टीट्यूशन में रह रहे थे या किसी डे केयर सेटिंग में जा रहे थे। ये कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डिसेबल पर्सन में रिस्क एक लेवल बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा ये हाथ थोड़ा कमजोर है बचपन से, और मैं इसी से ही सारी चीजें उठाऊं, भारी काम सब इसी हाथ से करूं जो मेरा कमजोर है, तो शायद अगर मुझे कुछ भी इन्फेक्शन होगा बॉडी में
तो वो मेरे इम्यून सिस्टम सबसे पहले मेरे हाथ पर इफेक्ट करेगा। ये एक थ्योरी है बेसिकली कि बॉडी का जो ऑर्गन वीक होता है वायरस सबसे पहले वहीं पे इफेक्ट करता है और वो एक लॉन्ग टर्म तक उसका इम्पैक्ट रहता है। जबकि हम बोलते हैं कि हम ठीक हो गए, पर फिर भी वो हम ठीक नहीं होते, उसका कुछ ना कुछ असर रह जाता है। वो कितना ज्यादा रहता है ये इस बात से डिसाइड होता है कि वो डिसेबिलिटी का कितना सीवियर है, वो डिसेबिलिटी कितनी सीवियर है। तो मैं ये बात यहाँ पे क्यों, ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि डिसेबल पर्सन ऑलरेडी एक रिस्क पर थे इन्फेक्शन को ग्रास्प करने के। अब जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि अब घर पे रहना है, लोगों से नहीं मिलना है, मास्क लगाने हैं, 3 लेयर वाले मास्क लगाने हैं, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन उनको क्या मिल रही थी? अगर मिल रही थी तो क्या वो मास्क लगा पा रहे थे? उनको क्या क्या हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल थी? ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड किया कि उनको कितने लेवल का इन्फेक्शन हुआ, डिसेबल्ड पर्सन को कितने लोगों को कोविड-19 हुआ, इन सब लैकिंग्स की वजह से। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पहले की स्लाइड्स में, पहले के प्रेजेंटेशन में डिस्कस हो चुके हैं। मैं फिर भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ यहाँ पे रीड आउट करूंगी। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन को पहले से ही कई सारी दिक्कतें हैं, शारीरिक दिक्कतें, जैसे कि लीवर इन्फेक्शन या फिर किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज या ओबेसिटी या फिर हाइपरटेंशन। तो जिनको ऑलरेडी ये सारी फिजिकल मेडिकल कंडीशंस है, अगर उनको कोविड-19 आ रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो उनके लिए ये ज्यादा मॉर्टल हो जाएगा, उनके लिए ज्यादा दिक्कत ही पैदा करेगा। उसके बाद है ओल्डर एज। डेफिनेटली ओल्डर एज, चाहे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो डिसेबल्ड है कि नॉन डिसेबल्ड है, पर ओल्डर एज को सिग्निफिकेंटली ये इम्पैक्ट किया कोविड-19। वो लोग जो इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं जो बहुत क्राउडेड है, जैसे कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो जहाँ पे बहुत जनरली ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे एक ही वार्ड में 60 पेशेंट्स रख दिए गए हैं और उनको देखने के लिए सिर्फ एक ही स्टाफ है। उस स्टाफ को भी कोविड हो गया है और उस स्टाफ को हम कितनी जल्दी वो इंस्टीट्यूट रिप्लेस कर सकता है एक कोविड की सिचुएशन में, या उस 60 पेशेंट में से किसी 3 को सिम्टम है तो कितनी जल्दी उन लोगों ने नोटिस किया, उसको सेपरेट किया, या कितनी जल्दी उसके लिए कुछ एक्शंस लिए। ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है जब डिसेबल्ड पर्सन एक इंस्टीट्यूशन सेटअप में रहते हैं, और ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप जो कि बहुत ओवर क्राउडेड है, और ये ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखने को मिला। बैरियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग हाइजीन एंड प्रोटेक्शन मेजर्स, जैसे कि वॉशिंग हैंड्स ऑफन, और रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, कि वो कितनी बार बार हम अगर उनको समझा रहे तो वो कितनी बार बार हाथ धुल रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं या मास्क पहन रहे हैं। और लैकिंग सैनिटरी फैसिलिटीज, कि उनको ठीक तरह से पानी नहीं मिल रहा है वहां पर कि वो बार बार वॉश कर सके। वहां पे जैसे बार बार रूम को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, जबकि एक कमरे में एक बड़े से हॉल में 30 लोग रहे हैं पर उसका कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है। और उनको पीपी किट नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे कि ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, ये सारी चीजें। लैक ऑफ टेस्टिंग फॉर स्टाफ एंड रेजिडेंट्स, अगर इन सब इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन रह रहे हैं उनमें हेल्थ वर्कर्स को, स्टाफ्स को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग के लिए भी चीजें कम थी जब कोविड-19 आया। Reliance on physical contact to get support and belongingness to other disadvantaged groups, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑलरेडी एक चैलेंज फेस कर रहे थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो कि इससे 2 या 3 गुना ज्यादा हाई रिस्क पर थे, जैसे कि वुमेन। अभी मेरे बाद मेरी फ्रेंड एक टॉपिक इसी पर ही डिस्कस करेगी कि वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा कोविड-19 का। तो स्टडीज ने यही बताया कि कोविड-19 ने वुमेन के ऊपर 3 गुना डिसेबल्ड मैन से ज्यादा इम्पैक्ट किया, उन लोगों को अफेक्ट किया। और वो लोग जो डिसेबल्ड पर्सन जो जेल में रह रहे हैं
उन लोगों को, या फिर होमलेस पर्सन जो हम ज्यादातर रोड पे या स्टेशन पर देखते हैं, इन सब के लिए ये एक बहुत ही रिस्क फैक्टर था कोविड-19। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंस्टीट्यूशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज। शुरुआत डे केयर सेंटर से करते हैं, उसके बाद हम इंस्टीट्यूशन पे आएंगे, इंस्टीट्यूशन स्टडीज पर आएंगे। डे केयर सेंटर्स फॉर पर्सन विद साइकियाट्रिक डिसेबिलिटीज वर क्लोज्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। सभी मोस्ट ऑफ द डे केयर सेंटर ने अपने साइकियाट्रिक डिसेबिलिटी सेटअप को बंद कर दिया था। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो नहीं आ सकता है, इस तरह का एक माहौल सा हो गया था। इन सब के चलते क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? डिसेबल लोगों का जो डेली रूटीन था वो पूरा गड़बड़ हो गया। ये चीज हमने बच्चों के लिए भी समझी लास्ट प्रेजेंटेशन में कि कैसे ऑटिस्टिक बच्चों का डेली रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया था। जब हम वी एज अडल्ट हमें कितना चीजें फेस करनी पड़ी, तो हम समझ सकते हैं कि डिसेबल लोगों को अगर ऐसी नई नई चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, उनको कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये चीजों को ओवरकम करना। तो लॉस ऑफ डेली रूटीन एंड एंगेजमेंट इन फैमिलियर सोशल सेटिंग्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज का कोई ऑप्शन नहीं रहा था। कन्फाइनिंग टू देयर होम्स, अपने घर में ही लोगों को बंद रहना पड़ रहा था। मेजर इकोनॉमिक लिमिटेशन फेस्ड बाय फैमिलीज को ये डिसीजन लेना पड़ रहा था कि हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराएं या घर की लाइवलीहुड को पहले देखें। हम पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था करें कि अपने घर में मरीज की चिकित्सा कराएं। तो वैसी वाली कंडीशन डिसेबल फैमिलीज में आ गई थी। रिलैप्स ऑफ द इलनेस ड्यू टू नो प्रॉपर मेडिकेशन, जो लोग ऑलरेडी एक इलनेस से, मेंटल इलनेस से या ठीक हो चुके थे, उनका रिलैप्स हो गया था। रिलैप्स मतलब उनको वापस से वो बीमारी आ गई थी, क्योंकि मेडिकेशन नहीं चल रहा था, उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं अवेलेबल था कि वो जाके अपना चेकअप करा सकें। अगर ट्रांसपोर्टेशन भी उनको अवेलेबल था तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाएं और वो सर्विस अवेल करें। तो वापस से वो सारे सिम्टम आ रहे थे, तो रिलैप्स होने लगा था इलनेस का। तो इससे क्या हो रहा था कि मेंटल हेल्थ बर्डन देश में और बढ़ता जा रहा था। नॉर्मल लोगों में भी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स आ रहे थे, और ऊपर से जो लोग ऑलरेडी मेंटली इल थे और ठीक हो रहे थे, उनके ऊपर वापस से वो सभी चीजें वापस आ रही थी। Elderly caregivers who were sole caregivers of the patient were extremely anxious about what after me issue. अब हमारे बाद इनको कौन देखेगा? Many daycare centers ran by NGOs were depend on revenue generated from the fees and donations. It was a challenge to raise funds to pay the staff their salaries and ensure healthcare well-being. Difficulty in accessing outpatient services. ये एक स्टडी की गई थी, डॉक्टर मूर्ति ने की थी ये स्टडी, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 में से हर 2 लोग ने ऐसा फेस किया कि वो ओपीडी सर्विसेज नहीं ले पा रहे थे। जब कोविड-19 आया तो वो ओपीडी सर्विसेज डिसेबल पीपल नहीं ले पा रहे थे, जो कि मैंने फैक्टर्स आप अभी तुरंत ही डिस्कस किए, उन सब की वजह से, जिससे कि उनके रूटीन मेडिकल केयर में बहुत ज्यादा डिसरप्शंस आ गए थे। आइसोलेशन और लैक ऑफ सपोर्ट, ये सारी चीजें लोगों के मेंटल हेल्थ बर्डन, मेंटल हेल्थ इश्यूज को बढ़ा रही थी उस टाइम पर, जो कि एक क्लोज्ड सेटिंग में, एक हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में रह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें लॉक कर दिया गया है, आगे पता नहीं क्या होगा, और हम अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। Is there any issue? Is there any issue? That ma'am resolving. All right. तो उन्हें लग रहा था कि हमें एक जगह पे बंद कर दिया गया है लॉकडाउन के चलते, और हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो आगे क्या होगा हमारे फ्यूचर का, हम कब तक यहाँ पे बंद रहने वाले हैं, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक डाउटफुल सिचुएशन, उनके साथ डाउटफुल कंडीशन हो गई थी।
चिल्ड्रन, अभी जितना कि हमने 2-3 इस पे प्रेजेंटेशन सुना, disabled children or children with autistic spectrum were also strongly impacted. इन सब चीजों का मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट क्या रहा? जो लोग इंस्टीट्यूशन में रह रहे थे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट क्या रहा? क्योंकि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा ज्यादातर टारगेट पॉपुलेशन क्लिनिकल होता है, इसलिए मैं ये चीज ज्यादा हाईलाइट यहाँ पर कर रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में। मैं इसको पहले एक केस बता रही हूँ, तब शायद आप लोग ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट कर रहा है लोग जो डिसेबल्ड पर्सन थे कोविड-19 में। ये केस एक लेडी का है जो कि लगभग 40 साल की है, जिसको कि पास्ट में एक डिप्रेशन का एपिसोड हो चुका था और कोविड के बाद उसके हस्बैंड एक कपड़े की शॉप पर काम करता था और उसके बाद उसके हस्बैंड की जॉब चली गई थी और वो पूरा दिन घर पर ही रहता था। उसकी वाइफ ही खाली अब थी जो थोड़े बहुत पैसे कमाती थी घर में जाके थोड़े बहुत काम करके। उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या देखा, क्या चीजें बताई, उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो खाने बनाने में कभी नमक भूल जाती थी, कभी ज्यादा डाल दे रही थी या गलतियां कर रही थी, चीजें रख के भूल जा रही थी। उसके मन में मरने के ख्याल आ रहे थे, बहुत ज्यादा उदासी आ गई थी, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तो जब वो हमारे पास इन सब सिम्टम्स के साथ आई तो हम लोग ने इसको ये क्लिनिकली हम लोग ने डायग्नोज किया कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है और जो कि दूसरा एपिसोड है। तो क्या हो गया, उसके सिम्टम्स का वापस से रिलैप्स हुआ और उसको किसने अराइज किया? कोविड-19 पैंडेमिक ने। और उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या था? उसके हस्बैंड की जॉब का जाना। तो ये केस से आप जो मैं चीजें आगे बताऊंगी उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट रहा लोगों के ऊपर, जो डिसेबल लोग हैं उनके ऊपर कोविड-19 के बाद। इसमें है सबसे पहले fear and apprehension to clinical anxiety, irritability to panic attacks, sleep and appetite disturbances, increased alcohol intake to withdrawal। लोग क्योंकि ज्यादा घर पे रह रहे थे तो उनका अल्कोहल इंटेक बढ़ गया था और वो इस लेवल पे बढ़ गया था कि हम उसे क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं कि ये अब अल्कोहल डिपेंडेंट है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस टू डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। पर इन सब चीजों में, इन सब मेंटल इश्यूज में सबसे ज्यादा कौन सा प्रिविलेंट था जो हमें मिला? वो था fear of getting infected with virus and loss of income were affecting PWDs the most। कि हमारे लाइवलीहुड्स पे, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड्स पे एक सवाल आ गया था कि हम खाना कैसे खाएंगे, इसलिए ये बर्डन ज्यादा बढ़ रहा था उन लोगों के ऊपर। क्योंकि डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, जो कि लास्ट प्रेजेंटेशन में भी मैम ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक हाई लेवल है एसोसिएशन पॉवर्टी का और डिसेबिलिटीज का। और क्या मेजर चैलेंजेस थे जो फेस किए गए जिसका कि मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट रहा? थॉट्स ऑफ बीइंग अ बर्डन। लोगों जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनको लगने लगा कि हम अपने परिवार के लिए एक बोझ हैं और उन्हें ये डर था कि कहीं हमारे घर वाले बीमार पड़ गए तो हमें कौन देखेगा, क्योंकि हम खुद उन पे डिपेंडेंट। तो अगर उनको कोविड हो गया और उनको क्वारंटीन होना पड़ा या उनके लिए हमें हॉस्पिटल भागना पड़ा तो हम कैसे ये सब करेंगे? सैडनेस रिगार्डिंग फीलिंग डिपेंडेंट ऑन केयरगिवर्स, स्पेशली द एल्डरली। Thoughts of being worthless, worries about financial and job insecurities। इन सब के बाद क्या एक्शंस लिए जो कि बहुत ही क्विक थे और रिलेटिवली इजीली एप्लीकेबल थे उस टाइम की सेटिंग में? वो था सपोर्टिव काउंसलिंग, जो कि सीआरसी लखनऊ ने भी शुरू किया था, निमहांस हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने अपने लेवल पर टेलीफोन सेशंस और टेलीसाइकियाट्री, टेलीमेडिसिन, ये सारी चीजें स्टार्ट करी। तो सपोर्टिव काउंसलिंग जो कि टेलीफोनिक थी, उन लोगों उससे थोड़ा सा लोगों को, पर्सन विद जो डिसेबिलिटी थे, उनको थोड़ा सा उससे मदद मिली।
अपने सिम्टम्स से ओवरकम होने में, उसका बर्डन लाइक मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट उसका थोड़ा सा कम हुआ इन चीजों से, पर वो कभी भी वन फेस टू फेस इंटरेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता, पर उस सिचुएशन में वो एप्ट रहा। इसके बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जो कि ज्यादा इफेक्टिव रहे उस टाइम में जब पेंडेमिक आ गया था। इसको मेनली 3 कैटेगरी में, 3 डोमेन्स में हमने डिवाइड किया। पहला है कंटिन्यूड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड बेसिक नीड्स, कि हमने जो अवेलेबल एनजीओज थे या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके साथ मिलके ऐसा किया कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन देख रहे हैं कि किस एरिया में डिसेबल्ड लोग हैं जिनके पास फूड नहीं है, तो उनको जाके फूड प्रोवाइड करना। जैसे कि इंडिया में सीबीएम ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काफी अच्छे लेवल पर काम किया। उसमें उन्होंने हॉस्पिटल लोकल हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर डिसेबल्ड लोगों को राशन बांटा, ड्राई राशन बांटा और पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये सारी चीजें इसमें फर्स्ट डोमेन में आएंगी। होम बेस्ड रिहेबिलिटेशन थ्रू टेलीफोनिक कंसल्टेशन, जो कि मैंने अभी बताया कि एक सपोर्टिव काउंसलिंग टाइप की चीज है, जो कि बहुत ब्रीफ होती है, शायद 1 या 2-3 सेशंस में हो जाती है। उससे उन लोग को थोड़ा सा उनके सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है उनको कम करना। टेलीमेडिसिन, जैसे कि उनको फोन पर ही प्रिस्क्रिप्शन दे देना, दवाइयां भिजवा देना, ये सारी चीजें। दूसरा डोमेन है कॉन्टिन्यूड एक्सेस टू वेलफेयर बेनिफिट्स एंड इमरजेंसी सपोर्ट। इसमें क्या है, वेलफेयर बेनिफिट्स क्या हो गए कि हमने जैसे कि एल्डर पीपल है विद डिसेबिलिटी, हमने या वो केयर गिवर हैं किसी डिसेबल्ड पर्सन के, उनकी पेंशन है आनी है तो उनको एडवांस पेमेंट हो जाए, इसके लिए इस तरह से चीजें हुई। और कॉन्टिन्यूड सर्विस डिलीवरी, ये वॉच आउट करना कि उनके पास चीजें पहुंच रही हैं, उनको चीजें मिल रही हैं, कोई चीज लैकिंग, कोई इंपॉर्टेंट चीज लैकिंग तो नहीं है। और टेम्परेरी सर्टिफिकेशन, डिसेबिलिटी का टेम्परेरी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन और वीडियो बेस्ड असेसमेंट के द्वारा इसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और जो इसका लास्ट और थर्ड डोमेन है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ प्रमोशन इन कोविड-19। ये एक बड़े लेवल की चीज है। इसमें हमने जैसे कि कई सारी डिसेबिलिटीज हैं जो कि तब से डिस्कस हो रही हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, ये सब पे, इन सब के लिए थोड़े टाइम के बाद क्या गवर्नमेंट ने चीजें, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज निकाली, जो कि हम तब से बात कर रहे हैं, एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में, जो कि उन तक वो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में उनको चीजें पहुंचाना, पर्टिकुलरली फॉर पर्सन विद हियरिंग डिसेबिलिटी एंड विजुअल डिसेबिलिटी, उनके लिए उन तक कैसे हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कोविड-19 से रिलेटेड, और उनको जनरल मेंटल हेल्थ एडवाइस कैसे दें ताकि उनको अपने सिम्टम्स को वो वॉच आउट कर सकें और उसका लेवल ना बढ़ने दें। उनको ऑनलाइन और फोन बेस्ड सपोर्ट करना। रिकमेंडेशन टू द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज, ये अभी तक हमने जो बात की थी वो काफी 1-to-1 वाली चीज थी, और ये एक सिस्टम के वे में रिकमेंडेशंस है डिफरेंट डिसेबिलिटीज को लेके। कुछ 4-5 डिसेबिलिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं बहुत शॉर्ट में, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है जनरल टू ऑल डिसेबिलिटीज, जिसमें कि हम इंक्लूसिव प्रोग्राम की हम तब से बात कर रहे हैं, जो कि एक चैलेंज है और कहना आसान है पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। पर इंक्लूसिव प्रोग्राम्स फॉर ऑल, ऐसा ये स्टडीज भी की गई। एक्सेसिबल पब्लिक कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन मटेरियल्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद डिफरेंट चैलेंजेस, जो कि हमने इसके पहले डिस्कस किया कि उनके वे में उनकी चीजें उनको प्रोवाइड करना। एंड एक्सेसिबल हेल्पलाइंस, कि उनके पास हेल्पलाइंस हैं और वो वर्किंग हैं और वो कॉल कर रहे हैं तो उनको सहायता मिल रही है।
वायलेंस से रिलेटेड या किसी अब्यूज से रिलेटेड या उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड, या किसी केयर गिवर को अपने घर में कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए कुछ चीजें पूछना है, या किसी मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड, इन सब के लिए एक्सेसिबल हेल्पलाइंस प्रोवाइड करना। दूसरा डोमेन है इसमें स्पेसिफिक टू डिसेबिलिटीज। वो तो जनरल था, ये स्पेसिफिक है कि डिसेबिलिटी वाइज हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो एक डिसेबिलिटी में हो सकती है पर दूसरे में नहीं हो सकती। तो इसमें पहली है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसमें है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन और स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये सभी कुछ कवर होता है कि हमने उनके लिए एक डेली रूटीन चार्ट हम सेट कर रहे हैं, उनका एक नया डेली रूटीन चार्ट सेट कर रहे हैं, उनके लिए नई चीजें इंक्लूड कर रहे हैं जो कि फिक्स रहेंगी, हम उनको एक टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे। तो वो उनकी रूटीन को मैनेज करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर वो उनसे उन्हें काफी हद तक हेल्प मिल सकती है। Psychosocial disabilities, these are disabilities due to mental illness like distress, anxiety excuse me, distress, anxiety, panic, apprehension, depression, feeling of loneliness, isolation, all these were prevalent in the person with disability during COVID-19. So helpline to address these issues, telephonic conversation जो कि मैंने पहले बात करी, necessary measures to ensure continuity of medication in those who need them, हम वो दवाइयां उनको दे रहे हैं जिनको कि अगर रिलैप्स हो रहा है या हमें साइंस दिख रहे हैं, प्रोडॉर्मल फेज आ गया है, हमें दिख रहे हैं इसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, अब एपेटाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो फैमिली के लिए एक साइन है कि अब हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है और वापस से दवाई शुरू कर देनी है। हमें वेट नहीं करना है कि ये पूरा एक फेज में आ जाए, लाइक डिप्रेशन एक फेज में आ जाए। कोई भी बीमारी आती है तो उसके पहले उसका एक फेज होता है। अगर मुझे आज फीवर आया है तो मुझे 2 दिन पहले शायद मेरा गला खराब हुआ होगा, फिर मुझे जुकाम आया होगा, और फिर मुझे शायद तीसरे दिन फीवर आया होगा। तो इसी तरह से मेंटल इलनेस का भी एक प्रोडॉर्मल फेज होता है जिसमें कि हमें बीमारी के आने के पहले के लक्षण दिखने लगते हैं। तो हमें इसमें फैमिली मेंबर्स को, केयर गिवर्स को अवेयर करना है कि उनके इन साइंस को आप नोटिस करिए, क्योंकि वो पॉपुलेशन एक रिस्क पॉपुलेशन है जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कोप अच्छे से नहीं कर सकता है एज कंपेयर टू नॉन डिसेबल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। मास्क मेक रूटीन कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। Alternative including transparent mask should be considered by people communicating with person with hearing impairment. Text-based communication and making all mass communication accessible for person with hearing impairment. Next is visual impairment. Touch-based, जो person with visual impairment होते हैं उनको touch-based activities ज्यादा सिखाई जाती हैं, ज्यादा चीजें उन्हें छूनी होती हैं। तो इस कंडीशन में हम उन डिवाइसेस को कितना सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को टच कर रहे हैं तो हमें बार बार यही कहा जा रहा था कि हाथ धुलिए, सैनिटाइज यूज करिए। तो हम कितना, हमने गवर्नमेंट ऐसा इम्प्लीमेंट कर रही है, कह रही है, रिकमेंड कर रही है कि आप उनको बार बार सैनिटाइज करिए जो कि वो लोग वो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। Sanitization of assistive devices used by them. The responsibility of social distancing should be on others when it comes to visual impairment because they are not able to do it their own. ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये responsibilities हम लोगों पर है। Next is locomotor impairment. Accessible hand hygiene facilities, accessible wash basins or supply of hand sanitizers, sanitization of assistive devices including canes, crutches, wheelchairs, handrails, particularly in public spaces. उन सब spaces में वो कितनी बार बार सैनिटाइज हो रही हैं चीजें।
So I'm concluding now. Persons with disabilities have faced multiple challenges during the COVID-19 pandemic. Policymakers and healthcare professionals ensured and continually ensuring that delivery of vital services help preserve access to benefits and guide advocacy to preserve the rights of persons with disabilities. Is there any queries? No, ma'am. हेलो अनामिका मैम, नमस्ते। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सेशन को विद एग्जाम्पल को के माध्यम से समझाया और आपकी बातें काफी अच्छी लगी, बातें समझ में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस कोविड-19 पेंडेमिक में डिसेबल्ड बच्चों के साथ वर्क करना बहुत ही मुश्किल काम था मैम। मैं भी स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ दिल्ली में। अभी मैम जो अपर प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं, अभी जिस 10th में हमारे पास एक मैम CPMR बच्ची है, उसे टीट करने के लिए क्लास करने, और एक बच्चा और मैम हर्ष मेहरा का नाम है उसका, जो है SLD का बच्चा है। तो इन बच्चों को इस पेंडेमिक में हम बोर्ड की परीक्षा और इसके सिलेबस की तैयारी करने के लिए कैसे, क्या कुछ स्पेशल कुछ उनके पेरेंट्स को या बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप कुछ ब्रीफ बताएंगे मैम। हमारे स्कूल में मैम 3 बच्चे इस तरह के हैं, जो एक हर्ष जो है 12th क्लास में है और एक 2 लड़के बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं, तो अपर क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए मैम कुछ स्पेशल यदि इस तरह से कुछ आप सुझाव देना चाहें, थोड़ा सा बताएं तो अच्छा रहेगा मैम। बोर्ड से एफिलिएटेड है? CBSE बोर्ड से मैम। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। इस जी दिल्ली गवर्नमेंट में है मैम। ये एक प्राइवेट स्कूल है कि पब्लिक स्कूल है? दिल्ली गवर्नमेंट है मैम, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली सर। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है। जी। इस कंडीशन में जबकि ऑलरेडी वो रिस्क पर हैं और कोविड-19 भी चल रहा है और इस समय ठीक से चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है इन रिगार्ड टू एजुकेशन, कि वो कितना असिस्टिव डिवाइसेस से या फिर लैपटॉप से कितना पढ़ पा रहे हैं। इस कंडीशन में हम उनको एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कर सकते हैं NIOS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि उनको ज्यादा हेल्प करेगा। वो सिर्फ हमें ऐसा नहीं है कि क्लास पार करना है, हमें वो चीजें समझनी भी है, उतना नॉलेज लेना भी है उस क्लास का। तो आप उनको ऑल्टरनेटिवली NIOS का ऑप्शन दे सकते हैं। ओके मैम, क्योंकि जब क्लास अटेंड पास कर लेने से ही, अभी जैसे पिछले सेशन में तो बच्चे अपने ऑटोमेटिक जो है अपग्रेड हो गए, लेकिन अपग्रेड हो जाने से लाइफ तो उससे इजी तो होने जाएगी मैम, तो लाइफ में और भी डिफिकल्टी आएंगी, क्योंकि हम जिस चीज को परसेप्शन नहीं कर पाएंगे उससे लाइफ में वो नॉलेज गैप बढ़ता जाएगा। अगर मैं 6th में हूँ और मेरा नॉलेज 4th का है और अब मैं 7th में प्रमोट हो गई हूँ, तो मैं 3 साल पीछे हो जाऊंगी। जी मैम। तो आपको उनको NIOS ही बेटर ऑप्शन है इस टाइम पर। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। कोई और क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून मैम। जी राठौर जी, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, ASD और MR जो किट रहता ना सर। हेलो।
हाँ हाँ पूछिए, आवाज आ रही है, बताइए आप। मैम थोड़ा आई हैव अ थोड़ा स्मॉल डाउट क्लियरली मैम। बोलिए। हेलो हाँ बताइए। CPSD जो हमारा स्टूडेंट रहता ना, हम्म। तो उसको फिजिकल फॉर्म दिए तो एक बार मास्क लगा लो बोल के बोलते मैम आप। ठीक है। तो सो उन्हें क्या है, थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट लगा लेते हैं, फिर बाद में निकाल देते हैं मैम उसको। जो कोविड में कैसा ट्रीट करना है मैम उस बच्चे के लिए, वो डिसेबिलिटी बच्चे को। हेलो वैसे हम नॉर्मल भी यही करते हैं ना, वैसे उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। अनामिका मैम, अनामिका मैम। हेलो हाँ लगता है मैम का डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ सर। निधि मैम आप यहाँ पे हैं? निधि मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। हाँ वेलकम मैम। थैंक यू सो मच बहुत ही सर। अच्छा सेशन रहा अनामिका मैम का, संजनी मैडम का, ईसा मैम का, बहुत बढ़िया रहा मैडम। तीनों मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैम। और अभी मैं निधि मैम का वेलकम करता हूँ, लास्ट सेशन है हमारा। एंड होप मैम का भी बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोगों की जो क्वेरी है, जो मैम का टॉपिक है, उस संबंध में कोई क्वेरी होगी तो आप पूछेंगे। और क्वेरी पूछने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैडम का इतना अच्छा सेशन जाता है कि सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। तो मैं यहाँ पे हार्टली वेलकम करता हूँ निधि मैम का। निधि मैम प्लीज आए थैंक यू और सर। अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, सबसे थैंक यू पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। और मैम। थैंक यू। ये बिल्कुल हम आज के डे पे फर्स्ट डे के समापन पर आ गए हैं। जी जी और जी आपको जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। हाँ थैंक यू मैम, तो थैंक यू आपका भी। ओके सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा। जी बिल्कुल मैम। सर इज इट विजिबल? नो मैम अभी नहीं हुआ। यस मैम विजुअल। सर अभी दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। अभी क्या है कि वो थोड़ा सा, यस मैम आ गया, ओके। स्क्रीन पे आ गया। ओके मैम तो स्टार्ट। जैसा कि मैंने बोला, ये हम बिल्कुल हम समापन कर चुके हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों ने आज के टॉपिक से रिलेटेड बात की। सर इको तो नहीं हो रही आवाज? नहीं मैम इको हो रही थी, अभी खत्म हो गया, सही हो गया। ये शायद फिर से हो, अभी इको हो रही है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं हो रही है। ठीक है। सो माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज दिस वायरस हैज चेंज्ड अस ऑल। जो कि अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। और इससे बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हिडन है, जो आगे के प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगी। और जैसे कि मैंने बोला कि पहले के जो भी मेरे बाकी साथियों ने, और जो भी सुबह के मॉर्निंग के सेशन में जो भी हमारे गेस्ट स्पीकर आए थे, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगा इन टर्म्स, बिकॉज जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, आई थिंक दे आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम फॉर CRE पॉइंट्स। और दे आर मच इनटू देयर प्रोफेशन, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिकॉज थियरी तो वो काफ़ी पढ़ चुके हैं। देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो स्टूडेंट हैं या वर्क कर रहे हैं या कहीं जुड़े हुए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी समझने की बहुत ज़रूरत है। इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी बातें मैं आगे बताऊंगी। So experiences of women with disabilities in India during COVID-19, हम लोगों ने देखा कि कैसे, and we all know that uh, in March WHO has declared this pandemic as one of the very crucial thing। और जो SARS एक वायरस का नाम था which is responsible for this COVID-19 disease। तो COVID-19 एक डिजीज है जो एक SARS नाम के एक वायरस से के कारण हुआ। और
we all know कि how disturbing it was for all of humankind. It's not कि ऐसे इंडिया में या किसी एक स्टेट में ये था, पूरी दुनिया में ही ऐसी स्थिति आ गई थी, स्पेशली जब हम सेकेंड वेव की बात करते हैं, सेकेंड फेज की बात करते हैं, जहाँ कितने सारे डेथ हुए हैं अनगिनत और लोग इसकी रिपोर्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो और हम लगातार पिछले भी सीआरईज वगैरह में मैं इस बात को के बारे में बात करती रही हूँ कि वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन, वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी। तो ये जब कोविड-19 ऑलरेडी ये चैलेंज आ रहा था वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ, जहाँ हम इंक्लूजन अभी भी चाह रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम करें, अभी भी चाह रहे हैं कि वो हर चीज़ों में आगे आएँ, उनको जो व्हाटएवर राइट्स दे शुड अवेल वो राइट्स उनको मिले। तो कोविड-19 तो और भी उनके लिए बहुत ही चिंताजनक विषय होगा और उन पे कैसे असर डालेगा, ये मैं कुछ केस स्टडी के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर पिक्चर आई हैव यूज्ड फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ साइट सेवर्स, जिन्होंने काफ़ी काम किया है इस फेज पे, और जो ये कहता है कि स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन विद डिसेबिलिटीज, दे आर रियली नेग्लेक्टेड एंड दे आर कम्प्लीटली फॉरगॉटन। उनको एक तबके के लोगों ने बिल्कुल ही इग्नोर किया करा है, और डिसेबिलिटी को तो इग्नोर करा ही है, और स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटी को तो और भी करा है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास आज भी ये डेटा कहता है कि कितने लोग कोविड की वजह से कितनी सारी डेथ हुई है, बट कोई डेटा ये नहीं कहता है अभी भी कि उनमें डिसेबल लोगों की कितनी संख्या है, मीन्स हमारे कितने डिसेबल लोगों की डेथ हुई है। तो आई थॉट कि बिफोर गोइंग अहेड वी शुड नो कि बेसिक क्या डेटा है जो कहता है, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड in India we have 2.01 disabled women, and in terms of percentage it is very low, but अगर डिसेबल जनसंख्या की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है और जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज में भी इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द गोल कि वी कैनॉट लीव द सेक्शन हु आर डिसेबल्ड, बिकॉज एक इतने बड़े तबके को छोड़कर हम ये नहीं कह सकते कि हम हर चीज़ को हम डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए वी हैव टू really include disabled also in mainstreaming whatever goals we are planning, maybe it's SDGs goal or whatever goals we are planning for. And also talking about 45% of disabled females, the basic data I have given, I will be sharing this PPT with all of you, तो आप लोग ये data बाद में देख सकते हो, but I am highlighting especially the data that is related to women with disability. So we can see here 45% of disabled females are लिटरेट ओनली। ये हाफ भी नहीं है कि हम कह सकते कि चलो हमारे 50% या आधी आबादी जो फीमेल डिसेबल्ड फीमेल हमारे जो भी सहभागी है, जो भी हमारे लोग हैं हमारे समाज के, वो आधे भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे हों और जो हम ये कह पाए कि वो किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करे और इस कोविड के टाइम में अपने आप को सेफ्टी और अपने आप को बचाएं। एंड more than 2.5% of women with disabilities has multiple disability। हो सकता है locomotor disability हो सकता है hard of hearing हो, सुनते हैं कम सुनते हैं। So I think सारे लोग ये जानते हैं कि what exactly is multiple disabilities। So now moving ahead, किस तरह से ये कोविड-19 डिजीज ने इम्पैक्ट किया है डिसेबल वुमेन को, और इसके पहले की प्रेजेंटेशन में अनामिका ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, और आई थिंक ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही और भी प्रेजेंटेशन में मैम ने भी करा था, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बट कैसे ये एक डिसेबल वुमेन को अफेक्ट करता है वील बी सीइंग फर्दर। So I will be highlighting some of the real life experiences of disabled women during COVID-19. So I think I really must need to tell all of you because currently I'm working as assistant professor in Amity University, Gurgaon in clinical psychology department, and I have been really been into dealing with disability also, especially in Jharkhand area because Jharkhand is my hometown. तो मैं डिसेबिलिटी एरिया और इससे जुड़ी जो भी काम है या फिर जो भी प्रोग्रेस हो रही है उससे भी काफ़ी हद तक जुड़ी हूँ, जिस वजह से शायद मैं आज ये बात और अच्छी तरीके से आप लोगों को बता पाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या
रियल एक्सपीरियंसेस है जो हमारे डिसेबल वुमेन ने फेस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हम हमेशा सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट एक्सेसिबिलिटी। क्या हमारा समाज, क्या हमारा कॉलेज, क्या जहाँ भी एक सुविधा हो उसके लिए क्या डिसेबल हमारे सहभागी के लिए या डिसेबल हमारे जो भी फ्रेंड है उनके लिए क्या ये अपना एक्सेसिबल है। तो अगर हम कोविड-19 की बात करें एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में, तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय वन ऑफ द disabled women. I worry that if I were to get hospitalized in this situation, I would not be able to hear the doctors and the nurses. Say the 35-old woman who is hard of hearing, मीन्स वो सुनती थी लेकिन कम सुनती थी, एंड वी ऑल नो कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल वी हैव दिस सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ हमें इतनी मीटर की दूरी तय करनी है और वो दूरी हमेशा बनाए रखनी है। और वहाँ पे जब आप जब एक ऐसी महिला है जो कम सुनती होंगी और कोई उनको सामने आकर कान में जोर से ना बोले या बहुत पास आकर ना बोले, तो उनके लिए क्या डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह की सिचुएशन अपने आप में ये चीज़ है कि ठीक है, तो ऐसे में लोग क्या चाहते हैं कि ठीक है डेथ हो जाए, एंड दिस इज़ द रियल एक्सपीरियंस ऑफ दिस लेडी कि भले ही डेथ हो जाए घर पे लेकिन मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहूँगी। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी की बात आती है। दूसरी बात ये आती है सोशल रिलेशनशिप। कोविड-19 ने वी ऑल नो कि किस तरह से हम नॉर्मल इंसान को भी अफेक्ट किया है। हम में से काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों को या काफ़ी नियर एंड डियर वंस को खो चुके हैं। तो उस कंडीशन में और ये भी है कि बहुत लोग ऐसा हो गया, डिस्टेंसिंग हो गया, बहुत लोग 1-1 साल तक 2-2 साल तक अपने फैमिली मेम्बर्स को देख नहीं पाए हैं। उस केस में रिलेशनशिप कितना पुअर होता गया और वो कैसे साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट कर रहा है और ओवरऑल एक जो फैमिली सिस्टम है, एक फैमिली मैकेनिज्म है, उसको भी कैसे अफेक्ट किया है। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस केस, I had gone to buy some ration and there my crutches slipped. I fell down in normal times. Someone definitely used to come to pick me up if this sort of thing happened. But that day, no one came. Then I took out my sanitizer from my purse and gave it to the shopkeeper, and then he came to and help me to get up. So this was again a reference given by a lady from Mumbai, and because we have some DPO organization, आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता होगा, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती है, जो एक आवाज़ उठाने का एक माध्यम है हमारे डिसेबल जो भी हमारे साथी हैं उन लोगों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या स्थिति होगी और क्या फीलिंग होगी उस महिला की उस टाइम में, जब एक तो डिसेबल उसपे से गिर जाना। आमतौर पर अगर कोई गिरता है तो हम फौरन दौड़कर उनको हेल्प करते हैं कि चोट तो नहीं लगी, भले चोट लगी हो ना लगी, बट ये एश्योर करते हैं कि ठीक है आप सही तो हो, यू आर ऑल राइट फाइन, एटलीस्ट ये पूछते तो जरूर है। बट ये कंडीशन में जब वो महिला गिर गई, एक डिसेबल महिला, नो वन केम टू हेल्प हर। सो आप सोच सकते हो इट सेल्फ इज ए ट्रोमैटिक। और उसके बाद दिस पर्टिकुलर लेडी वो घर के आसपास भी अपनी बिल्डिंग के नीचे जाना या अगल बगल भी जाना बिल्कुल उस लेडी ने इतना भी करना छोड़ दिया। बिकॉज बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऐसे था, अगर आप सब लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे सोसाइटी इस टाइम में सेफ था जहाँ पे तो एक भी केसेस नहीं आए थे, स्पेशली इन फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में तो फिर भी काफ़ी केसेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, बट फर्स्ट फेज में कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जो बिल्कुल अनटच थी। तो इस तरह की कम्युनिटी में जहाँ स्प्रेड नहीं था वहाँ भी लोग अगर जा रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो भी लोग वहाँ हेल्प करने को नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड कि कहीं अगला इंसान अफेक्टेड ना हो जाए। बिकॉज दिस कोरोना वायरस थिंग इज कम्प्लीटली इनविजिबल और ये ऐसे दिखने वाली चीज़ नहीं है, एंड एवरीबडी वाज सो ऑक्यूपाइड कि कोई तो ऐसे हिडन नहीं होगा, कोई तो कैरियर नहीं होगा। मूविंग अहेड, मेंटल वेलबींग की जहाँ बात आती है और अनामिका ने इस बारे में हाईलाइट किया है, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिसेबल वुमेन, मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि डिसेबल वुमेन के साथ एक ये भी था कि चलो ठीक है पीपीई किट यूज़ करना है या ग्लव्स यूज़ करना है, तो बहुत सारे लोग तो सपोज दे इफ दे आर हैविंग सम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो वो ये कि नहीं मैं तो ग्लव्स यूज़ नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं मास्क नहीं यूज़ कर पाऊंगी क्योंकि मैं कम्युनिकेट कैसे कर पाऊंगी। तो ये जो प्री ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ थी, एक एंग्जाइटी और डर बहुत ज़्यादा था जिसको लेकर। और here you can also see that creates a barrier for lip reading for those who are rely on that, and especially when you talk about our deaf and the person who are not able to hear और sign language जब वो करते हैं, तो
lip reading is very, very important that we cannot overlook. Another very important thing is about education, and I think education ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म या एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ थी जो निरंतर चलती रही। बाकी सब कुछ बंद हो गया, बट एजुकेशन किसी न किसी माध्यम से निरंतर चलती रही इस पूरे कोविड के टाइम पे। बट फिर भी चैलेंजेस तो बहुत आए, बहुत लोगों ने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ भी लाए ताकि हम नॉर्मल पॉपुलेशन को एजुकेशन से वंचित ना रखें। बिकॉज अगर 2-3 साल में अगर समझ सकते हैं कि एक बच्चा अगर 2-3 साल में नहीं पढ़ पा रहा हो, या कोई प्रोफेशनली, जैसे आप में से बहुत लोगों ने शायद इस पीरियड में कंप्लीट किया होगा अपनी डिग्री, बहुत लोगों ने ऐसे डिग्री कंप्लीट किए हैं, तो वो मिस करते हैं कि हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस या इस तरह के जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है, पेशेंट नहीं देख पाना या फिर पेशेंट से मिल नहीं पाना, फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट है वो कि हम लोग कभी पेशेंट देख ही नहीं पाए, बस ऑनलाइन क्लासेस हुई। Here also you can see no spatial assistance, no caption or text are shared. Most of the assignments are PDF scanned and sent, which means someone needs to read out for me. Means this is a case of a 20-year-old deaf blind college student at Delhi. She is one of the daughter of my faculty co-member. And one another case is that one of the disabled mother was not able to guide her child for online class because she was having speech impairment, and she was able to understand, but the kid was a younger one, छोटी बच्ची थी, तो उसको भी इस माध्यम से, because mother was able to understand but she was not able to speak, she was having speech issues, so she was not able to communicate. So this is another barrier in terms of education. अब आती है लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट की बात, जहाँ पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी लोग ऑलरेडी दे आर इन जॉब एंड मेनी ऑफ देम हैव आल्सो लॉस्ट देयर जॉब। जो लोग जॉब में थे, बहुत लोग वापस अपने होम टाउन आ गए, शिफ्ट हो गए हमेशा के लिए। बहुत लोग कुछ टाइम के लिए आए, फिर वो वापस अपने वर्क प्लेस पे चले गए। बट रूरल एरियाज़ में बहुत सारे जो ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात जब हम करते हैं, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी ग्रुप ने काफ़ी क्रिएटिव वे में इस पैंडेमिक फेज को, और स्पेशली दे इंक्लूड द वुमेन विद डिसेबिलिटी आल्सो इन दिस एसएचजी ग्रुप, बिकॉज दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप इज कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रूरल वुमेन जो अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। मीन्स घर पे कुछ छोटे छोटे काम करते हैं, लाइक आप कह सकते हो कुछ खाने की चीज़ें बनाना, कुछ मैट्स बनाना, या इस तरह के जिससे थोड़ा बहुत अर्न आ सके। सो स्मॉल हेल्प ग्रुप आप कह सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो एक ये कम से कम ये हेल्प था कि चलो ठीक है, हमारे पास अगर इतना प्रोडक्शन है, कुछ खाने की चीज़ है, आप बड़ी पापड़, क्योंकि ये बहुत सारे शॉप्स या रेशन वाले चीज़ बंद थे, तो अगर आसपास के कम्युनिटी में लोग जानते हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर फीमेल शी यूज टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज एडिबल, जो खाने की चीज़ें हैं, जो आप एक फूड हैबिट होती है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फूड हैबिट सब कुछ रुकता है, लेकिन एक खाने की चीज़, मतलब खाना, भूख और सांस हमें पता है निरंतर चलती रहती है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक सोर्स था जो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इन रूरल एरियाज़, और ये काफ़ी हेल्प हुआ, और इससे बैरियर को फेस करने के लिए और एक्सेस करने के लिए लाइवलीहुड बैरियर को एक काफ़ी हेल्प मिला। अब अगर हम अर्बन कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज़ की बात करें, लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट की, तो यू कैन सी हियर वन ऑफ द केस, a lady working in corporate sector hard of hearing reported that during online meeting she was not able to comprehend everything and contribute accordingly. Hence the team members decides amongst themselves, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, अगर कुछ भी बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो आपने पूछ लिया, या फिर आप अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर आप नहीं पूछ पाए हो, लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं जस्ट सो दैट लेडी कैन ऑल्सो लिसन प्रॉपरली। बट मीटिंग में इतना पेशेंस सब लोगों को नहीं है, वो जल्दी जल्दी बोल के चले गए, बट द लेडी शी मिस मेनी इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में क्या पता चलता है कि उसकी जो भी रोल थी और बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए गए दैट वाज रियली हार्मफुल फॉर हर करियर। ये इस तरह की भी चीज़ें आती हैं द वन विद द लेडी, डिसेबल लेडी जो वर्किंग है। And another thing is about work-life balance for working disabled women, and this is a case that is reported to me. The lady was working online and work from home, and
during she was busy with the work and उसने बस सिंपली ये बोला अपने मदर इन लॉ को कि मम्मी आप कुछ पका दो, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट म्यूजिक मीटिंग में बिजी हूँ। सो उनकी मदर इन लॉ ने बहुत ही बुरी तरीके से शॉर्ट करके बोला कि ये मेरा काम नहीं, मतलब शी मिसबिहेव्ड। सो दिस इज अनदर वन ऑफ द ड्रॉबैक कि एक रूटीन टाइम होता है, रूटीन कल्चर होता है, तो आप ठीक है, आपको पता है कि ऑफिस टाइम में अगर आप जा रहे हो तो आप सुबह बनाकर चले गए और एक फिक्स टाइम होता है। तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें तितर बितर हो गई, जहाँ एक इंसान का जीवन ही तितर बितर हो गया, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से ये घर के आपसी मतभेद, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, फैमिली कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होने लगे, जिस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी मुश्किल होता गया। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस, जो आप सभी लोगों को पता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा रिपोर्ट होगा। एंड और जब ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने जब ये हेल्पलाइन शुरू किया तो एक दिन में मीन्स काफ़ी नंबर ऑफ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर और रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर फिगर, बट काफ़ी ज़्यादा मीन्स मोर देन 1000 और 100 शायद ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए about domestic violence. So this case also says that disabled women was found to be experiencing a cycle of abuse. Husband and wife are disabled. The husband lost his job, so they were unable to afford basic things like milk for their children. And this is one of the growing frustration that the one man was beating his wife, and his wife was beating their children. सो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये शिफ्ट होता जा रहा है साइकोलॉजिकल इश्यूज। आप कहते हैं ना कि ह्यूमन जो रिलेशन होता है एक चेन की तरह होता है। अगर आप खुद अफेक्टेड है तो आप किसी और को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद इतने एम्पावर्ड है तो यू कैन ऑल्सो एम्पावर अदर्स। सो लाइक दिस यू कैन सी हियर, यू ऑल कैन सी हियर कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़, और एक तो हो सकता है कि एक डिसेबल बंदा है, हस्बैंड है, वो जॉब लॉस के ट्रॉमा से या क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके बाद फिर ये क्राइसिस है इकोनॉमिक बर्डन कि वो बेसिक चीज़ अपने बच्चों को बेसिक चीज़, एक मिल्क भी नो कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन में वो वाइफ को मारपीट करता है, और वाइफ क्या करेगी बिकॉज शी डोंट हैव एनी ऑप्शन, और वो अपना अग्रेशन या जो भी इरिटेबिलिटी आप कह लो वो अपने बच्चे पे निकाल रही है। सो इन द लॉन्गर रन यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि इट्स अफेक्टिंग अ डिसेबल वुमेन गोइंग फर्दर, बिकॉज if a person is disabled in a family, it's not about that person himself or herself, it's about all family members, और कहीं ना कहीं वो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट करता है। आप इस केस से ये समझने वाली बात है कि एक तो ये वाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अगर ये ट्रॉमा एक बच्चे को मिले कि वो एक माँ बच्चे को पीटती हो, तो ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बिकॉज आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई कैन से कि ये कितना ट्रॉमेटिक होगा एक बच्चे के लिए, और ग्रोइंग फर्दर बच्चा एक इस तरह की फीलिंग से कि माँ मुझे मारती थी बचपन में, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करेगा, और किस हद तक करेगा वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक सिर्फ एक डिसेबल वुमेन को ही नहीं, पूरे हो सकता है गोइंग फर्दर ये समाज को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड अनदर केस ऑफ दिस same thing. In a case study, a 24 years old PG student from Chhattisgarh living with locomotor disability was forced to cook food for the entire family with the threat of neglect and withholding basic amenities if she did not do so. अगर फोर्स किया गया है क्योंकि चलो ठीक है हमारे पास ये ऑप्शन है कि 24 आवर्स अवेलेबल है, अभी पढ़ाई नहीं है, और वी ऑल नो कि हाउ डोमिनेटिंग ह्यूमन नेचर इज। एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है हम लोगों की कि जो दबा हुआ है उसको और दबाते चले जाओ। तो ये केस भी ऐसे ही है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स ने ही उसको ये धमकी देते और उसको ये इस तरह से ट्रीट करते कि अगर तुम पूरा टाइम या बाकी सारे दिन का खाना अगर तुम नहीं बनाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। सो हाउ डिफिकल्ट इट कुड बी फॉर दैट गर्ल कि अपने फैमिली मेंबर से ये बोल रहे हैं कि यू आर रियली फोर्स्ड। एक होता है कभी कभी बना लिया, एक फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ आपको बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आप डिसेबल है बोलकर आप छोड़ दो। कभी कभी वी नो कि मोस्ट ऑफ द डिसेबल women आर रियली मच एक्टिव इन देयर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। तो
अब ये लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको प्रेशर देकर और ये धमकी देकर ये कहना कि ठीक है अगर आप नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी या फिर आपकी बेसिक जो भी बेसिक सर्विसेज या आप कुछ भी कह लो, मोबाइल नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए या फिर इस तरह की चीज़ें रुक जाएगी. So this case also states that thing. Another very important thing is burden. Burden we all know कि burden तो एक normal इंसान के डेली लाइफ में भी कितना पेनफुल होता है, एंड एक्चुअली एक डिसेबल वुमेन के लिए कितना पेनफुल होगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है. So this is another case that actually being homebound was not easy for many disabled women, including me. My house is not very accessible, which means I can neither go upstairs to the roof nor can I go downstairs for a stroll. Means अब घर तो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है. अब दिस पर्टिकुलर लेडी के साथ क्या होता है कि नॉर्मल रूटीन में सुबह शाम फादर या ब्रदर कभी नीचे ले गए कभी ऊपर ले गए हेल्प करके, बट अब इतनी कंटिन्यूअस टाइम के लिए घर पे ही रहना है, आप महीने महीने तक घर पे रह रहे हैं और बस यही रूटीन अगर रहे तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा. और कभी कभी ये एक फीलिंग भी आती है कि किस मुंह मैडम आवाज बंद हो गई है. इसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मैम. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हेलो. हाँ जी सर, अभी आ रही है. हाँ अब आ रही है मैडम. हाँ तो नॉर्मल रूटीन में जब ये क्वारंटीन और सुबह शाम घर में रहना इतना मुश्किल हो जाए तो कोविड-19 में आप समझ सकते हो कि किसी और से नहीं मिलना नहीं जाना ये कितना मुश्किल होगा. और इस तरह से बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो गया डिसेबल वुमेन के साथ, जहाँ पे आप दिन रात ये फील करते हो कि आपका फैमिली मेम्बर आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेगा. अनदर गति कॉल आ रहा है. Another very important thing is digital technology, and we all know कि ये digital technology और we are now much into this digital era जहाँ पे everything is more dependent and more dependent on the digital medium. Classes की बात करें, even जो conference अभी हम लोग attend कर रहे हैं, ये we are very thankful कि digital माध्यम से हम ये कर पा रहे हैं और इसको हम सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में और डिसेबल वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बैरियर, बिकॉज बहुत सारे स्कूल गर्ल्स ने एंड एडोलेसेंट गर्ल्स ने रिपोर्ट किया है कि मैम काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम अगर घर पे होती तो हम स्कूल में अपने टीचर्स को या अपने क्लास टीचर्स को या जो भी स्कूल काउंसलर्स या स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको हम शेयर कर पाते. बट ऑनलाइन क्लासेस जब होती तो देर इज़ नो कॉन्फिडेंशियलिटी और उस वजह से हम क्लास में बहुत सारे कुछ बोल भी नहीं पाते. एंड वन ऑफ द केस आई नो, और ये केस काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था जहाँ पे क्लास में एक बच्ची ने कुछ बोला और शी वॉज बुलीड एंड अल्टीमेटली शी अटेम्प्टेड सुसाइड. तो इस तरह के भी केसेस आते हैं. सो कहीं ना कहीं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी भी विमेन फीमेल गर्ल्स के लिए इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव थिंग, और आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए फ्रूटफुल नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज. Health and hygiene, we all know health and hygiene, how it was important during this COVID phase. And during this COVID phase, there are many things which was not available, especially talking about health workers and non-availability of physiotherapists. This was a specific case that has been reported by one of the disabled women. Because of Corona, she was there in 3rd floor, and जो भी डिलीवरी बॉय था उसने यूजुअली टाइम पे क्या होता है कि वो ऊपर फ्लोर तक पहुंचा देता जो भी सामान था, ये ग्रॉसरी था. बट ड्यू टू कोविड उसने नीचे ही रख दिया और दिस लेडी शी हैज़ टू लिफ्ट दोज ग्रॉसरीज. और उस ग्रॉसरी को उठाने की वजह से पेन काफ़ी शुरू हो गया एंड शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप. कितने रातों तक वो नहीं सो पाई थी और फिजियोथेरेपिस्ट भी उस टाइम भी अवेलेबल नहीं थे. तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं. एंड ऑल्सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी पैड्स. वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह पे
और ये काफ़ी जगह पे नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट आप लोगों में से कितने लोगों ने ये देखा है कि उस राशन किट में सैनिटरी पैड्स भी होंगे? नहीं थे। गवर्नमेंट ने जो भी प्रोवाइड करा था राशन, उसमें सैनिटरी पैड्स नहीं थे। दैट वी कैन नॉट ओवरलुक। और आई नो पर्सनली मेनी एनजीओ जिन्होंने इस तरह के बेसिक नीड्स वाले चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करा है, और इससे काफ़ी हेल्प हुआ है एडोलेसेंट गर्ल्स को, जहाँ पे हम हाइजीन और हेल्थ की बात करें। एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पोस्ट कोविड। बहुत सारे हमारे फीमेल जो भी दिव्यांगजन हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट करा है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद जब उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आया, तो दे वर नॉट एबल टू कोप। इस चक्कर में या तो वो कहीं बेहोश होकर गिर गए, या इस चक्कर में वो इतने वीक हो गए कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इट वाज अ एक्सट्रीम एक्सपीरियंस फॉर देम just to face the first menstrual cycle after COVID, because सभी लोग जानते हैं कि कोविड एक तरह से इम्यूनिटी लो कर देता है, और इम्यूनिटी लो की वजह से बॉडी उतना ये नहीं है, और इस तरह से और उसके बाद कोविड के बाद मेंस्ट्रुएशन आना कितना डिफिकल्ट होगा एक फीमेल के लिए, और स्पेशली एक वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए, जहाँ पे आपको और भी चैलेंजेस हैं। यूज ऑफ मास्क फॉर कंटिन्यूस लॉन्ग आवर्स। So one of the case of adolescent special child, she was having a issue of drooling, जो एक होता है ना, क्या कहते हैं, लार हमेशा चूता रहता है, या फिर आप जो भी बोले उसको, इट्स कॉल्ड ड्रूलिंग। हमेशा पानी आता रहना मुंह से। तो उस कंडीशन में आप ये सोचो, जब ऐसे केसेस के लोग, स्पेशली जब इंटेलेक्चुअल डिफिसिट कैटेगरी की हम बात करें, और जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करें, उस तरह के केस में बहुत सारे लोग जब मास्क यूज़ करते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। और नॉर्मल मास्क में आपको बहुत सारे अगर आप घंटों तक यूज़ कर रहे हैं तो आपको रैशेज हो जा रहे हैं, दाने हो जा रहे हैं, खुजली हो जा रहे हैं। बट अगर उस तरह से अगर आप कंटिन्यूस ड्रूलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में मास्क यूज़ करना इज़ नॉट कम्प्लीटली हाइजीनिक। और ऐसा भी नहीं है कि यू हैव दैट मच एक्सेसिबिलिटी कि आप ये कह सकते हो कि तुरंत के तुरंत आप एक एक घंटे में या दो दो घंटे में मास्क चेंज करो। ये भी आपके पास प्रोविजन नहीं है या फैसिलिटी नहीं है। सो मूविंग फर्दर, ये सारे 10 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जो आई थिंक इट हैज़ गिवन अ लॉट आइडिया कि किस तरह से अफेक्ट करा है वुमेन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी को। बट ये सारी चीज़ मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है। लेकिन when I was going through some of the researches कि चलो और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, इसकी बात अगर मैं करूँगी या मैं बताना चाहूँगी अपने प्रेजेंटेशन में, I was able to find only this comprehensive study that is done by Rising Flame and Sight Favors, and these are the very reputed NGOs that which is working very proactively। and इस कोविड फेज को उन्होंने इस रिपोर्ट में नाम दिया है neglected and forgotten, which was published in May 2020। और इन्होंने 19 स्टेट से लिया है, मतलब अक्रॉस, मतलब हर जगह से उन्होंने इस तरह के डिसेबल वुमेन को इंक्लूड करके और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके अलावा मुझे वेस्ट के कुछ स्टडीज़ तो मिले, बट इंडियन लेवल पे ऐसे स्टडीज़ नहीं मिले जो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, दैट मीन्स देयर इज़ अ नीड फॉर मोर रिसर्चेज। वी आर द प्रोफेशनल्स। इसमें मैं अपने आप को भी कह सकती हूँ कि इस तरह के रिसर्चेज और भी करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और आप लोगों में से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल है, वो भी दे कैन ऑल्सो प्लान सम फर्दर रिसर्च सो दैट वी कैन ऑल्सो लुक आउट कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल सोच ही ना पा रहे हों। वी आर कंटिन्यूसली टॉपिक अबाउट मेनी थिंग्स जो सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नई चीज़ें निकल कर आएंगी, और वी नो कि ये वायरस ने हम लोगों को कैसे चेंज कर रहा है, और इसके लिए हमें क्या एक प्रिपेयर्डनेस होगा, हम कैसे आगे अपने आप को तैयार रखें। बिकॉज वी कैनॉट से कि ठीक है इस फेज के बाद या अब मार्च के बाद ये नहीं होगा। जिस तरह से हम और क्रॉनिक डिजीज के साथ जीना सीख रहे हैं, उसी तरह से हम, मुझे लगता है, कोविड के साथ भी जीना सीखना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ नीड फॉर रिसर्च एंड ऑल्सो वी कैनॉट से कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, और मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन 2 चीज़ों के बारे में जानती हूँ विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस कोविड-19 आउटब्रेक।
एंड आई थिंक आप लोगों में से किसी किसी को पता ही होगा, RCI in collaboration with RCI has launched a program that is community-based inclusive development program that aims to create a pool of grassroots rehab workers at the community level who can work alongside the ASHA and the Anganwadi workers to handle cross-disability issues and facilitate the inclusion of the persons with disabilities in the society. क्योंकि we all know primary caregivers जो health workers जो हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो बेसिक हेल्थ के इंजेक्शन लगाना है या फीवर हो रहा है, जो भी बेसिक हेल्थ वाली चीज़ें वो कर पाते हैं। बट अगर किसी को ऐसे डिसेबिलिटी वाली बात हो गई है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ठीक है इस टाइम पे अगर डिसेबल लोगों के लिए बहुत सारे प्रोविजन है कि अगर वो डिसेबल है, कोई अगर फैमिली में डिसेबल है तो उनके पास अगर राशन कार्ड है तो दे कैन बी प्रोवाइडेड एडिशनल रेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा राशन मिलेगा उनको। हो सकता है हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के नाम पे राशन कार्ड हो, लेकिन अगर फैमिली मेंबर में एक और एक डिसेबल है तो वो राशन डबल हो जाएगा। बट वी ऑल नो कि इस टाइम पे सर्टिफिकेट बनाना या राशन कार्ड बनाना, इस तरह की चीज़ें कितनी डिफिकल्ट हो गई थी। तो जो लोग ग्रासरूट लेवल पे जुड़े हुए हैं, NGO वर्कर्स है, उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आई हैव सीन पर्सनली कोई ब्लॉक के जो इंचार्ज होते हैं, जो लेडी होती है सुपरवाइज़र, दे वर नॉट अवेलेबल। उनको कॉल करने पे वो ये कहते हैं कि मैडम जान रहेगी तभी तो नौकरी कर पाऊँगा, मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने नहीं बोला है वहाँ जाने को, तो मैं उस ब्लॉक में नहीं जा सकता। सो दे वर हैप्पी इन अर्बन एरियाज। दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड। अब इस पे कोई कितना प्रेशर कर पाएगा, क्योंकि वहाँ उनको नौकरी के लिए जान की पड़ी है। तो जो लोग कम्युनिटी में हैं उनके लिए दिस पर्टिकुलर कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइन, और आप लोगों में से जो लोग चाहते भी वो भी कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द RCI website, and this CBID course has been co-designed by the Rehabilitation of India and University of Melbourne। और ये MOU 2018 में ही साइन हो चुकी थी, लेकिन जब लगा कि इसको, और उस समय लगा कि ये करना सही होगा या नहीं होगा, बट जब लगा कि कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, इन द 2019 दे हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम, एंड आई थिंक फर्स्ट सेशन के एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड द कोर्स इज ऑन गोइंग। और रिसेंटली आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली हमारा बजट हम लोगों को मिला है 2022 का बजट, और उसमें गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू लॉन्च टेली काउंसलिंग टू एड्रेस मेंटल हेल्थ। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस तो हो रही है, बट इफ वी आर एबल टू गाइड देम प्रॉपरली कि ठीक है, अगर कोई पैनिक हो रहा है या बहुत डर रहा है या बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, बहुत चिंता कर रहा है कि मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूँ, डर के मारे कोई कुछ कर रहा है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा फॉरेन में वहाँ पे अटक गया है, मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। दिस काइंड ऑफ इश्यूज वेर देयर। अगर इस कंडीशन में आप थोड़ा सा भी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की तरफ ध्यान देंगे, और वी हैव डन सो मेनी काउंसलिंग ड्यूरिंग दिस इन द पास्ट ऑल्सो ड्यूरिंग कोविड फेज, और काफ़ी केस हम लोगों ने इस तरह से हैंडल किए और दे वर एबल टू कोप विद दैट सिचुएशन। तो ये कोविड-19 का ही रिजल्ट है जहाँ पे हम टेली काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। और टेली काउंसलिंग ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे होगा, ये होगा तो ये कोशिश पूरी होगी कि हर लेवल पे या हर कॉर्नर ऑफ इंडिया पे ये पहुंचे। एंड दिस इज अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट, एंड इट वाज अनाउंस्ड ऑन 1 February 2022, एंड टुडे इज 5th ओनली। एंड और आगे के लिए मैं जो वे फॉरवर्ड जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, और मेरे जो एक कंक्लूजन निकल सकता है मेरे प्रेजेंटेशन से, और रिकमेंडेशन हो सकता है कि आगे और क्या करना चाहिए डिसेबल वुमेन के लिए, जस्ट टू रूल आउट कोविड थिंग्स, और जस्ट टू कंपनसेट करना तो मुझे लगता है सही नहीं होगा, बट कुछ हद तक जो भी चीज़ कंपनसेट किया जा सकता है वो करना चाहिए, किया जा सकता है। सो वी कैन प्लान, ये ऑलरेडी है, बट RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ उसमें हाईलाइट हो रही है, क्या वो पूरी हुई है, और वो डिसेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में या कोविड-19 की क्राइटेरिया या उसकी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करिए। सो देयर इज अ नीड टू revise this disability inclusive guidelines again in context of COVID-19, or we can say pandemic. Another thing could be accessibility and access, कैसे access करें। तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है फॉर ब्रॉडकास्टिंग, जैसे इंफॉर्मेशन हम सब लोग ये जानते हैं कि अभी आरोग्य सेतु, पेटीएम यूज़ करना, भीम ऐप या इस तरह के ऐप यूज़ करना कितना ईजी हो गया, लेकिन द वन हु इज़ डिसेबल, the one who is blind, the one who is having some suppose having some
फिजिकल डिसेबिलिटी, फिंगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसके लिए वी आर रियली बाउंड कि उन लोगों के लिए किस तरह से यूज या किस तरह से क्या चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ accessing those things which is very common for others. So broadcasting information अगर होगा, sign language, जैसे आई एम वेरी हैप्पी कि आज के कॉन्फ्रेंस में दिस इज ऑन ऑल्सो वन अनदर ग्रेट अचीवमेंट कि पहले से भी हम लोग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में करते आ रहे हैं ये चीज़, और अदर कंट्रीज तो काफ़ी ज़्यादा करती है, बट हम ये नीड को समझ रहे हैं कि साइन लैंग्वेज की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से जो भी हमारे कोविड-19 गाइडलाइंस और जो भी ब्रोशर हैं, हैंडआउट्स है, वो सारे रिटन है, गवर्नमेंट ने भी जो भी हैंडआउट्स बनाए, ब्रोशर बनाए, पॉम्पलेट्स बनाए, वो सारे रिटन है, बट ऐसा कुछ करना चाहिए जो सारे डिसेबिलिटी की कैटेगरी को भी के लिए भी यूजफुल हो। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, या फिर जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी एक चैनल या जो भी अथॉरिटी फिगर है, उनके साथ हम ये अश्योर कर सकते हैं कि जो भी हमारे डिसेबल पॉपुलेशन है, उनके लिए डोर स्टेप रिसिपिएंट्स के लिए हम फूड और अदर एसेंशियल थिंग्स वो प्रोवाइड करें। और also like community based services, so we all know ki this community based rehabilitation thing is very important. Whenever we talk about disability, without talking CBR, we cannot say that the disability topic is covered. तो community based rehab और services की बात हमेशा आएगी, और इसको और किस तरीके से इट्स ठीक है, हमने CBID प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, बट एक कोर्स लॉन्च करना या इंफॉर्मेशन लॉन्च करना ही काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए हमें और भी कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारी चीज़ करनी पड़ेगी, जिससे अपलिफ्टमेंट हो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इतने प्रयास के बाद 2005 में हमें ये DV एक्ट मिला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मिला, बट वी कैन रिवाइज दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWD, और इसमें डिसेबिलिटी को भी जोड़ सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कुड बी DPOs, जैसे मैंने पहले बोला, दे आर वेरी मच एक्टिव, और मुझे अदर स्टेट के बारे में तो नहीं पता, बट झारखंड में वो लोग काफ़ी एक्टिव हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मेनी NGOs, और वो निरंतर डिसेबिलिटी कमिश्नर झारखंड से मिलते रहते हैं, जो भी बात होती है उसको उनको बताते रहते हैं कि ये नीड है सर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में आपको ये करना चाहिए, स्पेशल एजुकेटेड नहीं है, और इसका ये परिणाम है कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा तादाद पे स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। तो इस तरह से भी हम प्रयास कर सकते हैं जस्ट रूल आउट वुमेन विद डिसेबिलिटी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइकोसोशल डिसेबिलिटी, जो नामिका ने ऑलरेडी बताया है कि साइकोसोशल डिसेबिलिटी इज बेसिकली अगर आप साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए, या उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आप बार बार लड़ाई कर रहे हैं, चिड़चिड़ा है, तो इस चीज़ को भी रूल आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वी ऑल नो कि वी हैव DMHP प्रोग्राम, लेकिन बहुत सारे स्टेट में DMHP प्रोग्राम दैट इज़ अबाउट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसके तहत इस तरह से अगर और भी चीज़ें ऐड कर दी जाए जस्ट टू गिव मोर फोकस ऑन वुमेन विद डिसेबिलिटी, तो हो सकता है हम और चीज़ें और भी हेल्प डिलीवर कर पाएँ। And at last, I can say, inclusion is effective only with direct participation of excluded and discriminated persons, especially disabled women. Nothing about us without us. These are the references. Thank you. And I would like to just quote here in the morning, Mr. Paul mentioned that living life itself is a challenging task. So बहुत सही बात उन्होंने कही, मुझे बहुत इम्प्रेसिव भी लगा, और ये लगा कि कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि जीवन जीना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग है, और उसको से जीवन जीना है, आपको जिंदा रहना है, और कोविड के साथ भी रहना है, डिसेबिलिटी के साथ रहना है, तो इट इज़ गेटिंग मोर डबल्ड। सो वी नीड टू प्लान एंड वी नीड टू रियली थिंक अबाउट कैसे हम इस चीज़ के लिए निरंतर और सबके साथ प्रयास करना है। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैडम से पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी मैम,
मैम कोविड में हम हाँ जी। सोशल रिलेशनशिप को कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे बचा कर रख सकते हैं? ये आप नॉर्मल इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या डिसेबल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? डिसेबल के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि डिसेबल के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं ये बोलूँगी कि मैंने ये देखा है और ये हुआ भी है, जैसे कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज हो गए या फिर जो एनजीओज हो गए, उन्होंने निरंतर ये प्रयास करा है कि वो टाइम टू टाइम ऑनलाइन पेंटिंग हो गया, ऑनलाइन डांस प्रोग्राम हो गया, ऑनलाइन कुकिंग हो गया, तो इस तरह से एंगेज करते रहे हैं वो। और ऑब्वियसली भी हम लोगों को पता है कि डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, उसके बिना हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे कोविड से। तो आपको ये दूसरा मीडियम निकालना पड़ेगा कि बेसिकली आप कैसे एंगेज रहें, और अगर आप एंगेज है तो आप किसी को मिस नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे डिसेबल चिल्ड्रन के लिए और डिसेबल पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे एनजीओ ने निरंतर प्रयास किए हैं ये, कि आप जुड़े रहें। वो पूरे दिन का एक प्रोग्राम करते आ रहे हैं, या वीकली करते आ रहे हैं, या फिर अगर आप खुद कर ले उसको बताएं, इस तरह से प्लान किया जा सकता है। कम्युनिटी लेवल पे भी कम्युनिटी पे भी आप एक चेंज मेकर चुन सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी की बात करें, विलेज की बात करें, अगर जो प्रोएक्टिव है, जो बहुत काम कर रहा है, या जो भी डिसेबल आपका फ्रेंड एक्टिव है, आप उनको बोलिए कि आप कम्युनिटी में ये चीज़ करिए, और क्योंकि आप कोई और तो नहीं जा सकता है, लेकिन आप ये करके बाकी लोगों को एंगेज कर सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह से प्रयास किया गया है और ये काफ़ी इफेक्टिव रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम। किसी का और कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है कोई? सर मैं ये कहना चाहूंगी, मैम को ये बताना चाहूंगी कि मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन दिया एंड हमने बहुत ही इंजॉय किया इस सेशन को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं बस एक फोटो दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि आपने पूछा कि एंगेज कैसे किया जा सकता है। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं? ये फोटो आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ यस मैडम, आ रहा है। हाँ, आप देखिए ये जो गर्ल है ना, ये जो लड़की है, नहीं मैम, ये जो लड़की है, शी इज स्पीच इम्पेयर्ड, शी इज हैविंग स्पीच इम्पेयरमेंट। मैम नॉट विजुअल मैम। वेट आ रहा है। मैम यस अभी दिखा दिख पा रहा है? नॉट शोइंग। लिख मैम। एक सेकंड। तो मैं वहीं पे दिखाती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि द गर्ल इज नॉट एबल टू हियर, बट हर सिस्टर इज गाइडिंग हर कि आपको डांस कैसे करना है। वो म्यूजिक तो नहीं सुन पा रही है, बट शी वाज गाइडिंग। तो डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साथी जुड़ी है, ये फैमिली मेंबर्स पूरा सपोर्ट करेगा, एक पूरा समाज होना चाहिए जो सपोर्ट करे। So she was guiding her. This was a program that we have organized at Ranchi, and especially for the disabled children. कोई क्वेश्चन है? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो इस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर मैम ने अभी आप लोगों को बताया है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हाँ, बहुत ही नॉलेजेबल रहा और फ्रूटफुल रहा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपने जो कई क्वेरी रही होंगी उसका समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है मैडम से। जी प्रदीप जी। हाँ जी सर, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ नीरज सर। सर एक बहुत बड़ा सर, ये जो कंफ्यूजन वाली बातें हमेशा रही हैं, कुछ जगह हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी लेते रहते थे, या वैसे भी कि जो वायरस का जो साइज होता है सर,
वो लगभग जो है 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। तो क्या ये जो मास्क का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मास्क से क्या ये फिल्टर होता भी है या इसका क्या है सर? बहुत कंट्राडिक्शन बहुत इसमें देखने आता है सर। बहुत से विशेषज्ञ बोलते हैं, जिनके राय लेते हैं तो बताते हैं सर इससे जो है इतना साइज छोटा होता है कि इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता किसी भी तरह के मास्क से। और गवर्नमेंट जो है अभी जिस तरह से मैं बताना चाहूँ सर, मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं सर यहाँ पे विदाउट मास्क के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में सर 2000 रुपये का चालान है और मैं चालान ड्यूटी में ही ड्यूटी करता हूँ। लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट मैं खुद नहीं कंफ्यूजन में रहता हूँ, क्या वास्तव में क्या वायरस को फिल्टर किया जा सकता है मास्क से? इस विषय में कुछ सर डिटेल जानकारी मिल पाएगी सर? आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैम से पूछ सर रहे हैं? आप यदि बताएं या फिर निधि मैम भी बता दें, आप दोनों लोग कोई भी सर कुछ मैं जी। इसमें सर मैं पहले अपने तरफ से जो पहले सबसे पहले तो शायद मैं अप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं हूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने में, जी लेकिन जहाँ तक अभी तक जो भी नॉलेज है या फिर जो भी सुना है या फिर जो भी लोगों ने बताया है उसके बेसिस पे जी एक हम बात कहते हैं ना कि जहाँ कुछ नहीं तो कुछ तो सही। तो ये वही वाली बात है जो मैं एक अश्योर कर सकती हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज है कहते हैं ना, नेचर को कोई रोक नहीं सकता या उससे कोई कंपटीशन कर नहीं सकता, और हम उसके आगे एक ह्यूमन बॉडी बहुत ही कम मतलब छोटी सी चीज है, थोड़ा सा गिर गया, सर पे चोट लग गई, कुछ नहीं बचता है, कॉमा में चले जाते हैं, इस तरह की जी चीजें। जी तो जी, जी मैम। प्रोटेक्शन 3 लेयर्स, साइंस और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम 3 लेयर की प्रोटेक्शन अगर करें और ही मास्क, अगर क्लोथिंग मास्क, अगर कपड़े वाला भी मास्क है, अगर N95 नहीं है तो भी, अगर क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी N95 मास्क बहुत लोग यूज नहीं करते, उनको चाहिए सॉफ्ट कपड़ा, मुलायम कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक है। तो अगर आप 3 लेयरिंग के भी मास्क यूज करें, बहुत से हमारे एसएचजी महिला लोगों ने इस तरह के मास्क भी बना के जी डिस्ट्रीब्यूट मैम। करे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तक उसे हेल्प करता है जहाँ पे आप बिल्कुल ओपन, जहाँ पे आप मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही व्यू और है। इन्फेक्शन के मामले में मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूंगा। कोरोना के लिए हमारे साथ में मैम एक टीचर, एक मैम थी, उनके जो है ससुर जी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था। वो हार्ट के पहले से पेशेंट थे, तो वो एक्सपायर भी हो गए। और उनसे जो है, जो हमारे साथ में जो मैम थी उनको हुआ, उनके हस्बैंड को भी इन्फेक्शन हो गया था। और उनकी जो सासू जी थी, और कोई और तो था नहीं, तो सासू जी को खुद ही वहीं खाना बना के देती थी, हालांकि प्रिकॉशन पूरा करती थी। तो वे भी प्रभावित हुई, उनके हस्बैंड भी प्रभावित हुए। और जो सासू जी थी वो एज तो लगभग 72 के आसपास रही होगी, लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो बिल्कुल सकुशल हैं, अभी भी हैं। उनके ससुर जी को चूंकि हार्ट पेशेंट थे तो वो एक्सपायर भी हो गए मैम। तो इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन देखने को आता है कि एक ही फैमिली में उनको हुआ, उनके माध्यम से ये प्रॉब्लम आई, और उन 2 लोगों को हुआ, और उनको सासू जी साथ में उन्हीं मैडम ही खाना बनाया खिलाया देती थी, लेकिन उनको नहीं इसका कोई प्रभाव पड़ा मैम। तो ये समझ में नहीं आया कि वास्तव में वायरस का इन्फेक्शन होता कैसे है, कहाँ से हो रहा है, इसका मेन क्या फंडा है। ये तो बिल्कुल एक अबूझ पहेली की तरह ही बना हुआ है मैम। नहीं, मैं बता रही, इसका फंडा यही है कि आपको मास्क बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाना। आप अगर ये सोचे कि आपने 1 सेकंड के लिए भी हटाया है, क्योंकि ये जो केस आप कह रहे हैं, ये केस हमारे एक कलीग के साथ हुआ जो यूनिवर्सिटी में, एंड हमारे वीसी, प्रो वीसी, पूरे फैकल्टीज को सेकंड वेव में ऐसा हुआ कि एक लोग बाहर गए थे, उसकी वजह से पूरे कॉलेज को हो गया। बट मेरे बगल में जो मैम रहती थी उनको नहीं हुआ। मैंने पूछा कि आप तो उनके साथ एक मीटिंग में थी, क्योंकि कॉलेज फंक्शन कर रहा था, टीचर्स जा रहे थे, क्योंकि रेसिडेंशियल कॉलेज है हमारा फैकल्टीज के लिए। तो मैंने पूछा कि आपको कैसे नहीं हुआ? मैम वीसी से सबको हो गया, उनकी वाइफ वगैरह पूरे बिल्डिंग को हो गया, आपको कैसे नहीं? तो शी टोल्ड मी कि मैम उन्होंने पानी ऑफर किया था, लेकिन मैंने एक बार भी मास्क हटाया नहीं, मैंने वहाँ पानी भी नहीं पिया, और वो वीसी सर के बगल में ही बैठी थी। तो इसका एक ऑप्शन यही है, और जो जो WHO ने भी बताया कि आपको मास्क बिल्कुल ही 1 सेकंड, आप ये सोच रहे हैं क्योंकि एयरबॉर्न भी तो है ना, जी मैम। आप अगर 1 सेकंड जी के लिए मैम। हटा रहे तो हो जाएगा। और बहुत सारे रिसर्चेस अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है आपको ये बहुत लोगों को पता भी है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। और मास्क लगाने का कॉन्सेप्ट ये जो है ICMR ने हमें जो दिया है, ये बहुत कुछ सोच समझ के कई साइंटिस्ट बैठ करके इसके बारे में विचार करके
यह कॉन्सेप्ट हमें दिया है, तो जरूर जी इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हाँ होगा। हाँ जी, ये तो होगा ही सर, बिल्कुल है सर ना? जी तो ये जरूर परम अणु है, विषाणु तो है लेकिन ये परम अणु है, बहुत छोटा है। जी कभी एक लेयर नहीं, 2 लेयर की या 3 लेयर की मास्क लगाने की बात ICMR करता है, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जी सर और कोरोना से अगर बचना है, अदरवाइज नहीं तो संक्रमण तो फैल ही रहा है। जी जी तो थैंक यू सो मच मैम। निधि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अब सर। कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं और बिल्कुल टाइम हमारे पे है सर हम कन्वीनर लोग। हमारे कन्वीनर डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ला सर, HOD BEd राधे हर PG कॉलेज काशीपुर उत्तराखंड, हमारे बीच है सर। दिन भर में कुछ प्रॉब्लम थी तो सर उपस्थित नहीं हो पाए, तो हमारे समक्ष इसमें सर उपस्थित हैं और उनका थोड़ा सा उद्बोधन सुनेंगे, फिर हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। सर प्लीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय का जो शुभारंभ हुआ, मैं कुछ अपने निजी कारण से जुड़ नहीं सका, लेकिन कनेक्ट रहा। मैं बराबर इनॉग्रेशन सेशन तक जो है कंटिन्यू रहा। और सबसे पहले तो मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजिंग टीम निमपेट और IHR पटना, MT यूनिवर्सिटी, गांधी आश्रम वाली इंडोनेशिया, मधुमेह एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन अयोध्या, मैं अपने समस्त कोलाबोरेशंस के जो हमारी टीम है, जो यूनिवर्सिटीज हमारे साथ में मिल करके इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ी, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज का जो हमारा इनॉग्रेशन सेशन रहा, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आए जिनके कारण से बीच बीच में डिस्कनेक्टिविटी हो गई। अदरवाइज हमारे साथ में हमारे मित्र भी हैं और पद्मश्री से अवार्डेड भी हैं, मिस्टर उदयना सर फ्रॉम इंडोनेशिया, नचकेता सर, रामचंद्रन सर, और हमारे जो चीफ गेस्ट प्रोफेसर कपिल देव द्विवेदी, वाइस चांसलर रानी दुर्गावती, प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। और मैं विशेष रूप से आज मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, हमारे मित्र भी हैं और इस कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर भी हैं, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी, जिन्होंने आज के इस कॉन्फ्रेंस को मॉर्निंग से लेकर के और टेक्निकल सेशन तक सर ने बड़ी ही बखूबी और बड़ी ही जो है लग्नता के साथ इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक पहुंचाया। साथ ही साथ मैं डॉक्टर नीरज तिवारी जी का, डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी सर, इन दोनों का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस की यहाँ तक की जो नींव रखी गई और इस पड़ाव तक पहुंचने की जो कोशिश की, उसमें बहुत ही उनका योगदान रहा। और बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़े मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस समय भी हमारे CRE प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं। इन सभी पार्टिसिपेंट्स का विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारा जो टॉपिक था, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद वेरियस डिसेबिलिटीज इन पोस्ट कोविड-19 एरा, इन पर अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग के इनॉग्रेशन सेशन से लेकर के और अभी CRE प्रोग्राम में बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के बातें आई, जो हमें लगता है कि केवल सुनना मात्र ही नहीं, जब तक हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम इसे रियलाइज नहीं करेंगे और जब तक हम उनको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज सार्थक हो पाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे कह लीजिए कि जो एक सार के रूप में जो एक निचोड़ निकल करके आ रहा है, उन सभी बातों को हमें सीखना है और जीवन में उतारने की हमें आगे कोशिश करते रहें।
इस माध्यम से ही हम अपने कॉन्फ्रेंस को सफल पूर्वक बना सकते हैं। और सीआरई प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि अभी बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट्स ने बड़े अच्छी तरीके से अपने पेपर प्रेजेंट किए। क्वेश्चनिंग सेशन में भी क्वेश्चंस भी जो है, अभी लास्ट में जो क्वेश्चन चल रहा था मास्क को लेकर के भी, तो बहुत अच्छा जेन्युइन उन्होंने क्वेश्चंस उठाया, इस बात को मुझे लग रहा है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के ही हमें सीखना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत समस्त पार्टिसिपेंट्स का और हमारे इस सीआरई प्रोग्राम में इस समय जो अध्यक्षता कर रहे हैं मैडम, मैं उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, दिन भर से आपका इंतजार था सर, और आपका आना हमारे लिए बहुत ही सुखद रहा। कम से कम आप आए तो लास्ट में सर। हम समझ सकते हैं आपके लिए कुछ आज प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, कुछ व्यक्तिगत, तो जिसके कारण आप उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन अंत भला तो सब भला, आपका आना हमारा सब कुछ भला हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार हम फिर से आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। निधि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजोनी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, अनामिका मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ईशा मैम आपका भी बहुत धन्यवाद। ये लास्ट के हमारे 4 क्लासेस चले, जो रिसोर्स पर्सन थे, हम आप सबको विशेष आभार प्रकट करते हुए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। और कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे से। आप सब रेडी रहिएगा और पेपर प्रेजेंटेशन होगा। हालांकि आप लोगों का जो सीआरआर पॉइंट का ये कार्यक्रम है, ये 3:35 से होगा, बट पेपर प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सुबह के साथ, एक अच्छे दिन के साथ। आप लोगों को ढेर सारी बधाई। और धन्यवाद रहा सर। सीआरआर पॉइंट के लिए एवोल्यूशन का, तो उसका रात में हम आप लोगों को थैंक यू सर। माइक ऑफ कर दें। थैंक यू सर। हाँ, आप लोगों को वो जो एमसीक्यू का लिंक है वो रात को आपको कभी भी मिल जाएगा, और उसको आप कल 12 बजे तक पूरा करिए, कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो आराम से करके रात तक आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके एवोल्यूशन टेस्ट का। सर हेलो, यस, इवैल्यूएशन फॉर्म व्हाट्सएप थ्रू आएगा या? हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप ग्रुप में, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल 12 बजे तक करना है, ठीक है? ओके तो सर। हमारे और बहुत सारे उपस्थित रहे। एक मिनट, हमारे और भी बहुत सारे मित्र उपस्थित रहे। विशेषकर आनंद सर, हमारे आनंद इंगोले जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका विशेष रूप से हमारे साथ सहयोग रहा है। वो पर्दे के पीछे हमारा सहयोग करते रहे हैं। और आनंद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमारा सहयोग किया इस कार्यक्रम को कराने में। सर तो मेरा एक आप क्वेश्चन सबका है। एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए रात में 11 बजे से पहले हम आप लोगों को एवोल्यूशन टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और फिर रात कल 12 बजे तक उसको पूर्ण करके आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो नीरज सर। थैंक यू सर। आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू सर। समझ में नहीं आया। ग्रुप तो एडमिन मोड में है ना। बजे भेजेंगे, हमें रात के 12 बजने से पहले भेजना है। Session and it was wonderful to be the part of this session. Thank you very much. Thank you very much, sir. हेलो सर। ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द ग्रुप। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द ग्रुप। हेलो सर। ओके, थैंक यू सो मच। लॉबिनी। हेलो सर, व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है सर? कांटेक्ट करें, हम आपको ऐड कर रहे हैं अगर आप ऐड नहीं है तो। हाँ सर, मैं हरीश चौहान ऐड नहीं हूँ सर उसमें, ग्रुप में सर। नमस्ते सर। ओके, नमस्कार सर। मुझे कॉन्टेक्ट ग्रुप में सर ऐड करा सर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर, हरीश चौहान। हरी जी, आप मुझे मैसेज करिए मेरे नंबर पर, हम आपको ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। आप
तो एवोल्यूशन टेस्ट हाँ आपके सर। पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी सर। सर आपके नंबर कौन से है सर, व्हाट्सएप नंबर मेरे को सर? आनंद से पूछ लीजिए, आप आनंद जी के कॉन्टेक्ट में है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, इनको ऐड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। आप मुझे आप कॉल अपनी कीजिए, मैं तरफ से ऐड डिस्कनेक्ट करूंगा। कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से जी जी डिस्कनेक्ट जी, कर मैं सकते सभी को हैं। ऐड करता हूँ, नो प्रॉब्लम। थैंक्स सभी थैंक्स डियर पार्टिसिपेट अपने ऑल आप ऑफ। डिस्कनेक्ट हो जाइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। Ima pagam as videos, mas bekarei full makeup subway. Oi, atai kurai time pat full makeup kare. Subway bahtay ba god share ba. Tawai आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि आप अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट करें। आज का सेशन समाप्त हो चुका है। कल हम 10 बजे पुनः आप लोगों से मिलेंगे। सभी पार्टिसिपेट आप लेफ्ट हो सकते हैं। अभी आप सब लेफ्ट हो सकते हैं। कृपया सभी लेफ्ट हो जाए। आज का सेशन खत्म हो चुका है, आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं। कृपया सभी लेफ्ट हो जाए। राजेश सर नमस्कार। राजेश सर शायद सुन नहीं पा रहे वो। बाकी ऑल पार्टिसिपेंट आप लेफ्ट हो सकते हो। चंचल जी, चलिए आनंद जी, अब कल मिलते हैं। अभी लगभग सभी पार्टिसिपेंट यहाँ से लिफ्ट हो चुके हैं। जी जी जी, डेफिनेटली सर। ठीक है ना, कल ओके, मिलते हैं 10 बजे से जी फिर। जी जी हाँ जी जी, बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, थैंक यू।
बस इतना ही है